बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। अली सलमान तमाम नाजरीन को स्टेट बैंक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कराची से खुश आमदेद कहता है कि जहाँ पे सिंध और खैबर पख्तूनख्वा की टीमों के दरमियान इस 4 रोज़ा मैच के दूसरे दिन का आगाज़ अब से थोड़ी देर के बाद हुआ चाहता है। और बड़ी ज़बरदस्त यहाँ पे सिचुएशन हो गई है क्योंकि सिंध की टीम कल पहले ही दिन ज़्यादा अच्छे खेल का मुजाहरा नहीं कर सकी और महज 145 रन बनाने के बाद आउट हुई और जवाब में अब केपी की टीम ने 124 रन स्कोर कर लिए हैं 2 विकेटों के नुकसान पर। ये तो थी इस मैच की सूरत हाल, लेकिन जैसे कि आपको मालूम है कि हम सबसे पहले आपको दिखाते हैं इंटरव्यू। तो इस वक्त हम चलते हैं शाह फैसल की जानिब जो इंटरव्यू के लिए तैयार हैं। ओवर टू शाह फैसल। इरफान, आपने बहुत अच्छी बॉलिंग की इस मैच में, 5 विकेटें हासिल की। कुछ इस विकेट के बारे में बताइएगा, कैसा लगा आपको बॉल करके यहाँ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस बड़ी खुशी महसूस हुई ये, और सबसे पहले ये मेरे माँ बाप की दुआ है कि अल्लाह ने मुझे ऐसे परफॉर्मेंस कराई। और विकेट शुरू में थोड़ा बल पसरा था, निकल नहीं रहा था, लेकिन बस हमारा जो प्लान था, कैप्टन और कोच का जो प्लान था कि जो भी करना है हमने बस आगे ही बॉल करना है, तो बस उसी पे कंटेन करा। हमने रन भी शुरू में रोक दिए थे, तो इसी से बस अल्लाह ने इसका नतीजा बेहतर करा दिया और 5 आउट कर दिए। पहले सेशन में स्पिन ने विकेटें हासिल की, लेकिन बाद में आपको अच्छा बाउंस मिला, तो लेंथ आपने एडजस्ट की या विकेट में जो है थोड़ा मॉइस्चर ड्राई हुआ, कुछ वो बताइए? नहीं, मॉइस्चर थोड़ा ड्राई हो गया तो इस वजह से बॉल थोड़ा निकल रहा था, और लेंथ भी थोड़ी सी लेंथ थोड़ी पीछे कर दी, गुड लेंथ वाली लेंथ भी कर दी, क्योंकि आगे वाले बॉल उस तरह से सही नहीं हो रहा था, क्योंकि उन पे आगे वाले बॉल पे चौके लग रहे थे। तो हमने कैप्टन ने जो प्लान दिया है कि थोड़ा लेंथ पीछे कर दो और एक जगह खेलेंगे, सही है ना, तो इंशाल्लाह इससे। और आपका ताल्लुक बन्नू से है, कुछ अपनी क्रिकेट के बारे में बताइए, कैसे यहाँ तक पहुँचे? बस स्ट्रगल तो करनी पड़ती है। बन्नू में भी तकरीबन इस तरह हमारे साथ ऐसी फैसिलिटी नहीं है, जहाँ हमारे साथ प्रॉपर ग्राउंड नहीं है, प्रॉपर नेट्स नहीं है। हमारे बहुत से प्लेयर दूसरी डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं, जैसे लाहौर हो गया, पेशावर हो गया, वहाँ पे भी उनको बहुत तकलीफ़ें झेलनी पड़ती है। हाँ, और मैं भी खुद लाहौर में ज़्यादा खेला हूँ और लाहौर में खेलता हूँ वहाँ पे। और मैच की सिचुएशन आप देख रहे हैं, आपकी टीम अभी 21 रन पीछे है, लेकिन 8 विकेटें बाकी हैं। यहाँ से मैच कैसा जाता हुआ देख रहे हैं आप? जी इंशाल्लाह, जैसे खेल रहे इफ्तिहार भाई और मुसद्दिक भाई इस तरह खेल रहे हैं ना, हमारा तो यही प्लान है इंशाल्लाह कि आज सारा दिन खेलेंगे, उसको थोड़ा टोटल टारगेट थोड़ा ज़्यादा दे दें तो इंशाल्लाह इनको पकड़ सकते हैं बहुत जल्दी। बहुत अच्छी बॉलिंग की आपने, वेरी वेल डन। थैंक यू सर। जी व्यूअर्स, आपने सुना इरफानुल्लाह शाह का इंटरव्यू और इरफानुल्लाह शाह अपनी परफॉर्मेंस के बारे में बता रहे थे। 5 विकेट हासिल की। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं हमारे क्रिकेट एनालिस्ट, मेरे फेलो कमेंटेटर यहाँ पर अली यूनुस, और अली यूनुस से हम जानेंगे इस मैच को अब तक किस तरह उन्होंने देखा। यहाँ पे पहले बैटिंग की और इतनी ख़राब पिच नहीं थी, पिच बड़ा अच्छा बिहेव कर रही थी, 145 रन स्कोर करने में कामयाबी। बॉलिंग बड़ी ज़बरदस्त की है केपी के बॉलर्स ने। जी हाँ, बिल्कुल, जैसे आपने कहा कि इतनी बुरी पिच नहीं थी कि आप बिल्कुल ही 141 पे आउट हो जाते, 145 पे आउट हो जाते, लेकिन यहाँ पे क्रेडिट देना होगा कि केपी के बॉलर्स को, जिन एरियाज़ में, जिन चैनल में उसने बॉलिंग की, इरफानुल्लाह शाह को क्रेडिट देना होगा, 5 विकेट हासिल किए। और एक और ज़बरदस्त बात जो हमें देखने को मिली वो कैप्टनसी से इफ्तिखार की जानिब से, जो मास्टर स्ट्रोक उन्होंने खेला कल, आसिफ आफरीदी को लेके आए, सरप्राइज़ कर दिया सिंध के बैटर्स को। एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि एक लेफ्ट आर्म स्पिनर को इतनी जल्दी वो नए बॉल से लेके आएंगे, और जब उन्होंने 3 विकेट हासिल कर लिए तो उसके बाद कमबैक बहुत मुश्किल हो गया था सिंध का। अच्छा, क्या रीज़न समझते हैं कि सिंध की टीम जो है वो अच्छा खेलती आ रही थी, पॉइंट टेबल पे टॉप पे मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद कल कोलैप्स कर गई? देखिए, बहुत क्वालिटी साइड है सिंध की, हम उनके क्वालिटी पे तो कोई शक नहीं है हमें, लेकिन ऐसा हो जाता है, वन ऑफ डे आ जाता है आपकी, आप जब विनिंग मोमेंटम में आ रहे होते हैं, एक आधा बुरा दिन एक्सपेक्ट होते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं कहूँगा क्रेडिट जो है वो केपी को ज़्यादा जाता है, रादर देन हम अगर सिंध की बात करें कि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट किया और इस पिच की जो कंडीशन है उनको बहुत अच्छे तरीके से यूज़ किया है। जैसे इरफानुल्लाह शाह की हमने बात की, राइट एरियाज़ में, दूसरा मैच है यहाँ पे, जितनी बेहतरीन बॉलिंग और जितना अच्छा एरिया उन्होंने यूज़ किया है, हमने नहीं देखा किसी और बॉलर ने यूज़ करते हुए। ऑलराइट, पिच की बात की है हमारे क्रिकेट एनालिस्ट अली यूनुस ने, और आज के दिन पिच कैसा बिहेव करेगी ये जानने के लिए चलते हैं शाह फैसल की जानिब। ओवर टू शाह फैसल। मैच के पहले दिन यहाँ पे 12 विकेटें गिरी इस पिच पर। पिच बहुत अच्छा खेली और यहाँ बॉलर्स के लिए मदद ज़रूर मौजूद है। हम लेंथ की बात ज़रूर करते हैं, लेकिन इस पिच पे लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दूसरे दिन के बाद जब मॉइस्चर यहाँ पे खुश्क हो गया है तो बॉल बल्ले पर बहुत अच्छा आएगा। ऑफ स्टंप के बाहर 4थी या 5वीं स्टंप तक ही आप बॉल कर सकते हैं, इससे बाहर आपको रन्स पड़ सकते हैं एज अ बॉलर। बॉलर के लिए मदद मौजूद है,
इसका ये मतलब नहीं कि हर बॉल पे यहाँ विकेट मिलने वाली है। बॉलर्स को भी अपने प्लान के साथ कंसिस्टेंट एरियाज में बॉल करने होंगे, तभी इस विकेट से मदद मिलेगी। जी नाज़रीन, आपने पिच रिपोर्ट सुनी और अब पिच को देखते हुए आज किस स्ट्रेटेजी के साथ केपी जाएगी। इफ्तिखार जैसा सीजन प्लेयर इस वक्त मौजूद है, मुसद्दिक उनको बड़ा अच्छा जो है उनका साथ दे रहे हैं। देखिए, उनकी कोशिश तो ये होनी चाहिए कि सिंध को बैट दम आउट ऑफ दिस मैच, क्योंकि इतनी लीड हासिल कर लें कि उनको दूसरी बार बैटिंग करने की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि सिंध की बॉलिंग अटैक जो है बहुत ही क्वालिटी बॉलिंग अटैक है। आप चार देखें पाकिस्तान के मंजे, वो जो आने फ्यूचर स्टार्स हैं वो चारों इस टीम में शामिल हैं। सोहेल खान का एक्सपीरियंस है, शाहनवाज धानी है, हसनैन की पेस है, तो हम एकदम से ऐसे नहीं कह सकते कि सिंध बिल्कुल आउट होगी इस टीम से। मुझे लगता है कि सिंध का डेफिनेटली चांस है। पहला स्पेल जो है लंच तक का अगर अच्छी बॉलिंग करते हैं, विकेट्स हासिल कर लेते हैं, 50 रन की लीड तक भी रिस्ट्रिक्ट कर लें अगर केपी को, तो एक अच्छा मैच देख सकते हैं हम लोग। और कल बासित अली जो सिंध के कोच हैं, उनका भी ये कहना था कि एक विकेट है कि उनको तलाश है, उसके बाद वो फिर कम बैक करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब जो बाकी दो मैचेस खेले जा रहे हैं दो मुख्तलिफ वेन्यूज़ में, उसकी बात करते हैं। यूबीएल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 300+ रन स्कोर कर दिए हैं सदरन पंजाब ने बलूचिस्तान के खिलाफ। बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया ज़ीशान अशरफ ने, जो अब सेकंड 11 से फर्स्ट 11 में आए हैं, और साथ साथ सलमान आगा ने सेंचुरी स्कोर की। तो 2 सेंचुरी कल स्कोर हुई हैं। इस मैच को किस तरह देख रहे हैं, क्योंकि सदरन ने पिछले मैच में ज़्यादा अच्छा नहीं खेला था? देखिए, अभी हमें एग्जैक्टली सिचुएशन नहीं पता है कि उस मैच की वहाँ पिच क्या है, कंडीशंस कैसी हैं, लेकिन सदन से हम ये एक्सपेक्ट करते हैं। यंग बैटर्स हैं, यंग साइड है। आगाज सलमान की आपने बात की और बहुत अच्छी चेंज की उन्होंने, ज़ीशान अशरफ को लेकर। मेरे लिए सरप्राइज़ था कि यहाँ पे पहले उनको क्यों नहीं लाया गया, लेकिन चलें, देर आए दुरुस्त आए, एक अच्छा फैसला और उनको रिजल्ट मिल रहे हैं। राइट, और एक और जो मैच खेला जा रहा है नेशनल बैंक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, वहाँ पे भी नॉर्दर्न ने 300+ रन कर दिए हैं, और वहाँ पे हैदर अली ने सेंचुरी स्कोर कर दी है। तो हैदर अली की फॉर्म वापस आई है, बड़े अच्छी, एक अच्छा साइन है। देखिए, बहुत अच्छा साइन है, और सबसे अच्छा साइन ये है कि वो पाकिस्तान से खेलने के बाद स्ट्रेट अवे आए हैं यहाँ पे। डोमेस्टिक क्रिकेट को वो रिस्पेक्ट दे रहे हैं। ये सबसे बहुत अच्छी बात है एक यंगस्टर के अंदर, कि वो आए और डोमेस्टिक क्रिकेट खेले। यही बात हमें केपी में भी देखने को मिल रही है कि इफ्तिखार बांग्लादेश की टूर से आए और सीधा डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने आ गए। तो ये जब इतनी हंगर क्रिकेट की होती है तो डेफिनेटली सक्सेसफुल होता है क्रिकेटर। ऑलराइट, डोमेस्टिक क्रिकेट को अहमियत देनी चाहिए और खेलनी चाहिए। इरफान ने कल 5 आउट किए, हमने देखा कि जिस तरह से उमर भी आए यहाँ पे डोमेस्टिक खेल रहे हैं, शाहनवाज धानी खेल रहे हैं, हसनैन खेल रहे हैं, तो बड़े स्टार स्टडीड है यहाँ पे। इस वक्त कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का कराची लैग जारी है। अब से थोड़ी देर के बाद इस मैच का लाइव एक्शन शुरू होने वाला है। इस लाइव एक्शन को दिखाने के लिए सीधा चलते हैं कमेंट्री बॉक्स की तरफ। Thank you very much, Ali Salman, and a very good morning from the State Bank Sports Complex here in Karachi. Another intriguing day of cricket in prospect. We're just about to get ready with the proceedings. Sindh versus Khyber Pakhtunkhwa. This has been a wonderful game so far. 12 wickets falling in the first day, and plenty more action coming your way on day 2 as well. So we watch the two opening batters coming to the middle. The unbeaten batters, Musaddiq and skipper Iftikhar, have already forged a partnership worth 93 runs. 72 Musaddiq is on and 34 Iftikhar. They would look to overhaul this Sindh total, only 21 runs away, and then go on and build a strong lead. That's for later. It's a good time to welcome along in the comm box this morning former Pakistan under-19 skipper Amr Saeed. Very warm welcome, Amr, and good morning. Thank you very much, and a very good morning to all the viewers. Very important session, Faisal, as far as Sindh bowling is concerned. This is the time which they have to utilize to make inroads in that batting lineup, which yesterday dominated their bowling. They have done well in bits, but I think consistency is the key, and they will have to be on the spot every time to get some wickets early on. For us to start the proceedings, wow. We had a masterstroke yesterday from the KP skipper Iftikhar, who threw the ball to Asif in the first session, and he returned with 3 wickets. This one for us. We'll now begin proceedings to Musaddiq. It's Iftikhar rather, and immediately off the mark. What would you think be behind this move, Amr? Caught us all by surprise. Yes, very surprising, especially with all your fast bowlers with fresh legs, fresh minds. Faraz Ali opening the proceedings. Yes, it is a bit
surprising. Amar, being a top order batter yourself, sometimes these kind of bowlers can really upset your rhythm as a batter. They don't come to the bat as quickly as the quicker man, or you're really ready in your mind to face the top guns, and all of a sudden you see Faraz at the top of his mark. We'll come back to it after this ball. Little bit of shape. Do you think that could be one of the reasons? Maybe yes, but I don't think Faraz Ali has that sort of capacity to trouble the batsman, especially batsman. Some runs under the belt, 72 Musaddiq and 35 Tikhar. I would have gone with my specialist bowlers. Big shout! Still appealing. It looked like the bat hit the ground as well. Did it get the edge? Umpire Waleed says no. Floaty half volley, a little bit of shape. Tempted Musaddiq and nearly lost his wicket. Look at that replay. Just missed the bat. I think the bat did hit the ground. But enthusiastic appeal. Well, maybe that was the reason why Faraz Ali has been introduced. Really surprising move. And the word from the Sindh camp is, like we were talking, they really feel that they went chasing for wickets last night. They lacked consistency. There's still plenty happening. That's agreed upon by all. But the consistency wasn't there. And even with this kind of help, you still allowed to free his arms. Sweeper is set over there at deep cover. A wild return. And the finish of the first over. 33 gone, 126 for 2. Well, that was the problem last night as well. In the last session, whenever the bowlers pitched it in the right areas, it did trouble the batsman. But then lacked consistency, gave away bad balls, allowed the batsmen to free their arms, and you cannot do that to KPK batsmen who are free-flowing batters. They love to play their shots. You've got to peg them down. You've got to cut those runs down. Only then can you put pressure on them. And Amar, with such a true bounce for most part, the margin for error in terms of line is also very minimal. Because if you allow that slight bit of room, batsmen can throw their arms at it. Like it happened just like there. Stopped in the ring by, looks like it's Umar bin Yusuf. He's got quite a heavy taping on his left hand. But Sindh will be looking to the experienced man, Sohail Khan, who's in wonderful form to provide them with early breakthroughs. Yes, last evening he bowled a couple of very good overs. Got the length right. As you see, he started with a short ball. On this type of a track, you want the batsman to come forward mostly and play those drives. Of course, not half volleys, but just a foot or so behind that driving length. There you go. When I say the bowlers have very minimum margin of error in terms of line and length, that was short and wide. Tikhar on that occasion was lenient enough to let it go. But because of the bounce, that back of length delivery, if it's offline, then batters can have a go. If they middle it, that's fine. But if they get a slashy nick on it, it's going to fly over the slips. They have to be spot on this morning. They don't have a lot of runs to play with as well. Yes, a lead of anything over 100
would be quite a task for Sindh. That must be in their minds. And on a track like this, again, I have to say that it's about taking a single wicket. And as soon as you get that breakthrough, a couple or 3 wickets follow, usually, if you bowl the right areas. Absolutely right, Amar. We've seen this many times. As we're seeing Ahmed Said, the fielding coach of KPK, and Khalid Usman, who's the skipper of KPK up until last game. Yes, I was about to say the former captain. And by former, I mean in the last game. Unfit Khalid Usman, that is why he's not in the side. Movement there for Sohail Khan. This was the in-swinger. Been bowling out swingers previously, and interestingly, we heard that because we're so close to the players, we can hear a lot of their chats and tactics. That was being discussed. Sohail Khan was bowling from the top end yesterday. His end has been changed this morning after a slight deliberation with coach Basit Ali. Yes, we all saw that discussion, and that has been the result. Change of ends for Sohail Khan. Got onto it quickly. Iftikhar was slightly late on the pull shot. That's where the batsmen are also at their most vulnerable. Starting off is never easy on this pitch, and like Amar was mentioning, as a bowling unit, you just need to hang in there, because if one wicket falls, it can really open the floodgates. So it is going to be an intriguing day's cricket. There's no doubt about that. And all credit to the splendid surface that's been provided here at the State Bank Sports Complex. Makes for some intriguing cricket. Play and a miss. Not much of footwork. He just threw the bat at that. Could easily have got the nick. 128 for 2. Again, I think Sohail Khan has started on the shorter side. I'd like to see him bowl a bit fuller. And Musaddiq, on the other hand, whenever he sees anything wide, his eyes light up. He throws his bat at it. And that is the way he plays. And as far or until he's on the wicket, the runs will come. And the second half of that plan has been unveiled, as Hamza will be bowling from the top end now. He is bowling from the opposite end last evening. He was the one who got the ball to really swing. He got the wicket of Sabzada Farhan with an absolute peach. He'll be looking to repeat the dose. Sindh has once again gone to the experience first thing in the morning, because Hamza and Sohail Khan did bowl reasonably well, but weren't backed up by Shahnawaz Dhani and Hasnan. Starting off with 2 slips and a gully. And a ring of fielders on the offside as well. Pretty regulation. That natural angle across the right-hander. Lets it go Iftikhar. That is where you want your bowlers to bowl. Maybe a bit closer to the batsman, but those are the lengths you need to hit consistently throughout the day to get teams out. Exactly what Irfanullah did for KPK. Beautiful lengths he bowled, and he got the reward. Few bad shots as well, but consistency paid. Once again angling away, too far away from Iftikhar to be tempted. And you're watching Saad Khan in the second slip. He had a slight groin strain last night, but he's back on the park. Good news for Sindh. Waleed Yaqub officiating this match.
And this is umpire Imtiaz. They've both been called into action several times yesterday. Had an indifferent kind of day. Once again angling across. Looks like Hamza is working on a plan. Dragging him outside his off stump before he can unleash that in swinger. But how long will it take him? Yes, as they say, longer version of the game is a game of patience. And when we talk about patience, it's for both the batsman and the bowler. You need to be persistent, consistent on that line, and be patient. Wait for the batsman to make a mistake. There you go, 4 in a row. That was slightly fuller, slightly closer. You can see that definite movement in the air for Mir Hamza. A good start so far, Mir Hamza. Iftikhar being a bit careful early on. Very, very experienced campaigner. He knows all about all the formats of cricket, really. Closer off the edge. And it ran through the gap as well for 4 runs. No luck for Mir Hamza. And that brings about the 100 partnership as well between these two. That is where you should be bowling. No worries about the boundaries, but that is what you need to do to put the batsman in doubt with those kind of lengths. I was just about to ask you before this ball. You've been a captain most of your cricketing careers. Would you be brave enough? I know they don't have a lot of runs. Brave enough to bring that cover fielder in and strengthen that slip cordon? Would you do that? Well, I definitely would, and they have heard you, Shah Faisal. Immediately, well, they haven't really put the covers out, but they have brought the fielder from square leg into that empty third slip region. Good move. Edge and gone. A little bit of patience and persistence from Mir Hamza has paid off. It took the shoulder off the bat, plenty of bounce, and Iftikhar couldn't cope with it. Magnificent bowling from Mir Hamza, and he really deserved that wicket. Well, it couldn't have been an easier catch than this one, and that is the reward you get when you bowl in the right areas, and immediately, you didn't even have to wait. No patience required. Immediately, Iftikhar Ahmed gone, caught by Umair bin Yusuf, bowled Mir Hamza for 40. A good innings comes to an end. Look at the angle and the sharp bounce as well. Excellently taken. Umair bin Yusuf looked at ease catching this one, the Aussie style, fingers pointing up. Made it look very, very easy. Superb cricket from Sindh. And that's the breakthrough they needed. 132 for 3. Well, that is what we were discussing off air as well. Shah Faisal, I think. Adil Amin, 77 matches, 30 years of age, 4,000 runs, 37, a handy average, 500s, and the best of 211. And immediately, like we were talking about that slip cordon, it went straight to that third slip. And skipper Asad Shafiq really deserves credit for that move as well, because he made the move before the ball went there. And that's what Sindh needed early doors. Splendid for them. Definitely the ball is doing a bit which it usually does in the first session of the day in Karachi here, especially with the overnight dew and everything. Just a bit of dampness on the wicket, and that is what we saw in that previous dismissal. The ball just jumped. He was squared up a bit.
Now it's the responsibility of the other bowlers as well to respond. Like we were just talking, 1 wickets can bring 2 or more even in these conditions. But the wicket was well planned out. If you look at it, the bounce, it nearly hit the shoulder of the bat. Low hands from Iftikhar, and it's that man Umair bin Yusuf who was just brought in the previous ball into that slip cordon. Great cricket from Sindh. And now the new man in, 3 slips, a gully. That's more like it from Sindh. On the button, excellent from Sohail Khan. And that wicket from Mir Hamza, got him into a milestone of 350 wickets in the first class game and produced it with an absolute beauty. Congratulations to Mir Hamza. This has been a consistent performance over the years. Got his reward with the call-up for the Pakistan team. Edge and gone. This is terrific bowling in the channel. And Adil Amin, who's new to the crease, had no answers to this one. This time it's Sohail Khan, and Sindh are on fire this morning. Brilliant, absolutely brilliant bowling by Sohail Khan, the experienced Sohail Khan. There you see, the new batter. It's not easy for them at this stage of the game. There you see, pitched up and took that edge. Beautiful outswinger, late swing, and that did Adil. Adil Amin gone without troubling the scorers. 133 for 4. That is the story. That is cricket for you. Adil Amin scored 100 and a very good 100 in the 4th innings of the game in the previous match against Northern, and today gets a second bowler. Great leveler cricket. Absolutely. He was the match winner not too long ago, just 3-4 days ago, and now he's been brought down to earth by that second bowler. That's the beauty of the game, the intrigue of this game. And the game has really opened up. Sindh are still 12 runs ahead, 4 wickets down. This game is moved really quickly. We watch this Sohail Khan. Look at the line and look at the length as well. Superb. Didn't do a lot wrong. Adil Amin new to the crease, so his footwork wasn't ashore. You can understand that. But credit to Sohail Khan for producing that delivery to the new batter and ask him a very, very tough question which he had no answer. 3 slips and a gully. Mehran is the new man in. Slightly short of a length, straight out of the way, but you could see they smell blood, the experienced duo from Sindh. Yes, the tails are up now. You can see that they are running in hard, and that is what you want to see from your bowlers. Excellent delivery again. Of course, Sohail Khan being the most experienced bowlers in the team, he would be testing the new batter with those away swingers and his length. There you go. A lifter. The line was very, very good. Sensational from Sohail Khan. Got to give credit to the youngster as well. He swayed out of the way, kept his eye on the ball. Banked in short and very well negotiated by Mehran. And usually fast bowlers do send this welcome message to new batters that you better be ready for anything. He's pushed him back in the crease all right now. Is it the sucker punch coming?
full and swinging delivery. Sohail Khan knows how to get the batters. Can he execute it? For the moment, still persisting with that back of a length delivery to end the over. A successful one from Sohail Khan. 133 for 4. Consecutive successful overs. There's the bowling line so far. Sohail Khan 12 overs 27 for 2, and Mir Hamza 11 overs 37 for 2. The two successful bowlers, and then Mohammad Hasnan, Shahnawaz Dahani and Faraz Ali yet to get a wicket, and I'm sure sooner or later they will be getting their chance at the batting line of KPK, and they certainly have a role to play. Look at the run rate, the economy of Shahnawaz Dahani and Hasnan. 4.5 and 5.8. Really went for runs on this difficult pitch. Once again, Hamza is persisting with that line, and we've seen that length has produced some indifferent bounce. In case of Asad Shafiq, it was in line with the stumps, but we've seen a few others as well, which were outside, but just about the similar length. Absolutely right. That one did keep low. Luckily for the batsman, it was far outside off stump and not in the wickets. There you go, another up-pitch drive, another catch. And Sindh are on fire. That length is once again, and this time the other side of batter, Musaddiq, is walking back. Sindh has really come out hard this morning. Third wicket in the space of 3 overs. Excellent bowling. Once again, price calm of the in-form and the set batter, Musaddiq, out for 75. He was the key for that brilliant start KPK got last evening. But once again, Mir Hamza has now got the idea of which length to bowl. Made him drive that one. It was uppish, straight to that short cover, really. Brilliant catch by Ahsan Ali. Harris is the new batter, the wicket-keeper, and KP's half the side is back in the hut. And they're still trailing by 12 runs. Who would have thought this morning? They were 21 runs behind with 8 wickets, and they have lost 3 wickets within no time. 132 for 3, 133 for 4, and 133 for 5. Harris, early in his first-class career, a very, very promising youngster. And don't go by these stats, because he's much better than that. He's a proper batter. The conditions are tough. Yes, definitely Harris can bat with the 2 new batsmen still to open their count on the crease. This is the time when the Sindh bowlers need to push and put extra pressure on them. Look at that. Musaddiq wouldn't like to see that replay. But like we were discussing off air, the KP players are very positive players. They will take the attack to the opposition, and sometimes he'll pay price for it. And this morning has been the case. A couple of good deliveries and one poor shot has left them reeling here. This has been an thrilling first half an hour of day 2. Once again, that indifferent bounce, but the angle is there. You can see clearly that Hamza is working on a plan this morning. That's real good work from Sindh. They planned it, but the execution, which is the key, has been spot on this morning. Excellent start from both the bowlers, especially Mir Hamza. On the spot since the first ball.
consistently getting that angle, getting that away swing, and seen that had they been on the spot on that length last evening as well, the position would have been much better for Sindh, but they were a bit wayward, missed the lengths, and let the KPK batsman off the hook. That was the attempted in swinger. Not patient enough with the new batters, Mir Hamza, but that was the last ball of the over. 134 for 5. Well, both the bowlers complementing each other so far in this spell early on, and that is what they need to do. The pair needs to bowl in tandem, complement each other, bowl the right lengths, put the pressure from both the ends. Usually we've seen that wickets go down from one end, but that is only because of pressure applied from both the ends. But today, luckily, wickets have been falling from both the ends. So reward for some hard work and some good thinking. Definitely. The game plan was very obvious and the execution was spot on as well. Very rewarding sometimes for the coaches and the skipper when their plans come off. Especially when Asad Shafiq brought in that third slip just in time to take Iftikhar, and that really opened the floodgates. So straying down the leg side, Haris is a busy player. Like other KP players, he would also like to put bat to ball and get the scoreboard moving. Won't be easy initially. So as we saw Basit Ali, the coach, having a conversation with the bowlers this morning. Certainly a very, very shrewd captain himself, very thinking captain in his playing days, very aware of the game, street smart cricketer. We expected him to have a word after the bowling performance of last evening. I'm sure he must have put some sense in all the 4 fast bowlers. Look at this, another one. An absolute peach. Squared him up. He's looking to play it. And Amar, this reminds me, in the last game when we were talking off air, you were mentioning that how the batters need to stay side on for longer on these kind of pitches to defeat those good deliveries and not find the edge. Completely opposite to that, and he was almost in trouble. There you go, exactly the same. Splendid from Sohail Khan. Tell us, how do you come up to this theory where you want the batsman to remain side on for longer? There you see, when you square up the bat, the more the bat opens, the more the edges are exposed. And when you stay side on, the thing is that the bat is angled towards the slips. So when, even if usually it doesn't get the edge, it normally beats you. When you're side on, you stay side on for longer. Even if it does hit the bat, it more times than not, it will go towards the ground rather than getting that edge and going to the slips. Excellent. Terrific stuff, Amar Said. You look at that. Exactly what Amar just said. When you square up, you kind of present the full face of the bat, a bigger target for the bowler to aim for. But if you remain side on, that bat is coming down at an angle towards the ground, and the bowler doesn't see all of it. Look at that. This is the first ball, and followed by another pitch. Look at that. And look at the feet. If
Just concentrate on the feet, how he squares up and how he shows the entire bat to the bowler, and the angle is such that if it takes the edge, it will carry. Excellent stuff here. Another one. Wow. This is sensational stuff from Sohail Khan. Mehran all at sea against the class and guile of Sohail Khan. 38 gone, 135 for 5. अच्छी गेंद, और आज जब पहली विकेट हासिल की इफ्तिखार की मीर हमजा ने, तो अपने फर्स्ट क्लास कैरियर की 350 विकेटें भी मुकम्मल की। अब तक बड़ी उम्दा बॉलिंग का मुजाहरा किया सिंध ने और इससे इब्तिदाई सेशन को यूटिलाइज करने की पूरी कोशिश की। अली यूनुस हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम अली जी हाँ, बहुत ही शानदार डिलीवरी। एक बार फिर मीर हमजा ने आज बहुत ही शानदार स्पेल किया है, ज़्यादा जोर नहीं लगाया, हवा में छोड़ने की कोशिश की और स्विंग मिला है उनको। यही खासियत है मीर हमजा की और यही हम एक्सपेक्ट करते हैं। 3 विकेट्स अर्ली हासिल करके दिए सिंध की टीम को और मैच में सिंध की टीम को इसमें वापस लेके आए, ये बहुत खुशाइन बात है सिंध के लिए। बड़ी जबरदस्त अब फास्ट बॉलिंग का मुजाहरा सुबह से अब तक हमने देखा है। जी हाँ, पर्पस नजर आया आज सिंध की बॉलिंग में। जैसे जो इंटेंट आज सुबह हमने देखी, वक्त से पहले सिंध की टीम आज ग्राउंड में मौजूद थी और जिस तरीके से बासित भाई और जो प्लानिंग थी, जो स्ट्रेटजी थी, आई थिंक बहुत ही शानदार रही है और सिला मिला इनको। ये लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर्स की बात हमने कल भी की थी, बहुत बड़े बड़े नाम इस लिस्ट में शामिल है। टॉप ऑफ द लिस्ट वसीम अकरम, समीउल्लाह न्याजी, 1000 से ज्यादा विकेट्स हैं वसीम अकरम की, बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस। एक और अच्छी गेंद, बड़ा अच्छा अब तक इस कंडीशन को यूटिलाइज किया मीर हमजा और सोहेल खान ने। जी अली, ऐसा लगता है जैसे ओवरनाइट उन्होंने बहुत सोचा है कि इस पिच पे कैसे बॉल किया जाए, क्योंकि कल हमने देखा थोड़ा वेवर्ड नजर आए, आज एक बेहतर स्ट्रेटजी के साथ बॉलिंग कर रहे हैं। दोनों अच्छे कॉम्बिनेशन से बॉल कर रहे हैं। लेफ्ट आर्म्स पे फास्ट बॉलर एक तरफ से मीर हमजा बॉल को छोड़ रहे हैं, दूसरी तरफ से सोहेल खान थोड़ा बैंगिंग कर रहे हैं, थोड़ा जोर लगा रहे हैं, तो बहुत ही शानदार स्पेल है ये बॉलिंग का। इस मरतबा ज्यादा एतमाद के साथ नहीं खेले थे एहसान अली को, काफी एफर्ट करनी पड़ेगी। अच्छी स्लाइड, यहाँ पे गेंद को फील्ड किया। आज फील्डिंग भी सुबह से अब तक काफी बेहतर रही है सिंध की और आज लगता है कि एक नई एनर्जी के साथ मैदान में उतरे हैं। ये मैच बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि सिंध की बैटिंग को के पहली इनिंग में कोलैप्स हुई, लेकिन बड़ी जबरदस्त बैटिंग है सिंध के पास और दूसरी तरफ केपी की जो बैटिंग है और जो उनकी बॉलिंग है, बड़ा अच्छा कॉन्टेस्ट है और इंटरेस्टिंग कॉन्टेस्ट होगा दोनों टीमों के दरमियान। जहाँ कल हमें शायद लगा था कि शायद वन साइडेड कॉन्टेस्ट हो जाएगा, लेकिन जिस तरीके से इस मॉर्निंग सेशन में सिंध ने कमबैक किया, बहुत ही शानदार क्रिकेट देखने को मिल रही है हमें। और आप बासित अली की बात करते हैं, बासित अली कल बड़े कॉन्फिडेंट थे कि उनको एक विकेट मिलेगी तो वो प्रेशर डालने में कामयाब हो जाएंगे और आज हमने देखा कि प्रेशर डाला सिंध की टीम ने केपी पर और बड़ी प्राइज विकेट हासिल किया आज इफ्तिखार की सूरत में। जी हाँ, इफ्तिखार भी, मुसद्दिक भी बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे थे, रन्स बना रहे थे कल शाम तक, लेकिन आज जैसे हमने अभी जिक्र किया कि बेहतर प्लानिंग, बेहतर स्ट्रेटजी, बेहतर तरीके से इस पिच को यूज़ कर रहे हैं आप बॉलर्स। कल हमने देखा शायद जोर लगाने ज़्यादा चले गए थे, विकेट्स की डिस्परेशन में ज़्यादा गए थे, लेकिन आज बेहतर एरियाज में बॉल कर रहे हैं, स्पेशली मीर हमजा। एक और अच्छी डिलीवरी मीर हमजा की जानिब से बैट्समैन के लिए अनप्लेबल। ओवर मुकम्मल हुआ 136 पे 5। बासित अली के साथ के फील्डिंग कोच, असिस्टेंट कोच भी हैं स्लैश मसरूर, बहुत ही शानदार कोचिंग बेंच है ये सिंध की जानिब से, बहुत ही टैक्टिकली बहुत स्ट्रांग है बासित अली। और
चप्पे चप्पे से वाकिफ होंगे इस ग्राउंड से, कैसे कहाँ बॉलिंग करनी है इनको सब पता होगा। जी हाँ, बासित अली मसरूर का ये कॉम्बिनेशन जो है ये बड़ा ज़बरदस्त है। मसरूर जूनियर लेवल के बड़े ज़बरदस्त कोच समझे जाते हैं, उनको असिस्ट कर रहे हैं। और बासित अली का जो क्रिकेटिंग ब्रेन है यकीनन वो किसी तारुफ का, किसी तारीफ का मोहताज नहीं। SNGPL को कई टाइटल अपनी कोचिंग में इन्होंने जितवाए। इस मरतबा कवर्स में खेले, एहसान अली गेंद तक पहुंचने की कोशिश में थोड़ी सी कमजोर थिर होती, जिसके नतीजे में 2 रन बनाने का मौका मिला। जी हाँ, यहाँ पे सिंध को थोड़ा केयरफुल भी रहना पड़ेगा, थोड़ा ध्यान रखना होगा कि अच्छा आगाज मिल गया, 7 रन की ट्रेल अभी भी है, लेकिन इस अच्छे आगाज को इनको गिव अवे नहीं करना चाहिए। इतनी आसानी से इस सिचुएशन को बाहर नहीं निकलने देना चाहिए। केपी को प्रेशर डाले रखना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा रन की लीड भी नहीं देनी है। अगर ज़्यादा रन की लीड हो जाएगी तो सेकंड इनिंग में मालूम है प्रेशर डेफिनेटली होगा, क्योंकि अच्छा मैच हमारे हाथ में डेफिनेटली। इस मरतबा गेंद को बड़ी जोर से लाके पटखा था, पिच को इस्तेमाल करने की कोशिश की थी सुहेल खान ने। ऐसा शफीक कि इस सीज़न में इनका बल्ला निस्बतन खामोश है, अच्छी परफॉर्मेंस की इनसे उम्मीद है। और ये सुहेल खान के जिन्होंने आज गिरने वाली 3 में से 1 विकेट हासिल की। जहाँ बहुत खुश किस्मत होता है वो कैप्टन जिसमें सोहेल खान जैसे कैरेक्टर्स होते हैं, हमेशा पूरी कोशिश करते हैं, 100% एफर्ट करते हैं। जिस एनर्जी से बैट बॉलिंग करते हैं बहुत ही शानदार, देखने में बहुत मज़ा आता है। कल जब उनको विकेट्स नहीं मिल रही थी तो बहुत फ्रस्ट्रेटेड भी नजर आए, लेकिन आज खुश होंगे, 1 विकेट हासिल कर चुके हैं। अच्छी पेस के साथ गेंद करते हुए सुहेल खान, बड़े यंग एज में कराची आए और बड़ा अच्छे एथलीट हैं और बड़ा मेहनत करते हैं, अपनी मिक्सअप करते हैं अपनी डिलीवरीज को। एक इन्होंने स्लोअर वन अपनी डेवलप की थी जो अब तक नजर नहीं आई है, लेकिन शॉर्टर फॉर्मेट में बड़ी अच्छी स्लोअर वन करते हैं। ये मोहम्मद हसन है, बड़े ज़बरदस्त विकेट कीपर, सेंचुरी भी इनके नाम के आगे इस सीज़न में दर्ज है और कराची को बड़ा रिप्रेजेंट किया, KPT को लीड करते रहे। क्या सोहेल खान का एटीट्यूड बहुत ज़बरदस्त है। अगर हम उनकी बात करें कि डिफरेंट नज़र आते हैं, एनर्जी डिफरेंट है उनकी, हर बॉल पे उनकी कोशिश होती है कि विकेट हासिल की जाए। एक और एनर्जेटिक करिश्मेटिक शाहनवाज धानी, उनका स्पेल भी बहुत अहम होने वाला है यहाँ पे, क्योंकि फॉलो अप बॉलर्स को भी उतनी ही अच्छी बॉलिंग करनी है जितनी ये दोनों कर रहे हैं। अच्छी गेंद थी और जिस तरह लगी रहे इस मौके पर हारिस कि गेंद यहाँ पर स्टम्प्स है कि उसमें से बेल्स को डिसलॉज नहीं कर सकी और करीब से गुजरी। जहाँ कल भी एक हमने देखा था कि बॉल विकेट्स पे लगा था लेकिन बेल्स नहीं गिरी थी, यहाँ पे ओ बहुत ही लकी रहे, बहुत ही लकी रहे हारिस। बहुत ही शानदार टैलेंटेड विकेट कीपर बैटर हैं, बहुत हाईली रेट किए जाते हैं आजकल पाकिस्तान क्रिकेट में। उनका सामना यहाँ पे टॉप क्लास बॉलिंग के है। सोहेल खान, शाहनवाज धानी, मीर हमजा, मोहम्मद हसनैन, बहुत ही क्वालिटी बॉलिंग है ये सिंध की। आसान नहीं होगा यहाँ से रन बनाना। और इस मरतबा मोहम्मद हसन इस गेंद को प्रॉपर तरीके से कलेक्ट नहीं कर सके। बाई का सिग्नल अंपायर इम्तियाज इकबाल की जानिब से। और आप बात करते सोहेल की, तो सोहेल को जो साथी खिलाड़ी हैं इनके एटीट्यूड की वजह से इस तरह जान मारते हैं, इस तरह एनर्जेटिक रहते हैं, इनको कराची का शोएब अख्तर भी कहते हैं। जी अच्छा होता है ऐसा प्लेयर एक टीम में होना जो बाकियों को जगा के रखता है, बाकियों के अंदर मोटिवेशन डाल के रखता है। और कल मैं बहुत खुशाइन बात थी, मुझे देखने में बहुत मज़ा आया कि जब उनको विकेट हासिल नहीं हो रही थी और जब वो वापस बाहर आ रहे थे तो वो इतने फ्रस्ट्रेटेड और इतने गुस्से में थे कि विकेट क्यों नहीं हासिल की। और ऐसा एटीट्यूड आपको चाहिए होता है, स्पेशली लॉन्गर फॉर्मेट में जहाँ पे अक्सर लंबी फील्डिंग आपको करनी पड़ती है, तो एटीट्यूड बहुत मैटर करता है। एक और अच्छी डिलीवरी, बैट्समैन को बैकफुट पे रखा, ओवर मुकम्मल 139 पे 5। किसी ने सोचा था कि पहले घंटे में ही ये सिचुएशन हमें देखने को मिलेगी। हमें लगा था कि शायद रन थ्रू कर जाएगा केपी इस गेम में, लेकिन बहुत कमाल का कमबैक किया यहाँ पे सिंध की साइड ने। उसके मेन डिस्ट्रॉयर जो है वो मीर हमजा हैं, 3 विकेट्स हासिल किए इस इनिंग में। जी और आप ये देख सकते हैं साइड स्क्रीन के बिल्कुल अकब में ये एक पोस्ट है जहाँ पे हमारे कैमरामैन कवर कर रहे हैं इतनी ऊंचाई पर।
सबसे बाहर गेंद थी, इसको आसानी के साथ लेफ्ट किया, जाने दिया हारिस ने। मीर हमजा ने अब तक बड़ी उम्दा बॉलिंग की। और मैं इस पोस्ट की बात कर रहा था जहाँ पे हमारा कैमरामैन मौजूद हैं, और हरगिज़ आसान काम नहीं है सुबह से लेके शाम तक इतनी ऊंचाई पे मौजूद रहना। हवा भी चल रही होती है, गर्मी भी होती है, और इधर मौसम अच्छा है, लू के थपेड़े भी बर्दाश्त करने पड़ते हैं। और अमूमन जो है वो शेर के शिकारी मचान लगा के शिकार करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है ये जो गेंद को कैप्चर कर रहे हैं वो इतनी ऊंचाई पे खड़े होकर कर रहे हैं। क्रेडिट गोज टू आवर प्रोडक्शन टीम। जहाँ बहुत ही शानदार तरीके से एक्सप्लेन किया आपने, आपके अल्फाज की जो चुनाव है उसकी तो दाद देनी होगी अली। मैं तो ऐसा कभी सोच भी नहीं सकता था कि जिस चीज़ से आपने इसको तशबीह दी है। तो क्रिकेट के साथ साथ कमेंट्री भी शानदार एंजॉय करते हुए हम लोग। ये बॉलिंग बहुत शानदार हो रही है यहाँ पे मीर हमजा की जानिब से। अच्छे एरियाज़ को हिट किया है, अच्छी लाइन और लेंथ को हिट किया है आज मीर हमजा ने। और इसी एरियाज़ की हम बात करते रहे, कल थोड़ा शॉर्टर साइड पे थे या बहुत फुल थे, लेकिन आज वो एरिया को अच्छे तरीके से आइडेंटिफाई किया इन्होंने और रिजल्ट उनको मिल रहा है। अच्छी लाइन द लेंथ हासिल की हुई है मीर हमजा ने, और अपने एंगल को बड़े ज़बरदस्त तरीके से यूज़ कर रहे हैं। और अच्छी बात यह अली कि दोनों फास्ट बॉलर अपनी बॉलिंग को एंजॉय कर रहे हैं। जी हाँ, क्यों ना करें अली, इतनी अच्छी पिच है, मौसम अच्छा है, हवा चल रही है, विकेट्स मिल रहे हैं, तो नेचुरली एंजॉय करेंगे। हम इतना कमेंट्री करते हुए एंजॉय कर रहे हैं उनके स्पेल को, तो डेफिनेटली उनको बॉलिंग करते हुए भी काफ़ी इंजॉयमेंट हो रही होगी। और यहाँ पे जब से कराची लेग शुरू हुई है तो फास्ट बॉलर्स के लिए थोड़ी बेहतरी आ गई है, क्योंकि पंजाब लेग में हमने देखा काफ़ी हार्डवर्क करना पड़ा फास्ट बॉलर्स को विकेट्स हासिल करने के लिए। पॉइंट पे फील्डर मौजूद हैं फराज। जहाँ हार्डवर्क जिसकी हमने बात की थी, तो मोहम्मद अली ने 20 विकेट्स हासिल कर रखी हैं पेसर्स की। अगर हम बात करें इस टूर्नामेंट में, मीर हमजा दूसरे नंबर पे 17 विकेट्स हासिल कर लिए। और इसका बहुत बड़ा वजूहत है, हम घास देख सकते हैं, लाइवली घास है और पूरा घास है, पूरा कवर्ड एरिया, ऐसा नहीं कि कोई बीच में पैचेस हैं। ये बहुत शानदार बात है और अतीकुर रहमान को बहुत क्रेडिट जाता है ऐसी पिच तैयार करने के लिए। दूसरा कंसेक्यूटिव मैच है जहाँ पे हमें इतनी उम्दा क्रिकेट देखने को मिल रही है। अगर बॉलर्स विकेट्स हासिल कर रहे हैं तो बैटर्स रन्स भी कर रहे हैं, ये खसूसियत है इस विकेट की। और साथ साथ इस पिच की एक और ख़ास बात है स्टेट बैंक के ग्राउंड की, कि जैसे जैसे वक्त गुजरता है पिच मज़ीद हार्ड से हार्डर होती जाती है, और अच्छा पेस, अच्छा बाउंस है। तो यहाँ पे बॉल जो डबल पेस नहीं होता। यह आसिम है वीडियो एनालिस्ट, उनके साथ हनीफ मलिक, हैदराबाद से इनका ताल्लुक, और ट्रेनर है ये सिंध की टीम के, खुद भी फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं हनीफ मलिक, बड़े अच्छे विकेट कीपर थे अपने वक्त के। और इनके साथ आसिम ना सिर्फ सिंध के साथ बल्कि मुख्तलिफ फ्रेंचाइजीज़ के साथ भी मुंसलिक रहे, और जो वीडियो एनालिस्ट हैं उसमें इनको बड़ा अहम मुकाम हासिल है। काफ़ी लोग इनको फॉलो करते हैं इस फील्ड में। और आप बात करते हैं अतीक की, तो ना सिर्फ इस ग्राउंड के चीफ पिच के ऑडिटर हैं, इसके अलावा असगर शाह पे भी उन्होंने पिचेस बनाई, साथ साथ जो कंट्री क्लब है कराची में उसकी पिचेस भी अतीक ने बनाई। तो बड़ा एक्सपीरियंस है और ये सब साबित हो रहा है। जी हाँ, ये भी एंगल के साथ अंदर आया, बॉल लकी रहे कि ज़्यादा बॉल स्विंग नहीं हुआ, थोड़ा दूर से स्विंग करने की कोशिश। अगर थोड़ा बेहतर अगर लाइन के अंदर आए तो बेहतर तरीके से यूटिलाइज हो सकती हैं। यहाँ पे 139 पे 5 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं खैबर पख्तूनख्वा के। अली, हम पेसेस की बात कर रहे थे तो काफ़ी खुश हैं पेसेस जब से इन पिचेस पे बॉलिंग कर रहे हैं, क्योंकि पंजाब में तो बहुत मुश्किलात रही हैं उनको, और उन मुश्किलात के बावजूद इन फास्ट बॉलर्स ने विकेट्स लिए हैं, उनका जिक्र करते हैं। मोहम्मद अली ने 20 विकेट्स हासिल कर रखी हैं, मीर हमजा ने 17 विकेट्स हासिल कर चुके हैं, सुहेल ने 17 विकेट्स हासिल किए, समीन गुल जो कि आज का मैच नहीं खेल रहे हैं 15 विकेट्स हैं, इमरान खान ने 13 विकेट्स हासिल किए हैं अभी तक इस टूर्नामेंट में। तो ये बहुत ही खुशाइन बात है कि पंजाब की स्लो लो पिचेस पे भी फास्ट बॉलर्स विकेट हासिल करते रहे। स्पेशली मोहम्मद अली ने बहुत ही शानदार स्पेल किए हैं वहाँ पे। मिडिल लेग पे गिरी हुई गेंद, आसानी के साथ 2 रन का स्कोर में इजाफा। और हम बात करते हैं अपने प्रोडक्शन टीम की कि किन नामसाइद हालात में हमारे जो कैमरामैन है ग्राउंड में मौजूद होते हैं। एक पोस्ट हमने आपको दिखाई, अगर हम आपको दिखा सकें, जो डीप स्क्वायर लेग अंपायर के पीछे जो है, बाउंड्री के बाहर, डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर काफ़ी ऊंचाई पे हमारे कैमरामैन मौजूद है, जो मुख्तलिफ रीप्लेज आप साइड से देखते हैं, अगर हम दिखा सकें आपको। और जो मुख्तलिफ पोस्ट पे हमारे कैमरामैन मौजूद है, हम तो चूंकि कमेंट्री करते हैं इसलिए शायद ज़्यादा लाइमलाइट में रहते हैं। आप ये देख सकते हैं कैमरामैन हमारे जो कैप्चर कर रहे हैं। एक बड़ा मुश्किल टास्क है हर बॉल पे पूरा फोकस रखना पूरे दिन। कलाइयों की मदद से खेला इस बार मेहरान ने, 2 सेंचुरीज फर्स्ट क्लास क्रिकेट में स्कोर कर चुके हैं मेहरान अपने करियर में।
लेकिन यहाँ पे बहुत कीमती रन होंगे, जितनी भी इनिंग वो अपनी बिल्ड कर सकें। मोहम्मद हारिस में भी पोटेंशियल मौजूद है, रन कर सकते हैं। और यहाँ पे लीड, जब ट्रेल जो है वो सिर्फ 3 रन की रह गई है, तो केपी चाहेगा कि इस लीड को बढ़ाया जाए जितना मैक्सिमम हो सके। 50 से 80 रन तक अगर ये लीड को ले जाते हैं तो वो बहुत हैंडी हो सकती है सेकंड इनिंग में। और क्या परफेक्ट कॉम्बो है कि खान जो है वो सिंध की टीम में है और मेहरान जो है वो केपी की टीम में। क्योंकि सिंध को वादी मेहरान कहते हैं और आपको पता है खान ज्यादा केपी में होते हैं। इससे अच्छी तरीके से खेल दिया गैप में। 4 रन की कोशिश तो होगी, 2 फील्डर्स उसके पीछे। हसनैन ने बहुत तेजी से आके फील्ड किया, बहुत ही शानदार स्प्रिंट इस बार हसनैन की जानिब से, लेके 3 रन इस असना में बन गए केपी के। चलिए यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि लूज नहीं होना है, सिचुएशन को तगड़े रखना है, टाइट रखना है सिंध की जानिब से, क्योंकि कभी भी 1 विकेट की पार्टनरशिप भी बहुत नुकसान कर सकती है। अभी तक ये पार्टनरशिप 12 रन की हो गई है, तो ये चाहेंगे। और कैप्टनसी का रोल बहुत अहम होने वाला है असद शफीक, अपने बॉलर्स को कैसे चेंज करते हैं, कितना स्पेल देते हैं। सुबह से हमने देखा यही 2 बॉलर्स यूज हो रहे हैं, ऑल्दो उनको सक्सेस मिली है, लेकिन शायद अब वक्त आ गया है कि थोड़ा एंगल को चेंज किया जाए, थोड़ा वेरिएशन को चेंज किया जाए, कोई नया बॉलर लाया जाए। एक 145 पर 5 विकेट्स हैं। सोहेल खान ने बहुत शानदार बॉलिंग किया आज, मीर हमजा ने बहुत अच्छा साथ दिया है। और अब देखना होगा कि हसनैन और शाहनवाज धानी, जिनसे बहुत कुछ एक्सपेक्टेड है, सिंध के मायानाज बॉलर हैं, दोनों हैदराबाद से ताल्लुक है। और जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा, हैदराबाद से ताल्लुक है हसनैन का, जबकि लाड़काना से ताल्लुक है शाहनवाज धानी का। तो ये दोनों शहर जो थे इससे पहले ये रबड़ी और अमरूदों के लिए मशहूर थे, और अब शाहनवाज धानी और हसनैन के लिए मशहूर हो गए हैं। बहुत खूब, बहुत खूब। इत्तेफाक नहीं हुआ है मेरा अभी तक इन दोनों शहर में जाने का, बट ख्वाहिश रखता हूं मैं। अंदर आती हुई गेंद, इसको ज्यादा एतमाद के साथ नहीं खेले बैट्समैन, लेकिन बहरहाल सरवाइव करने में कामयाब हुए। अब 2 वजूहत हो गई हैं मेरी ख्वाहिश की, एक रबड़ी वाला दूध और दूसरा शाहनवाज धानी, कि मैं लाड़काना और हैदराबाद का चक्कर जरूर लगाना बनता है। यकीन इनके फैंस आपको सुन रहे होंगे अली। जी हाँ बिल्कुल, और बहुत कम अरसे में बहुत ज्यादा फैंस इकट्ठे किए हैं शाहनवाज धानी ने। बहुत अच्छा कैरेक्टर है, बहुत ही एनर्जेटिक इंसान है, ऑन द फील्ड भी ऑफ द फील्ड भी। मीर हमजा बहुत ही सुलझे हुए इंसान है, अच्छे लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर हैं, एक अच्छी फील आती है इनसे मिलके भी। एज हुआ है और ये बॉल शायद थोड़ा आगे गिर गया गली के फील्डर से। डिसअपॉइंटमेंट जरूर हुई, क्योंकि कोशिश बहुत शानदार थी, यहाँ पे अनलकी रहे कि बॉल थोड़ा फील्डर के आगे गिर गया। 4 रन हासिल हो गए। ताहा थे, कोशिश काफी की ताहा ने इस गेंद को कैच करने की। रिप्ले में ज्यादा वाज़ेह होगा, 3 स्लिप एक गली के साथ गेंद कर रहे थे, एच लिया और थोड़ी सी गेंद आगे गिरी, थोड़ी सी गेंद आगे गिरी, जिसके नतीजे में कैच नहीं कर सके और फील्ड भी नहीं कर सके। जी हाँ, ये थोड़ा सा लक फैक्टर डेफिनेटली यहाँ पे काम आएगा केपी के, क्योंकि थोड़ी लक तो आपको कहीं ना कहीं एज अ बैटर चाहिए होती है। यहाँ पे अर्ली ऑन मेहरान को हासिल हुई है, जब कैच थोड़ा आगे गिर गया फील्डर से। यहाँ पे 42 ओवर्स का इख्तिताम हुआ, 149 पर 5 केपी। आसिफ आफरीदी समीन गोल, इसके साथ साथ खालिद उस्मान। ये आपका केपी का डगआउट देख रहे हैं। आगे अगर थोड़ा सा हम बात करते हैं तो इसरार बैठे हैं, जो स्टेट बैंक के लिए काफ़ी क्रिकेट खेले, इसके अलावा केपी के लिए बड़ी इनकी परफॉर्मेंसेज हैं। रेहान आफरीदी भी नजर आ रहे हैं, जो बड़े अच्छे विकेट कीपर बैट्समैन हैं। बहुत ही आला बॉलिंग यहाँ पे मीर हमजा की जानिब से। लाइन और लेंथ का आज बहुत बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल किया मीर हमजा ने। कोई मौका नहीं दिया है, कोई रूम नहीं दिया है, कोई फजूल बॉल नहीं किया है, सारे बॉल ऑन टारगेट रहे हैं, बैटर्स को खिलाने की कोशिश की गई है। शायद यही वजह है कि 5 विकेट्स गंवा ली हैं केपी ने, 1 विकेट कल गंवाई थी। ये देखिए लेंथ बहुत शानदार है, इस लेंथ को कैसे खेलेंगे ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि बहुत ही इंडिसाइसिव सी लेंथ है ये। थोड़ी सी गेंद
आगे गिरी, यहाँ फराज अली थे फील्डर। लेकिन जिस तरह से अगर ये यहाँ पे दोनों सर्वाइव कर गए तो इनको बड़ा यादगार रहेगा, ये एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा रहेगा, क्योंकि ऑलमोस्ट तमाम ही पाकिस्तान की बॉलिंग खेल रही है और उनके सामने इतने मुश्किल सूरत हाल में अपने आप को सर्वाइव करना और रन स्कोर करना, यकीन इन दोनों यंगस्टर्स के लिए ये ऑनलाइन ट्रेनिंग है। ये जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने अली। और ये बात तो तय है कि जब भी आप मुश्किल हालात में टीम के लिए परफॉर्म करते हैं तो आपकी रिस्पेक्ट और नाम ज़्यादा बनता है। ये बात हम बहुत बार कर चुके हैं। ये चीज़ क्रिकेटर्स को, यंग क्रिकेटर्स को समझनी चाहिए कि जितनी मुश्किल कंडीशंस में आप रन्स करते हैं तो आप रिस्पेक्ट ज़्यादा अर्न करते हैं, टीम के अंदर भी और बाहर भी। और ये अच्छा मौका है हारिस के लिए भी और मेहरान के लिए भी कि यहाँ से अगर केपी की साइड को मुश्किलात से बाहर निकाल सकते हैं तो मेरा ख्याल है कि बहुत ही शानदार होगा ये केपी के लिए। बहुत रिस्पेक्ट अर्न करेंगे विद इन द टीम स्पेशली। मौका अच्छा है, स्टेज सेट है, अप्लाई करना है, क्योंकि अच्छी आपने जैसे कहा कि पाकिस्तान की ऑलमोस्ट टॉप बॉलिंग जो है वो पाकिस्तान की यहाँ पे सिंध की बॉलिंग में मौजूद है। तो अगर इनके खिलाफ आप रन्स करते हैं तो डेफिनेटली आपके अंदर बहुत स्किल और टैलेंट मौजूद होता है। तैयार थे इस किस्म की शॉर्ट पिच के लिए। इससे पहले आपने स्टांस देखा होगा, पूरा बॉडी वेट ट्रांसफर किया हुआ था अपने पिछले कदम पर और शॉर्ट बॉल कर दी, चूंकि कोई फील्डर वहां मौजूद नहीं, इसलिए बड़ी आसानी के साथ 4 रन हासिल किए। उम्दा पिछले कदमों पे खेला गया स्ट्रोक। जी हाँ, अभी हम जिक्र ही कर रहे थे, लाइन और लेंथ शानदार रही है और उसी पे चूक गए, खराब बॉल कर दिया। क्योंकि जब आपका बॉल आगे से अच्छा हो रहा है तो आपको इस बॉल करने की जरूरत नहीं है। देखिए हाफ वे बॉल था जिसे बहुत ही आसानी से खेल दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई यहाँ पे हारिस के लिए। 4 रन हासिल किए। टेस्ट किया था शॉर्ट बॉल पर, 3 स्लिप एक गली के साथ गेंद करते हुए मीर हमजा, और इस मरतबा आसानी के साथ लेफ्ट किया। ये बेहतर बॉलिंग है। जितना कंसिस्टेंट रहेंगे इस लाइन और लेंथ पे उतनी विकेट्स हासिल करेंगे। हमने देखा है कि बॉलर्स जो भी कंसिस्टेंट हैं अपनी लाइन और लेंथ में वही विकेट्स हासिल करते हैं। इससे पहले मैच में सदर्न पंजाब के लिए आमिर यामीन ने 5 विकेट्स हासिल किए, सेंट्रल पंजाब के लिए बिलावल इकबाल ने 5 विकेट्स हासिल किए। तो उनकी खूबी यही थी कि वो एक लाइन और लेंथ पे कंसिस्टेंट रहे। ज़्यादा डिलीवरीज इस जगह पे की जहाँ पे अभी आखिरी बॉल मीर हमजा ने किया है। जिस तरह हम कल अभी बासित अली की बात कर रहे थे, बासित अली ने कहा था कि सुबह विकेट मिल जाएगी तो हम मैच में कम बैक कर जाएंगे। इसी तरह उन्होंने ये भी कहा था कि 100 रन की जो लीड है वो इतनी ज़्यादा मायने नहीं रखेगी और मैच बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। और हम ये चीज़ बड़ी अच्छी देख रहे हैं इस मैच में, खासतौर से गुज़िश्ता मैच के मुकाबले में। इस मरतबा अपील एलबीडब्ल्यू की, लेकिन उठते हुए हाथ फौरन ही नीचे गिर गए क्योंकि अंपायर ने इसको ज़्यादा अहमियत नहीं दी। जी हाँ, एंगल से बॉल अंदर आया था, देखना होगा एक्शन रिप्ले में कि कितना बॉल स्विंग हुआ अंदर की तरफ। जी हाँ, शायद थोड़ा ऊंचा भी था और डाउन द लेग भी था। और तो मीर हमजा की पूरी कोशिश थी कि किसी तरीके से इस विकेट को हासिल किया जाए, लेकिन बहुत ही अच्छा डिसीजन इस बार अंपायर वलीद याकूब की जानिब से। 43 ओवर का खेल मुकम्मल हुआ, 153 पर 5 केपी। असद शफीक वहाँ पे मौजूद, सिंध के कप्तान। जहाँ आज सुबह से 11 ओवर्स का खेल हो चुका है तो 5-5 ओवर्स दोनों फास्ट बॉलर्स कर चुके हैं। अब ज़्यादा दूर नहीं है जब हम एक नया पैर देखेंगे मोहम्मद हसनैन और शाहनवाज धानी की सूरत में, क्योंकि शायद मुझे लगता है कि अब टाइम आ गया है कि बॉलिंग चेंज की जाए। यहाँ वार्म अप करते हुए यहाँ पे शाहनवाज धानी हमें नज़र ज़रूर आ रहे हैं। बहुत अहम होगा इन दोनों का स्पेल कि ये यहाँ से आगे इस जो अच्छा आगाज़ मुहैया किया है सोहेल खान और मीर हमजा ने, उसको कैसे कैरी करते हैं। शाहनवाज धानी से काफी कुछ एक्सपेक्टेड है। अभी तक 5 विकेट्स हासिल नहीं किए उन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। ये एक अच्छा मौका है, अभी 5 विकेट्स हैं। और एक कमेंट्री बॉक्स का मंजर कि जहां पे अली यूनुस हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे स्टैट्समैन स्टैटिशियन फरहान निसार बड़े क्रेजी के साथ स्टैट्स हमें फराम करते हैं। बड़ा ज़बरदस्त एनवायरनमेंट है ग्राउंड से बाहर भी और हमारे कमेंट्री बॉक्स में भी। और ये शाह फैसल और अहमद सईद
मुस्तफ़ा अपील LBW की, लेकिन ये अपील भी मुतासर नहीं कर सकी इम्तियाज इकबाल को। जी हाँ, बज़ाहिर एंगल से ऐसे लग रहा है जैसे गोइंग डाउन है, लेग स्टंप को मिस कर रहा होगा ये बॉल। बहुत ही टेस्टिंग टाइम्स हैं ये केपी के इन दोनों बैटर्स के लिए। 7 रन पर मौजूद है मेहरान, 12 रन बना रखे हैं हारिस ने, लीड जो है वो 8 रन की हो गई है। देखिए एंगल के साथ मिडल एंड लेग पे पिच हुआ और शायद नीचे जाता हुआ बॉल, अनकंफर्टेबल हो गए यहाँ पे बैटर जो है उनकी, शायद घुटने पे बॉल लगा है। और ये जो एरिया होता है जहाँ पे फ्लैप और थाई पैड के दरमियान वाला, यहाँ पे बॉल लगे तो बहुत ही तकलीफ मिलती है बैटर को। और एक और अच्छी डिलीवरी यहाँ पर इस मौके पर सुहेल खान ने बड़ी उम्दा अब तक बॉलिंग की और बैट्समैन को मुसलसल डिसीव किया अपनी ज़बरदस्त बॉलिंग से। पहली स्लिप में एहसान अली, सेकंड स्लिप में खुर्रम मंजूर, विकेट कीपर मोहम्मद हसन। या अच्छी लेंथ पे पड़ा हुआ बॉल, सॉफ्ट हैंड से खेले, यही शायद वजह है कि बॉल कैरी नहीं किया स्लिप तक, और यही सही तरीका है। आप सॉफ्ट हैंड से खेलते हैं तो बॉल उस तरीके से कैरी नहीं करेगा इस पिच पे। अपने बॉडी के करीब बल्ला रख के खेलेंगे तो बेहतर रहेगा इन पिच पे। और अब से थोड़ी देर पहले आपने कैमरामैन का शॉट देखा था। अमूमन इस किस्म की जो फ्लॉपीज हैं वो नज़र नहीं आती हैं, लेट 70s में इस किस्म की फ्लॉपीज नज़र आती थी, और मेरे ख्याल में किम ह्यूज वो आखिरी प्लेयर थे जो इस किस्म की फ्लॉपीज पहनते थे। और यहाँ पे मुझे लगा जैसे आउटसाइड एज हो गया है, पूरा स्लिप कॉर्डन एकदम एक्साइटमेंट में खड़ा हो गया था। अली रश ऑफ ब्लड का शिकार हुए, काफी ऑफ स्टंप से बाहर गेंद थी, उसको चेस करते चले गए। देखिए मेरी जगह कोई भी होता तो जिस तरीके से बॉल डिविएट हुआ था पड़ने के बाद तो शायद एक्साइटेड हो जाता। फ्लॉपी की आपने बात की तो इंग्लैंड के एक विकेट कीपर थे रसल, शायद वो भी इस तरह की फ्लॉपी ही यूज किया करते थे विकेट कीपिंग के दौरान। जैक रसल, और हम ये अपने कैमरामैन की बात कर रहे थे, ऐसा लगता है एहसान अली कैमरे के भी पीछे मौजूद हैं, काफी रिजेम्बलेंस है एहसान अली से। अब हम एहसान अली को देखेंगे और उसके बाद हम अपनी प्रोडक्शन टीम से कहेंगे कि जरा इनको दिखाएं। पहली स्लिप में मौजूद है एहसान अली। ओवर भी अपने इख्तिताम को, ये एहसान अली है स्क्रीन पे। और अब हम अपने अगर कैमरामैन को दिखा सकें, ऐसा लगेगा कुंभ के मेले में पिछड़े दो भाई हैं। ये देखें, बहुत दूर से बहुत खूब पहचाने आप। और अब एहसान अली को देखने के बाद ज्यादा मुझे रिजेम्बलेंस नजर आना शुरू हो गई है। और इस तरीके से तो जो कैमरामैन है बहुत आसानी से फील्ड भी कर सकते हैं आके, और एहसान अली को उधर भेज दें तो पता नहीं चलेगा शायद। लेकिन ये एहसान अली के लिए बहुत अच्छा हो गया, क्योंकि अब अपने हम शक्ल को दिखाने में उनको भी बड़ी खुशी महसूस होगी, तो एहसान अली के लिए बड़ा अच्छा हो गया ये। जहाँ थोड़ा अच्छा और हो जाए, अगर एक और विकेट हासिल हो जाए यहाँ पे मीर हमजा को। 16वां ओवर कर रहे हैं, 43 रन देकर 3 विकेट हासिल किए, बहुत शानदार स्पेल रहा है। स्पेशली आज सुबह में जो उन्होंने बॉलिंग की है, ऐसी ही बॉलिंग एक्सपेक्टेड थी। और ना सिर्फ शक्ल ही नहीं मिल रही, बल्कि मैं बताऊं एहसान अली ने जो शर्ट नंबर पहना है 93, वो मीर हमजा ने भी पहना है, तो काफी चीजें वो डुप्लीकेशन में आ रही है एहसान अली की यहाँ पे। यहाँ पे आउटसाइड दी ऑफ स्टंप बॉल करते हुए मीर हमजा, पहले भी जिक्र कर चुके थे कि लिए अब शायद वक्त आ गया एक नए पैर को बॉल करवाने का। 12 ओवर है, 6 ओवर का लंबा स्पेल कर लिया दोनों ने। सक्सेस जरूर हासिल हुई है, लेकिन बेहतर होगा कि अब नए पैर को लाया जाए, एक नई एनर्जी डाली जाए बॉलिंग के अंदर, क्योंकि ये पार्टनरशिप अब बढ़ रही है, 20 रन पे पहुंच गई है। एक एक रन रोकना बहुत जरूरी है सिंध के लिए, ज्यादा लीड अफोर्ड नहीं करते हैं। ये देखिए एहसान अली 93 शर्ट नंबर, इस मतलब ड्राइव किया, फील्डर गेंद के पीछे, गेंद के साथ रेस लगाते हुए शाहनवाज धानी पहले गेंद तक पहुंचेंगे, लेकिन 2 रन का स्कोर में इजाफा। एहसान अली का 93 बनता है क्योंकि उनकी डेट ऑफ बर्थ है, और मीर हमजा 92 में इनकी डेट ऑफ बर्थ है। अब ये 93 क्यों पहने, यकीनन इनका लकी नंबर होगा, तो ना सिर्फ शक्ल मिल रही है बल्कि नंबर भी इनके जो है वो डुप्लीकेशन में आ रहे हैं। जब बहुत कम देखने को मिलता है ऐसा कि 2 प्लेयर्स को एक ही नंबर दिया जाए एक ही टीम में, ये मेरे लिए बहुत सरप्राइज है और पहली बार शायद मैं देख रहा हूँ।
अली ये जो नंबर्स होते हैं प्लेयर्स अमूमन अपनी डेट ऑफ बर्थ के लिहाज से ये लकी नंबर होते हैं, उस लिहाज से ये नंबर जो है ये अडॉप्ट करते हैं या चूज़ करते हैं। लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान के एक प्लेयर थे, उनका एक ज़माने में एक सेलुलर कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तो उन्होंने उसका जो कोड था वो अपनी शर्ट पे लिखवा लिया था ताकि उसकी पब्लिसिटी होती रहे। बहुत अच्छा कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा फिर तो। देखिए 93 ये थोड़ा सरप्राइजिंग है मेरे लिए कि दोनों प्लेयर्स को एक ही नंबर दिया गया, अलॉट किया गया है। इसके बारे में चेक करना होगा मुझे, मैंने ऐसा पहले देखा नहीं है कि दो प्लेयर्स को एक ही नंबर। हमने ये तो देखा है कि प्लेयर्स एक दूसरे की शर्ट्स पहनते हैं, लेकिन अलॉट हुआ वो दोनों प्लेयर्स को, सरप्राइजिंग है। एक और अच्छी डिलीवरी यहाँ पे मीर हमजा की जानिब से, बल्ले के बिल्कुल करीब से होती हुई गेंद गई है विकेट कीपर के पास। यह कमाल की बॉलिंग की है आज का, ये स्पेल मीर हमजा का बहुत यादगार रहेगा। चाहेंगे कि एक विकेट और हासिल कर ले, लेकिन ये देखिए जो लाइन और लेंथ का इस्तेमाल किया, देखिए अनसर्टन जो लेंथ है वो बहुत शानदार रही। और इस एंगल से जब लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर बॉलिंग करता है, जो बैटर जो यूजुअली अंदर वाला बॉल खेलता है, और अगर पिच होकर बाहर को निकले तो बहुत मुश्किल हो जाता है बैटर के लिए कभी कभी। और आप कह रहे थे कभी ऐसा देखा नहीं, एक बड़ा मशहूर गाना था, उसको तो मैं कोट नहीं करूंगा, लेकिन जो छुपा था वो बताने के लिए तो आए हैं। एक बार फिर बीट किया आउटसाइड दी ऑफ स्टंप। ये बहुत ही कमाल का स्पेल रहा है मीर हमजा की जानिब से। यहाँ ड्रिंक्स हो जाएंगे। 45 ओवर्स का इख्तिताम हुआ, 156 पर 5 केपी।
sunny ground as well. I don't recall it seeing in any other venues in Pakistan. Do you, Amar? No, actually, yes. I haven't seen it anywhere apart from this ground. It's a traditional Lord's way of starting a session. It's just this man now, Shahnawaz Dhani. Sindh is looking towards him. Put a big effort in. Starts off with a good one. This has been the Achilles heel for Sindh. The two experienced bowlers, they do bowl well, but then the backup bowlers, they let him down last evening. Exactly. They have to back that first spell from both ends by these swing bowlers. Dhani and Hasnain have a role to play, a very important one. Full pitch, gorgeous drive from Haris. Just made timing on that. We'll get a couple of runs. Substitute Taha has been seen in action. Saad Khan is taking plenty of time off the field because of his groin injury. But Haris has looked good. He's rode his luck. Plenty of plays and misses. You need that kind of luck early doors on this pitch. Yes, on a given day on this sort of a track, I would prefer batsmen driving me through the covers like that previous delivery, rather than them having that time to see that away swinger or that away movement of the pitch. So it would be much better if batsmen go for those drives, and you never know, all of a sudden you can swing the ball away or lure them into a shot which is not there. Absolutely right, and credit to Asad Shafiq. He's got 3 slips and a gully, and that cover position is vacant now. He's showing to Haris, if you're good enough, hit the drive. This one's off the edge. This is running down and will go to the fence. Now the good delivery from Dhani, but Haris controlled it pretty nicely in the end. It's very well played in the end, as you said. Angling the bat and ball, there you see. Again, you see that side on position. It went down because he was quite side on. He wasn't into the bat. Didn't show the full phase of the bat. It was a bit towards that slip cordon, and that is why the ball went all along the ground. And lucky for him, it went in the gap. 4 more runs. Third slip has been moved to short mid-wicket catching. Seeing that in drift from Dhani. That's better. Shahnawaz Dhani. Big effort from his team. At one stage, Sindh was pretty comfortable in conceding a 100-run lead, and that's how they were planning their game. But that early burst would have made them think that they can do the inroads pretty quickly. This partnership now, 29 runs, is getting into that phase where the batters spend enough time on the middle to start getting comfortable. This time in line, Shahnawaz Dhani. A bit of a mixed bag, the first one, 163 for 5. At this age and at this stage of your career, it is very easy to get carried away, especially if you can bowl quick. But with experience you learn, and no matter how quick you are on a green track, you've got to make the batsman drive. And if you don't do that, no matter how quick you bowl, and if he's more times than not, if he's on the back foot, he will get ample time to leave those balls.
Nice turn of Mohammad Hasnan. He also bowled a kind of lackluster spell yesterday. He hasn't been playing regularly for this Sindh outfit. We've seen him once in this competition previously at the Gaddafi Stadium, and he did bowl quite nicely at times, especially with the old ball. This ball is now 46 years old. Off the edge, flew to gully. Umair bin Yusuf had to be quick. 46 overs old, this ball. Pretty lush outfield. Does this ground have any history of reverse swing, Amr? Well, it starts very late. You see that one, a bit of shape away. Lucky that it didn't go in the air. Very late the reverse swing comes into play because of, as you said, the lush green outfield, and the wicket has grass on it, so the ball doesn't really get rough. That one didn't carry on the full to Hassan. Snan probably working a lot with his wrist position as well at times. He's been in the past when he played for Pakistan in the white ball cricket. He's been found working on that aspect of his game. A lot to do with the rhythm. He came off the field yesterday with slight complaint of some shoulder pain. Have to keep an eye on that as well. Requires a big shift. Just keep his team in the hunt. It's got very nice shape going. It's just about consistency. The length is good, but that line has to be slightly closer as well. Tempt the batter. So all the bowlers we've seen so far have had a change of end. It has worked for Sohail. It worked for the left armour. We'll have to see if it works for this pair. Seems to be bowling well within himself. His first over. Normally he's a very rapid fast bowler. Genuine quick. We haven't seen this yet. Warming up to the task. Yes, in that context, of course, I think Ali Yunus and Ali Salman also mentioned the fact that when you have tear-away fast bowlers, ones with good pace, who like to run in and bowl fast, you have to make sure that the workload is divided equally, because you see Tahani and Hasnan, they're not those sort of bowlers who can bowl 6 or 7 overs at a stretch. They are more effective when they bowl 3 or 4 quick overs, and then they're, given a rest. And that is why that first spell by Sohail and Hamza, that was a bit too long, I think. Off the front foot, magnificent stroke. Weight coming into the shot was very nice, slightly away from the body, but the hand-eye coordination was excellent. Harris will do this to you. 47 gone, 167 for 5. You see that one, a half volley, outside off-stump width, and driven beautifully. Weight transfer was excellent. And the best thing, of course, it went in the gap. So the point I was making, Shah Faisal, is that
What if one of these bowlers don't bowl well? Who do you go to then? When you've bowled your two opening bowlers, you've given them a longish spell, and the ones coming after them, what if they don't bowl well for a couple of overs and you need to change? Then you'll have to go to irregular bowlers, which might just release that pressure of the batsman. So that is one thing that you need to keep in mind. Basit Ali, as we mentioned in our first spell, a very, very shrewd captain himself, always thinking, always aware of the game. You make a very, very good point, Amar, because this was noted even yesterday. 6 to 7 over spells for your top bowlers when you have 4 pacers. It's a 4-pronged pace attack. And once again this morning they bowled through the first hour, and now the 2 rookies are bowling in tandem. It would be ideal if they can get a combination where one experienced guy is in the attack with the rookie to provide some control to the skipper. It's in the air and in the gap. Once again, width on offer, didn't quite middle it, but this is certainly releasing that early pressure that Sindh had exerted on KP batters. But as a fast bowler and as a captain, I wouldn't mind seeing batsmen doing that. There's always a chance when you're playing such drives. There you see, not a half volley really, played on the up. Yes, the batsman did everything right, put the transferred the weight well and drove it well as well. In the air once again, this time closer to Asad Shafiq, who makes an excellent save. That was better, that driving length is going in the air. And if you see the field placings, Asad Shafiq has got a short mid-wicket catching. But these 2 drives went aerial, but he's showing this to Mehran and Haris. And now that fielder Ahsan Ali has been moved across. And see if it's short cover catching. No, it's going back to regulation cover. Just about 25 yards away from the bat. Will Dhani produce the goods? And will batsmen repeat the shot? That's another question. The square leg has been sent back as well for the short pitch delivery, making the batsman guessing. Stam went on the back foot. Good contest here. Well, I would beg to disagree with these field positions. You see that cover position, immediately when that fielder is placed there, the batsman has changed his style to nearly the same ball. Before the 2 deliveries bowled, he drove those deliveries because he could see that vacant area. Now that he cannot see that vacant area, he went on the back foot and managed it easily. There you go. Once again, there was a tempter from Dhani. Had to let it go, Mehran. 169 for 5. It is like a game of cat and mouse between the batters and the bowlers and the skipper with different tactics. See the batting card, it's quite evident. It's very difficult to get your innings started. Sadiq 75 got dismissed early on this morning, and so did Iftikhar, but all the others, single digit scores, couldn't get started. That's why Haris's innings is very important. Look at his strike rate as well, 26 of 44. He's intent on keeping the scoreboard moving. That lead is already 24 runs. Very important on this pitch. It's been lackluster from Sindh in almost last 45 minutes. Like you mentioned, 2 big fast bowlers, for my liking, continued for far too long. And then the rookies in their spell hasn't quite delivered the goods yet.
Yes, as we mentioned earlier, now you don't have anyone to go to. If they're not effective enough, both these rookie bowlers, quick, like to bowl with pace. You don't have any other option. That was a good one. Hasnain is real good exponent of that reverse swing and Yorker. Be interesting to see, did it tail back in the end? Harris did point out that it did, but the length was excellent. Look at that. And it did right at the last minute. Excellent delivery, that one. Swung in late, not very big swing, but enough to put the batsman in trouble. He lost the balance, but eventually did well to dig it out. Let's add another intrigue to the passage of play here. Edge and gone! Splendid bowling from Hasnain on that occasion. And Harris done the rest, diving to his right, took a magnificent catch. And this is the breakthrough that Sindh required, and it produced a wonderful delivery from the rookie pace. Yes, that was a very, very good catch by the keeper. For a second, I thought, there you see, this one went away, the previous delivery came in, and good low diving catch. For a second I thought he was going in the wrong direction, but managed very well in the end. Good catch. Mohammad Haris out for 26 of 47. 169 for 6. "24 years of age, Asif Afridi, 1,086 runs. He has a first-class 100, 22.62 his average. Very handy white ball cricketer, definitely. He's known for his big hits. Be interesting to see his approach on this pitch, because you would think that his defensive technique wouldn't be adequate enough last on this pitch. Will he go big or try to take the game away from Sindh? Won't be easy though. Hasnain needed that wicket to give him some confidence. The lead is only 24 runs. Sindh would be delighted with this morning session. That's good thinking by Hasnain. The previous delivery was the one before, on which he took the wicket. That one came in, nearly yorked him with that in swing, and then immediately the outswinger, or the out cutter, you can say it, left the batsman after it pitched. Harris had no answer to that, and a very good catch by the keeper. So good cricket. Let's see if they can capitalize on this or not. 3 slip Senegali for the left-hander. Hasnain charging in. But bat to ball did Asif Afridi, off the mark immediately. Like you described perfectly, Amar, that Yorker did set him up. It really tailed back in late. And then the next one he produced at a perfect length, and it hit the seam. Excellent cricket from the young fast bowler. Look at that. Little bit of shape away in the air, and then continued when it hit the seam. Got the edge. Also, if you look at the footwork, exactly what we were talking about earlier on in the morning, that he did square up. Presented that fuller face of the bat at a right angle, which meant that the edge did carry instead of going down to the ground. This one, another good delivery on the money. Hasnain has strung quite a few good deliveries in this over. That's a rare occurrence for his match so far. It looks like he's coming back into his rhythm.
By the looks of things, probably there won't be a lot of difference on the first innings. That means that the game is well set for whoever execute their skills better in the second innings have a chance for another victory. Sharjeel Khan. Successful over from Mohammad Hasnain. He made the breakthrough, 170 for 6. Well, by the look of things, it's Dahani's turn now. Get a wicket or two. That's interesting. Sohail Khan was fielding at mid-off in the last over, talking to Hasnain constantly. And now he's back with Dhani at mid-on for the left-hander. And even in Lahore, when we saw them train, he was really helping Hasnain with his wrist position, with his position on the crease. Sohail Khan has gathered a lot of experience over the years. It's good to see that he's transferring them to the youngsters. Dhani's away movement could be dangerous for Afridi. Angling away, 3 slips in waiting. How long Afridi will wait before he can unleash some of his big strokes? Well, that thing you've noticed about Sohail Khan, that is very, very important. Apart from his experience when he's bowling, this is the role which the team management would love him to, you know, take more seriously and put some more time into that, is to train these young bowlers for the future and for the match, of course, as well. You're absolutely right, Farhan. This is invaluable. In the heat of the battle, you have someone like Sohail Khan working with these youngsters who have immense potential. Look at that, talking in every delivery, talking about how big a heart you need probably as a fast bowler, and brings a smile on Dhani's face. He's never short of a smile anyway. Beautiful side, that experienced fast bowler giving tips to the youngster. Big swing and a miss. It didn't take long for Afridi. He knows one way to play. Yes, and of course someone with not having a technique to really boast about. There you see, nothing short really. Stand and trying to deliver, but this is not the wicket. He can do that again and again. Sindh fielders need to keep their hands nice and dry. May come their way. Dhani comes back. The rip-roaring short delivery probably may seem harmless, but in bigger scheme of things, he's pushed him back in his crease. An ideal technique of leaving the ball. He took his eyes off too soon and left the bat hanging up there. But he's more known for his bowling and big hitting. Like Hammer rightly said, his defensive technique is nothing to boast about. Off the edge, it will just earn him a single as Hasnain quickly gathers the ball. He can be still a dangerous player, Ahmer, because if he starts swinging, that boundary, even if it doesn't middle, it gets the edge. That boundary behind square is very, very short and very difficult to protect. Yes, you're absolutely right. And in the context of this game now, especially, a few runs, if you let them slip away and
something Asif Afridi is capable of, scoring very quickly. If that happens, you know, all of a sudden the complexion of the game might change. All this is very, very absorbing, I have to say. Got the edge! No, it felt like there was a deviation after it passed the bat. Haris is perplexed, but Dhani is coming into the act as well. Another excellent passage of play. See this one jagging back. Well, plenty of movement after it passed the bat. Nothing much before that. Went past the bat, past the stumps, and look at that. Haris did very, very well. 171 for 6. हसनैन अपनी बॉलिंग को जारी रखे हुए हैं, अब एक विकेट हासिल कर चुके हैं मोहम्मद हसनैन और 3 स्लिप्स इनके पास मौजूद हैं। गली है, पॉइंट के फील्डर हैं और मेरे साथ मौजूद हैं अली यूनस बल्कि माफ़ कीजिएगा। बहुत वक्त गुजार रहे हैं आप अली सलमान के साथ, हर जगह आपको अली सलमान नज़र आ रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा लीड जो है वो 26 रन की हो गई है। अच्छी मुस्तहकम लीड है, ये चाहेंगे कि ये लीड को थोड़ा बेहतर करें और किसी तरीके से 100 रन तक ले जाएं। बड़ा शॉट मारा है, बहुत ही शानदार तरीके से, ये चला जाएगा बाउंड्री लाइन के बाहर। जी हाँ, 6 रन का इशारा अंपायर वलीद याकूब की जानिब से। आसिफ अफरीदी से ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं फरहान। जी हाँ, आसिफ अफरीदी इसी किस्म की बैटिंग के लिए शोहरत रखते हैं। ये देखिए हसनैन को बिल्कुल भी खातिर में नहीं लाए, ऑफ स्टंप से बाहर गेंद था, पीछे गिरा हुआ था और इसको बॉलर के सर के ऊपर से फेंक दिया बाउंड्री लाइन के बाहर। 3 निफ सेंचुरियाँ स्कोर कर चुके हैं इस सीज़न में और एक इनकी निफ सेंचुरी सिर्फ 30 गेंदों की मोहताज थी। यहाँ पे जो फर्स्ट क्लास ना खेलने की कमी है वो यहाँ पे ये दो फॉलो बॉलर्स में यहाँ पे नजर आती हुई। हमने देखा कि सोहेल खान ने और मीर हमजा ने जिस तरह से बॉलिंग की है उस तरीके से प्रेशर डाल नहीं सके। ऑल्दो एक विकेट जरूर हासिल किया हसनैन ने, लेकिन शायद उन एरियाज को कंसिस्टेंटली हिट नहीं कर पाए। और ये होता है जब आप ज्यादा फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेलते हैं। ड्राइव किया था आसिफ अफरीदी, बहुत ही शानदार क्रिकेटर है। तो फर्स्ट क्लास क्रिकेट की हम बात कर रहे थे कि कितनी अहम है एक फास्ट बॉलर के लिए खेलना स्पेशली। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, मौजूदा दौर जो वाइट बॉल क्रिकेट का दौर कहा जाता है, लेकिन रेड बॉल की अहमियत से इनकार नहीं है। और अगर हम पहली इनिंग्स में देखते हैं जो इरफानुल्लाह शाह की परफॉर्मेंस थी उसने फ़र्क डाला, तो क्योंकि इब्तिदा में इमरान खान सीनियर वैसे विकेटें नहीं ले पाए तो उन्होंने फॉलोअप के तौर पर वो आए और विकेटें ली और उनके पास भी काफ़ी तजर्बा है फर्स्ट क्लास क्रिकेट का। तो ये वाइट बॉल क्रिकेट के हीरोज़ तो ज़रूर हैं हसनैन और धानी, लेकिन 4 रोज़ा क्रिकेट में इन्हें वक्त लगाना पड़ेगा। आसानी से एक और रन हासिल कर लेंगे आसिफ अफरीदी। बहुत शानदार ऑलराउंड क्रिकेटर हैं, जैसे आपने कहा कि 3 बार 50 रन का हंसा भी अबूर कर चुके हैं और इस मैच को सेटअप करने में इनका बहुत अहम रोल है। एक सरप्राइज के तौर पे एज अ लेफ्ट आर्म स्पिनर इन्होंने कल इनिंग का आगाज तो नहीं किया, मतलब नए बॉल के साथ ही इन्होंने किया और देखा हमने कि कोई जवाब नहीं था सिंध के बैटर्स के पास उनकी बॉलिंग का। कुछ गलत शॉट्स भी खेले गए, उन पे मजबूर किया गया उनको वो गलत शॉट्स मारने पे, क्योंकि इतनी टाइट लाइन और लेंथ पे बॉलिंग करते हैं। वाइट बॉल स्पेशलिस्ट हैं। जी हाँ, नए गेंद से बॉलिंग करना इन्हें आती है और 11वें ओवर में बॉलिंग के लिए आए थे। और उससे पहले सिंध के जो ओपनर्स थे बहुत ज़्यादा सेट थे, मुस्तहकम पोजीशन थी सिंध की, लेकिन आसिफ अफरीदी ने इस मैच का पांसा पलटा है। अगर आप याद करें जो पहला 1 घंटा था कल के दिन का, तो सिंध की टीम टॉप पर दिखाई देती थी, इन फॉर्म। एहसान अली रन्स कर रहे थे, उनके साथ तजर्बाकार खुरम मंजूर थे, लेकिन जैसे ही यके बाद दीगरे 3 विकेटें हासिल की आसिफ अफरीदी ने, तो सिंध की टीम बैकफुट पर चले गई और इन द एंड 145 रन पर ढेर हो गई। यहाँ पे सोहेल खान का रोल बहुत अहम है। हम देख रहे हैं कि मिड ऑन टू मिड ऑन फील्डिंग कर रहे हैं, वो बॉलर के साथ साथ फील्डिंग कर रहे हैं। बहुत ज़रूरी है कि यंगस्टर्स जो हैं ये सोहेल खान के एक्सपीरियंस से फ़ायदा उठाएं। बहुत ही शानदार तरीके से शॉट खेला है ये।
कलाइयों की मदद से गैप बेहतरीन तरीके से फाइंड करते हुए 4 रन हासिल किया अपनी टीम के लिए। बहुत अहम रन ये हासिल कर रहे हैं मेहरान और आसिफ आफरीदी। लीड अब बढ़ते हुए 37 रन की। जी हाँ, इसके साथ ओवर भी मुकम्मल हुआ। 182 रन बना चुकी है खैबर पख्तूनख्वा की टीम। और मेहरान इब्राहिम एक बरस के बाद अपना पहला फर्स्ट क्लास मैच खेल रहे हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी में नहीं होते ये कभी भी खैबर पख्तूनख्वा की टीम में। और जब बैटिंग करने के लिए आए थे तो काफ़ी मुश्किल सूरत हाल थी। ये देखिए, टांग पर गिरा हुआ गेंद था, इसको ऑन साइड पर खेल दिया। सिर्फ एक ही फील्डर था, उसके पास से होता हुआ गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। जी हाँ, यहाँ पे काफ़ी डिसअपॉइंटेड होंगे असद शफीक और बासित अली मैनेजमेंट जो है सिंध की, क्योंकि ये बेहतर एक्सपेक्ट करते हैं हसनैन और धानी से, क्योंकि पेस मौजूद है दोनों के पास, लेकिन वो जो तजुर्बा है फर्स्ट क्लास खेलने का वो नहीं है। डिफरेंट कंडीशंस में डिफरेंट तरीके से बॉलिंग करने का तजुर्बा नहीं है। बैट्समैन को सेटअप कैसे करना है उसका तजुर्बा नहीं है। क्रीज यूज़ कैसे करनी है उसका तजुर्बा नहीं है। कौन सी लाइन पे कंसिस्टेंटली बॉलिंग करनी है उसका तजुर्बा नहीं है। और यह हमने देखा कि आज इस चीज़ को जस्टिफाई किया सोहेल खान ने और मीर हमजा ने, जब उन्होंने पहला बर्स्ट किया, पहले घंटे का जो खेल था जो उन्होंने, और यहाँ पे मिसफील्ड हो जाएगी सोहेल खान से, 2 रन एक्स्ट्रा दे देंगे। ये खराब क्रिकेट है, एक एक रन को बचाना होगा सिंध को। जी हाँ, और अली ये जो फ़न है ये आते आते आता है। ये फौरी तौर पर नहीं, T20 क्रिकेट में आप फौरी तौर पर कामयाबी हासिल कर सकते हैं, लेकिन फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट मेहनत मांगती है। ये खून पसीना एक करना पड़ता है फास्ट बॉलर्स को इस क्रिकेट में। तो यहाँ पर शायद शाहनवाज धानी के फैंस हमसे ज़रूर नाराज़ हों, लेकिन अपना नवा फर्स्ट क्लास मैच खेल रहे हैं और अभी तक 5 विकेटों का कारनामा इन्होंने सर अंजाम नहीं दिया, जितना इन्हें हाईली रेट किया जाता है। अगर हम माजी के बॉलर्स की बात करें तो उन्होंने इब्तदाई अपने पहले 2-3 मैचेस में 5 विकेटें हासिल कर रखी हैं। और ये बेहतरीन बॉल था। इस लाइन पे कंसिस्टेंटली बॉल करना का हुनर आना चाहिए, ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट आपको सिखाती है। शाहनवाज धानी बहुत एक्साइटिंग है, यंग फास्ट बॉलर है। ये देखिए लाइन और लेंथ बहुत शानदार रही, लेकिन क्या ये बार बार कर सकते हैं? कंसिस्टेंटली पूरा ओवर 6 बॉलें इस जगह पे डाल सकते हैं? ये हुनर इनको आना पड़ेगा, और वो फर्स्ट क्लास से आएगा जैसे आपने कहा। खुद भी हैरान हो गए अपनी इस गेंद से। और यहाँ इन्हें ये सहूलत हासिल है कि सुहेल खान मौजूद हैं, 500 से ज़ायद विकटें। मीर हमज़ा ने आज 350 विकेट्स मुकम्मल की। ताबिश खान 600 से ज़ायद विकटें ले चुके हैं। तो इन सीनियर से सीखना होगा इन यंगस्टर्स को। यहाँ फोकस जो है वो अपनी लर्निंग पे रखना होगा। सोशल मीडिया कैमरा में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन प्राइम काम आपका जो है, जो पहले आपको काम करना है वो परफॉर्म करना है, वो विकेट्स लेके देनी है अपनी टीम को। और अगर आप उसमें कामयाब नहीं होते हैं तो वो चीज़ें इररिलेवेंट हो जाती हैं। सबसे पहले आप परफॉर्म कीजिए, अपनी टीम को मैच जिताइए, उसके बाद जो मर्जी कीजिए, कोई आपको कोई उंगली नहीं उठाएगा। लेकिन यहाँ पे 10 ओवर में 40 रन दे चुके हैं, ऐसे टाइम पे जहाँ पे सिंध को ज़रूरत थी कि जो फॉलो अप बॉलर्स वो अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, प्रेशर डाल के रखें, ऐसा नहीं हुआ है। बिल्कुल, इस दफ़ा ये पीछे गिरा हुआ गेंद था। शुरू में हमने देखा आगे गेंद किया, बीट किया। और अली, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में आप जितने मर्जी रन्स कर दें, जब तक आप 20 विकेट्स नहीं लेंगे आप मैच नहीं जीत पाते। और वो 20 विकेट्स आपको बॉलर्स ही लेके देते हैं, और ऐसी विकेट्स पर फास्ट बॉलर ही आपको आउट करके देंगे। सुहेल खान और मीर हमज़ा ने अपना काम पूरा किया आज जो इब्तदाई पहला घंटा था। और अब ये नौजवान बॉलर्स की जिम्मेदारी है कि जल्द से जल्द खैबर पख्तूनख्वा की जो बैटिंग लाइन है इसे समेट दें। एक बार फिर ओवर पिच डिलीवरी, जिससे शानदार तरीके से ड्राइव किया है। 4 रन तो शायद नहीं मिल पाएंगे, लेकिन 2 रन के लिए वापस आ गए दोनों बैटर्स। तो एक बार फिर अपनी लेंथ से चूके ओवर पिच डिलीवरी जो ड्राइव के लिए बहुत आसान हो गया। यहाँ पे मुश्किलात आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही हैं फरहान सिंध के लिए, क्योंकि लीड जो 42 रन पर पहुंच गई है। जी हाँ, बहुत ही अच्छी लीड तस्वर की जाएगी इस विकेट पर। और अगर हम एक्शन रिप्ले देखें मेहरान इब्राहिम का, तो बैकलिफ्ट इनकी बहुत ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल नीचे से ये शॉट खेलते हैं, बहुत ही मुनफरिद। और आम तौर पर हम ऐसे देखते नहीं हैं बल्लेबाजों को इस अंदाज से बैटिंग करते हुए। पंच की सूरत में खेलते हैं, ज़्यादा बैन इनको फॉलो नहीं किया, पहली बार इनको बैटिंग करते हुए देख रहा हूँ। 52 ओवर का इख्तिताम हुआ है। ये इसकी बात कर रहे थे,
फॉलो थ्रू इतना अच्छा नहीं है, बल्ले को रोक लेते हैं जैसे। 52 ओवर्स के बाद 187 पर 6 केपी, लीड जो है 42 रन की हो गई है। आपने जिक्र किया था कि धानी के फैन हमसे नाराज नहीं होंगे, तो नाराज होने वाली इतनी बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उनकी बेहतरी के लिए बात कर रहे हैं। खेलनी चाहिए फर्स्ट क्लास के सारे मैचेस खेलने चाहिए, अपने फुल इंटेंशन से, फुल स्ट्रेंथ से खेलने चाहिए। क्रिकेट को सीखना चाहिए, शौक होना चाहिए आपको फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने का, जैसे कि आपको है। अपने काम के माहिर हैं आप, अगर गेम आप कवर नहीं भी कर रहे हैं, दूसरा गेम भी कवर करते हैं। फुल टॉस जैसे आसानी से खेल दिया है। आसिफ आफरीदी बहुत ही शानदार क्रिकेटर हैं, 4 रन हासिल किए अपने लिए। आसिफ अफरीदी पहले से अपना जहन बना चुके थे शॉट के लिए, लेकिन ये लो फुल टॉस जब आया तो अपने शॉट को चेक किया, रोका। अगर ये पूरा शॉट खेल देते तो शायद ये गेंद ग्राउंड से बाहर जाती, जितने ज़ोरदार अंदाज से खेलते हैं। देखिए राउंड विकेट बॉल की स्लो फुल टॉस था और अपने शॉट को रोका। यहाँ पर खुशकिस्मत रहे कि डीप में कोई फील्डर नहीं था, वरना आउट भी हो सकते थे। अच्छे स्ट्रॉन्ग लैड हैं आसिफ आफरीदी, बड़ी हिट आसानी से मारते हैं। इस बार कट कर दिया है, बहुत ही खूबसूरत बैटिंग। एक शॉट ऑन के जानिब, दूसरा थर्ड मैन की जानिब। 4 रन हासिल करेंगे यहाँ पे आसिफ आफरीदी, लीड बढ़ते हुए 50 रन की हो गई है अब। इस बार शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी, इसको कट किया। और ये वनडे क्रिकेट की बॉलिंग इसे हम कह सकते हैं, जब आपके पास थर्ड मैन में प्रोटेक्शन होती है या स्वीपर होता है। लेकिन ये 4 डे क्रिकेट की बॉलिंग नहीं है। और जिस तरह अपनी बॉलिंग से फ़र्क डाला था आसिफ अफरीदी ने, अब वो अपनी बैटिंग से भी जो लीड बढ़ा रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा की, उसमें इनकी ये इनिंग्स बहुत अहम साबित होगी। जहाँ इनकंसिस्टेंट लाइन और लेंथ यहाँ पे एक बार फिर खेलें, लेकिन इस बार प्रोटेक्शन मौजूद है। एहसान अली को थर्ड मैन पे भेज दिया है, 1 रन ही मिलेगा। तो कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। अगर हम इन 2 बॉलों ही की बात लें, इसी की एग्जांपल लेने हसनान की, एक बॉल एक स्लो बाउंसर, स्लोअर वन फुल टॉस जिसे मिड ऑन की तरफ आपने शॉट खाया, दूसरा वाइड ऑफ द ऑफ स्टंप शॉर्ट डिलीवरी जिसे कट खाया आपने। और ऐसी क्रिकेट में जहाँ पे आपको ज़रूरत है कि 100% आपने हर डिलीवरी पे आपने फोकस रखना है, हर डिलीवरी अच्छी होनी चाहिए। आप इतने इनकंसिस्टेंट रहेंगे तो कप्तान तो आपसे खुश नहीं रहेंगे, और ये खुद भी खुद से खुश नहीं होंगे। दोनों देखिए नौजवान है, अपने करियर के इब्तदाई दौर में है, एनर्जी से भरपूर है और तेज़ रफ्तार बॉलिंग हमें देखनी चाहिए दोनों एंड से, और बैट्समैन को पिछले कदमों पर धकेलना चाहिए इन दोनों को। ये बेहतर है। अगर आपने बाउंसर करना है तो ऐसा कीजिए जो कि हेलमेट के पास से गुजरे तेजी से। बहुत ही शानदार, ये बेहतर। इस तरीके से कंसिस्टेंट रहें, थोड़ा बेहतर बॉलिंग करें, सोच के बॉलिंग करें। जी हाँ, बहुत अच्छा गेंद था, तेज़ बाउंसर था, उसको खेलने के लिए गए। लेकिन वो जो फास्ट बॉलर्स का एग्रेशन हमें नौजवान बॉलर्स में चाहिए, वो दिखाई देना चाहिए। मुझे याद है जब वकार यूनुस का डेब्यू हुआ शारजा में, जब गए तो जिस तरह से वो भाग के आते थे, हेड बैंड उन्होंने पहना होता था, तो बैट्समैन खौफ में मुब्तला होते थे। और फिर जब वो सरे काउंटी से खेले तो वहाँ पर किसी अखबार ने लिखा कि इस बॉल के बाद मैं बताता हूँ। और वहाँ पर ये लिखा गया कि जब वकार यूनुस गेंद करते हैं तो मौत बैट्समैन से सिर्फ 22 गज दूर होती है। इतना टेरर, इतना अग्रेशन होना चाहिए फास्ट बॉलर का। जी हाँ, वो दौर ही कुछ और थे। पाकिस्तान क्रिकेट के सुनहरा बाब है वो 90s की क्रिकेट जो थी। शोएब अख्तर तक अगर हम बात करें तो वो अग्रेसिव बॉलर्स वहाँ तक हमें ज़्यादा देखने को मिले। ऑल्दो उसके बाद मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद आमिर जैसे बॉलर ज़रूर देखने को मिले, लेकिन जो एग्रेशन की आप बात कर रहे हैं, जो टेरर की आप बात कर रहे हैं, वो हमें उसके बाद शायद देखने को नहीं मिला। हसनैन बहुत तेज़ बॉल करते हैं, लेकिन थोड़े सिंपल क्रिकेटर लगते हैं, शरीफ क्रिकेटर लगते हैं। आपको एज अ फास्ट बॉलर जब आपके पास स्पेस हो तो थोड़ा टेरर डाल के रखना चाहिए। 53 ओवर का खेल अख्ताम पसीर हुआ, 196 पर 6 केपी।
जो लीड है 51 रन की हो गई है। यहाँ पे शायद फरहान थोड़ी सी गलती हो गई, थोड़ा चूक गए असद शफीक भी। बहुत लंबा स्पेल करवा दिया पहला, अगर छोटे छोटे स्पेल किया होता तो शायद यहाँ पे लंच से पहले एक और बर्स्ट हो सकता था मीर हमजा और सोहेल खान की जानिब से, क्योंकि पहला स्पेल इतना लंबा हो गया, 6-7 ओवर करवा दिया आपने पहले घंटे में, पूरी बॉलिंग करवा दी उनसे। क्योंकि बेहतर होता कि शायद अब लंच से पहले एक दो ओवर उनसे करवाए जाते, क्योंकि ऐसी बॉलिंग से तो विकेट मिलने वाली है नहीं। वेविड बॉलिंग की है, 4 रन आसानी से दे दिए हैं। इसके बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि मेरे पास तो अल्फाज नहीं है। जी हाँ, यहाँ मोहम्मद हसन का इम्तिहान ले रहे हैं धानी, और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जब 3 विकेटें यके बाद दीगरे गिरी तो मोहम्मद हारिस और मेहरान इब्राहिम दोनों नए बैट्समैन थे, तो अगर उस वक्त धानी और हसनैन से अटैक करवाया जाता, दोनों एंड से तेज़ रफ्तार बॉलिंग की। ये देखिए ऑफ स्टंप से बहुत बाहर गेंद और स्विंग हुई, खुर्रम मंजूर खुद को बचाते रहे और साद खान गेंद के पीछे थे, इस बाई के चौके को नहीं बचा पाए साद खान। अब मीर हमजा मौजूद हैं ग्राउंड में शाहनवाज धानी के साथ, उनको बताते हुए, उन्हें हिदायत देते हुए, लेकिन ये किसी की हिदायत नहीं सुनते आसिफ अफरीदी, ये अपनी मर्जी का खेल खेलते हैं और अक्सर कामयाब रहते हैं। जी हाँ, अगर आपको कॉन्फिडेंस हो अपने ऊपर तो कोई हर्ज नहीं है। 200 रन मुकम्मल हो गए हैं केपी के। साद खान फील्ड से बाहर जाते हुए कल से तकलीफ में है, थोड़ा हैमस्ट्रिंग का प्रॉब्लम है उनको। ओ बीट किया, ये बेहतर बॉलिंग है, लेकिन एक आधा बॉल ऐसा करने से फायदा नहीं होगा। आपको कंसिस्टेंटली बार बार ऐसी बॉलिंग करनी होगी फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, तभी आपको विकेट्स हासिल होंगे। जी हाँ, इस 200 रन्स के साथ पहला बैटिंग पॉइंट खैबर पख्तूनख्वा की टीम ने लिया और इस मैच का ये पहला बैटिंग पॉइंट है। सिंध की टीम कोई बैटिंग पॉइंट नहीं ले पाई थी। ये देखिए, ये कदरे बेहतर लेंथ थी, ऑफ स्टंप से बाहर खड़े खड़े इसको गाइड करना चाहते थे थर्ड मैन की जानिब, खतरनाक हो सकता था ये शॉट। जी हाँ, लंबे कद के हैं आसिफ आफरीदी, ज़्यादा कदमों का इस्तेमाल करते नहीं है, हैंड आई कोऑर्डिनेशन से खेलते हैं, बैट स्विंग अच्छा है और यही शायद वजह है कि ज़्यादा, जैसे पिछला बॉल हमने देखा दूर से ही खेल गए और रेंज भी ज़्यादा आ जाती है जब आप अपने बाजुओं को स्ट्रेच करते हैं तो दूर के बॉल को भी आप हिट मार सकते हैं। यहाँ पे बेहतर बॉलिंग करनी होगी, वरना ये खड़े रहेंगे तो तेज़ रन बना सकते हैं, इनमें ये काबिलियत मौजूद है। देखिए, एक बॉल आपने शॉट किया, अगला बॉल आपने लेग साइड पे मुंह में कर दिया, आसानी से सिंगल दे दिया। तो वो जो प्लान होता है, वो जो सेटअप होता है एक बैटर को स्ट्राइक पे रखने का, उनको 2 बॉलें 3 से 4 बॉलें बाहर करने का, फिर एक अंदर लाने का, वो एक सेटअप होता है, वो आपको आते आते आता है। जी हाँ, लाइन और लेंथ पर काबू रखना होगा। और अभी चंद लम्हे पहले हमने स्कोरर्स को देखा, अगर हम दोबारा उन्हें देख सकें, ये स्क्रीन के दाएं जानिब सैयद इमरान अली हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, इनकी उम्र अगरचे इतनी ज़्यादा नहीं है लेकिन बहुत ज़्यादा तजर्बा रखते हैं। और अली ये भी उन अफराद में शामिल हैं कि जो अपने काम के साथ बहुत मुखलिस हैं, बहुत ईमानदारी से काम करते हैं और बहुत ही शानदार स्कोरर। इस मरतबा जो बात आप कर रहे थे कि लाइन और लेंथ बरकरार नहीं रख पा रहे राइट हैंडर के लिए, वही बॉल की जो आसिफ अफरीदी के लिए अच्छी हो सकती थी। राइट और लेफ्ट का कॉम्बिनेशन भी यहाँ पर मुश्किलात बढ़ा रहा है शाहनवाज धानी की। जी, ये हम इन 3 बॉलों की एग्जांपल अगर ले लें, 3 बॉलें की हैं इन्होंने और तीनों डिफरेंट लाइन और लेंथ पे की हैं। ऐसे तो, क्योंकि ये क्वालिटी क्रिकेट है, यहाँ पे पाकिस्तान के बेस्ट खेल रहे हैं, बेस्ट के साथ कोई आसानी से विकेट नहीं मिलेगी आपको, आपको मेहनत करना होगी, आपको कंसिस्टेंट रहना होगा विकेट्स हासिल करने के लिए। इस बार बॉल नीचे रहा है, लकी रहे मेहरान के, थोड़ा वेवर्ड था बॉल, लाइन सही नहीं थी, अगर यही लाइन थोड़ा विकेट्स के अंदर होता तो बेहतर चांसेस थे। जी हाँ, अच्छा गेंद था, सरप्राइज हुए मेहरान इब्राहिम। और अभी तक एक ही स्विंग देखी है हमने शाहनवाज धानी की तरफ से, ये देखिए पढ़ने के बाद अंदर आया और ये और स्विंग हुआ, बैट से इनसाइड एज ज़रूर लगा लेकिन आगे गिर गया विकेट कीपर से।
54 ओवर्स का खेल मुकम्मल हो चुका है, 202 रन बना चुकी है और सबसे अहम बात यह है कि खैबर पख्तूनख्वा की जो बढ़तरी है वो 57 रन की हो गई है। एक और जो कमी सिंध की साइड में है कि कोई स्पेशलिस्ट स्पिनर नहीं मौजूद है इनकी टीम में। इब्रार ने बहुत शानदार बॉलिंग की पिछले मैच में। सोहेल खान को वापस ले हैं, ये अच्छा मूव हो सकता है लंच से पहले। और राइट भाई देखिए कुछ ना कुछ हुआ है, कुछ डिफरेंट हुआ है, इनसाइड एज हुआ है, शायद रन मिलेंगे। शाहनवाज धानी आते हुए फील्ड के एक ही रन बन सकेगा, तो ये बेहतर कप्तानी, इसी चीज का मुझे इंतजार था कि आप एक बर्स्ट तो बनता है लंच से पहले। जी अच्छा फैसला है, और अगर हम इन दोनों बल्लेबाजों का फुटवर्क देखें तो तकरीबन ना होने के बराबर है, अपनी बॉडी से दूर खेलते हैं, तो यहाँ कुछ हिकमत अमली मुरतब करनी होगी कप्तान असद शफीक को ये विकेट हासिल करने के लिए। ये देखिए अपने जिस्म से काफ़ी दूर खेले, इसको खेलना ऑफ साइड पर चाहते थे, इन साइड एज हुआ और ये गेंद फाइन लेग की जानिब गई। तो टेक्निकी एतबार से कुछ ज़्यादा बेहतर बल्लेबाजी नहीं हम देख रहे। एक बार फिर बड़ा शॉट मारना चाहते थे, लंबा स्पेल किया है सोहेल खान ने इससे पहले, शायद थोड़ी थकावट का भी शिकार हो, ऑल्दो बहुत स्ट्रॉन्ग बिल्ड के इंसान है सोहेल खान, लेकिन जब आप इतना लंबा स्पेल करते हैं तो डेफिनेटली थोड़ी थकावट तो आपको हो जाती है, क्योंकि ये कोकोबरा का जो बॉल है ये जोर मांगता है। ये ड्यूक या ऐसी जैसा बॉल नहीं है कि जिसे आप छोड़ेंगे और वो स्विंग हो जाएगा, इसको आपको जोर से करना होता है, जान लगती है इस बॉल पे। ऑल्दो ये पिच बहुत सपोर्टिव है बट स्टिल आपको जान मारनी पड़ती है। बड़ा शॉट मारना चाहते थे, टाइमिंग सही नहीं रही, लेकिन इतनी सही थी कि 2 रन हासिल कर लिया आसिफ आफरीदी ने। और अली जब आपने गेंदों का जिक्र छेड़ा है तो जो ड्यूक से जो बहुत मायानाज बॉलर थे पिछले चंद बरसों में, जैसे ही ये 2019-20 से ये नया फॉर्मेट आया तो बहुत से बॉलर जो हैं वो सीन से हटते गए हैं, जो फास्ट बॉलर से जिन्होंने माजी में बहुत विकेटें ली थी। लेकिन सुहेल खान को यहाँ दाद देनी होगी कि वो हर तरह की कंडीशन में, हर तरह की क्रिकेट में वो अपनी अफादियत रखते हैं, अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाते हैं। पिछले मैच में इन्होंने 500 विकेटों का संगे मील अबूर किया है। एटीट्यूड बहुत ज़रूरी है, एग्रेशन और एटीट्यूड फास्ट बॉलर में होना, बहुत सही एटीट्यूड है इनका। ये अच्छी क्रिकेट है, 1 रन हासिल किया। ऑल तो काफ़ी लोगों को मसले होते हैं ऐसे लोगों के एटीट्यूड से, क्योंकि बहुत अग्रेसिव भी हैं। कभी कल जैसे हमने जिक्र किया, हम यहाँ पे मौजूद थे और इनको विकेट हासिल नहीं हुई थी और वो चीखते हुए बाहर आए कि मुझे विकेट चाहिए। और ऐसे क्रिकेटर, ऐसे कैरेक्टर चाहिए आपको क्रिकेट में। कभी ऐसा नहीं होगा कि हम उनको हाफ हार्टेड क्रिकेट खेलते हुए देखेंगे। नेशनल जियोग्राफिक लग रहा है। और सुबह हमारे साथ भी थोड़े से एग्रेसिव हो गए थे सुहेल खान, लेकिन हमने बिल्कुल भी बुरा नहीं मनाया, उनके मिजाज का हिस्सा है ये। ओ बड़ा शॉट मारना चाहते थे लेकिन बीट हो गए विकेट कीपर भी, डिसअपॉइंटिंग। एक रन जहां जरूरी हो वहां पे ऐसे लैप्सेस नहीं होने चाहिए। हसन के लिए ये मैच कतन भी अच्छा नहीं रहा, बहुत अच्छे विकेट कीपर हैं, लेकिन इस मैच में वो जो गेंद का बाउंस है उससे अभी तक एडजस्ट नहीं कर पाए, अपनी पोजीशन बरकरार नहीं रख पा रहे कि उन्हें विकेटों के आगे करीब आना चाहिए। अभी ये भी देखिए, यही बात कर रहे हैं कि ये बॉल आगे गिर गया उनसे, और जाहिर है कि ये जो तमाम रन्स हैं 22 के रन्स वो विकेट कीपर के अकाउंट में जाते हैं, तो कोई भी कीपर नहीं चाहेगा कि इस तरह से वो 22 के रन्स दे। लेट स्विंग हुआ और इसको रोकने में थोड़ा सा देर कर दी हसन ने। यहाँ थोड़ा मुश्किल टेक था ये, क्योंकि इनसाइड एज भी हुआ, लो भी रहा, जब सामने बाउंस होता है तो मुश्किल हो जाता है विकेट कीपर के लिए। इस बार फिर मेहरान जो है वो कदमों का इस्तेमाल करके आगे आगे पिच ऑफ द बॉल पे पहुंचना चाह रहे हैं, लेकिन सोहेल खान बहुत चालाक बॉलर हैं, ज़्यादा देर ऐसा करने नहीं देंगे इनको। 55 ओवर का इख्तिताम हुआ 210 पर 6। स्टेट बैंक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का ये खूबसूरत मंजर।
कराची के एक बहुत ही मारूफ और मशहूर इलाके नाज़िमाबाद में ये ग्राउंड मौजूद है और इसके बिल्कुल करीब ही असगर अली शाह क्रिकेट स्टेडियम है, जो भी तारीखी अहमियत का स्टेडियम है। वही लाइन है शाहनवाज दानी की, पढ़ने के बाद गेंद बाहर जा रही है और ये कोई मुश्किल में मुब्तला नहीं कर रही आसिफ अफरीदी को। और इस ओवर में मोहतात रहेंगे आसिफ अफरीदी, क्योंकि मुमकिना तौर पर ये खाने के वक्फे से पहले आखिरी ओवर हो। ये वो नाज़िमाबाद का इलाका और ये वो पहाड़ियाँ हैं जिसका जिक्र अली सलमान करते हैं। और सुबह जब मैं और अहमद सईद आ रहे थे तो अहमद बताते हैं कि वो शादाब कबीर जो फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर है, इन पहाड़ियों पर ट्रेनिंग किया करते थे और सुबह बहुत अच्छा नाश्ता भी अहमद सईद ने करवाया है इसी इलाके में। एक बहुत ही ख़ास उनका जगह है जहाँ पर वो अक्सर जाते हैं, तो मुझे भी वहाँ से उन्होंने वो नाश्ता करवाया। अच्छा बाउंसर था ये, तभी लेट हो गए आप। लेकिन बहुत अच्छी हॉस्पिटैलिटी रही है यहाँ पे सबकी। अली सलमान का आपने जिक्र किया, अहमद सईद का जिक्र किया, बहुत ही अच्छा वक्त गुजरा है इनके साथ। क्रिकेट अच्छी देखने को मिल रही है, क्योंकि हमें तो क्रिकेट अच्छी जब तक नहीं मिलेगी तो कुछ एनर्जी नहीं आती है। इस बार शॉर्ट डिलीवरी थी जिसे आराम से निगोशिएट करके खेल दिया, इसको लेके जाने पे 1 रन हासिल किया आसिफ अफरीदी ने। जी हाँ, बहुत देखभाल के ये शॉट खेला आसिफ अफरीदी ने, क्योंकि उनकी निगाहें भी घड़ी पर हैं कि ये मुमकिन तौर पर आखिरी ओवर हो लंच ब्रेक से पहले। और अली जब शानदार मौसम होगा, शानदार मेज़बान होंगे और क्रिकेट बेहतरीन हो रही होगी तो कौन इसको एंजॉय नहीं करेगा। तो कराची में जब से हम मौजूद हैं तो ऑन दी फील्ड और ऑफ दी फील्ड बहुत ही अच्छा वक्त गुजरा है हमारा इस शहर में। हमेशा से जब जब आप कराची आएंगे आपको अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी। नेशनल स्टेडियम हो, स्टेट बैंक हो, यूबीएल हो, नेशनल बैंक का ग्राउंड हो, जहाँ पे ज़्यादा फर्स्ट क्लास खेली जाती है, सभी बहुत सपोर्टिव पिचेस हैं, अच्छी क्रिकेट देखने को मिलती है। और यही वजह है शायद हमें जब से यहाँ पे आए रिजल्ट्स नज़र आ रहे हैं। पहले जो 5 राउंड्स खेले गए वहाँ पे हमें सिर्फ एक रिजल्ट देखने को मिला, लेकिन जब से यहाँ पे आए हैं पहले राउंड में सारे मैचेस के रिजल्ट आए और यहाँ पे भी लगता है कि हमें इस मैच का रिजल्ट भी देखने को डेफिनेटली मिलेगा। बिल्कुल, अगर आप मुआवजना करें पंजाब की विकटों का और कराची की विकटों का तो बहुत ज़्यादा फ़र्क है, मौसम का बहुत फ़र्क है। इस मरतबा ज़ोरदार अंदाज से खेले लेकिन टाइमिंग ना होने के बराबर थी, कोई रन यहाँ पर नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर आप यही दिसंबर की आज पहली तारीख है, तो अगर आप दिसंबर का पंजाब में देखें और यहाँ मुआवजना करें तो ज़मीन आसमान का फ़र्क दिखाई देता है। और यही वजह है कि फिर जो क्रिकेट है उसमें भी बहुत ज़्यादा फ़र्क नज़र आता है इन दोनों इलाकों में। लगता है दिसंबर सर्दी को मिस कर रहे हैं आप लाहौर की, क्योंकि आजकल वहाँ पे शानदार मौसम होगा क्रिकेट खेलने के लिए ना सही, लेकिन वैसे ओवरऑल मौसम बहुत शानदार है। फॉग के अंदर शानदार मंजर होता है लाहौर का। ओवर का इख्तिताम हो जाएगा और देखना होगा कि अंपायर क्या डिसाइड करते हैं कि क्या ये लंच टाइम है। जी हाँ, शायद अंपायर बेल्स को उतारते हुए और ये लंच हो जाएगा यहाँ पे दूसरे दिन। प्लेयर्स आहिस्ता आहिस्ता टहलते हुए वापस की जानिब, क्योंकि 12 बजने में अभी एक आधा मिनट ही है शायद। जी हाँ, लेकिन उन्होंने सोचा कि अगले ओवर के लिए इतना वक्त नहीं है, तो लंच का अनाउंस किया दोनों अंपायर्स ने। 211 रन बनाए, केपी ने 6 विकेट गवा के। ये अच्छा सेशन रहा है सिंध के लिए, लेकिन शायद थोड़ा अनलकी रहेंगे, रन्स थोड़े ज़्यादा दे दिए। जी हाँ, ये जो शराकत हुई यहाँ पर मेहरान इब्राहिम और हारिस के दरमियान वो काफ़ी अहम साबित रही। और अब जैसे आसिफ अफरीदी क्रीज पर आए हैं तो उन्होंने रन्स करने शुरू कर दिए। 42 रन की ये पार्टनरशिप और मजमूई तौर पर 24 ओवर हुए, 87 रन्स बने, 4 विकेटें गिरी। तो सब कुछ इस पहले सेशन में हमने देखा है। अली 3.63 का रन रेट भी है, विकेटें भी गिरी, रन्स भी बने, अच्छी बॉलिंग, अच्छी बैटिंग, फील्डिंग, सब कुछ हमने इस पहले सेशन में देखा है। जी हाँ, बैटिंग पे अगर नजर डालें खैबर पख्तूनख्वा की, साहिबजादा फरहान कल आउट होने वाले प्लेयर थे। मीर हमजा ने उनकी विकेट हासिल की, 4 रन बनाए। मुसद्दिक ने अच्छी शानदार इनिंग खेली, 75 रन की। मीर हमजा ने उनकी विकेट हासिल की। नबी गुल को आउट किया, सोहेल खान ने 6 रन बना सके। इफ्तिखार अहमद आज आउट होने वाले पहले खिलाड़ी थे, 40 रन बनाए। सोहेल खान
एक और विकेट हासिल की आदिल अमीन की, मोहम्मद हसनैन ने एक विकेट हासिल की, मोहम्मद हारिस की 211 रन बना सके केपी की टीम 6 विकेट्स गवा के। जी ये बहुत अहम रोल होने वाला है बासित अली का यहाँ पे, क्योंकि हसनैन और शाहनवाज धानी को इससे बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है और थोड़ा सख्ती भी करनी होगी इनको, क्योंकि हमने देखा है बहुत इनकंसिस्टेंट रहे हैं दोनों अपनी लाइन और लेंथ में, और ऐसी पिच पे आपको कंसिस्टेंट लाइन और लेंथ पे बॉलिंग करनी होगी, और शायद यही बात बासित अली समझाते हुए दोनों यंगस्टर्स को। ये जिस तरीके से विकेट्स हासिल की, इफ्तिखार अहमद आउट होने वाले पहले खिलाड़ी थे, उसके बाद आउट हुए थे आदिल अमीन, बहुत ही शानदार डिलीवरी सोहेल खान की जानिब से। मीर रमजान ने तो कमाल किया आज बॉलिंग
Hello and a very warm welcome back to the State Bank Sports Complex. An interesting game of cricket, and this is how things look in the afternoon session on the second day of this contest. Khyber Pakhtunkhwa leading by 66 runs with still 4 wickets in hand. 145 what Sindh made in the first innings. Wonderful knock by Iftikhar and Musaddiq really gave the upper hand to Khyber Pakhtunkhwa. They lost some of that initiative in the morning session where they lost 4 wickets. Mir Hamza and Sohail Khan with the wickets. Another all-important afternoon session coming our way, because this session is very, very crucial for both teams in the context of this game. Sindh will be looking to wrap things up quickly, and then when they come to bat second time around, don't make the mistakes that they did in the first innings. Players have taken to the field and settled into his seat here in the comm box after a very good lunch. Former Pakistan under-19 skipper Amr Saeed is joining me. Good afternoon, Amr. Good afternoon, and thank you very much. Yes, the lunch was very nice. Of both the teams, which team would have had a comfortable lunch, Amr? Which camp would you be, rather, at this stage? Well, of course, being a Karachiite, my inclination is towards Sindh automatically. But yes, I'm all for good cricket. Whoever plays good cricket should win a cricket match. A handy partnership of 42 of just 45 deliveries between Mehran and Asif Afridi. Asif being the more belligerent, as you would expect him to be. 26 of just 24 deliveries. This is coming off the back of another short little partnership of 36 runs for the 6th wicket. After that flurry of wickets in the first 20 minutes of play. All in readiness. Plays the call. Sohail Khan to Afridi. Big swing and a miss. Sohail Khan has been very unlucky. He's beaten the bat on many occasions. Asif Afridi certainly had something different for lunch. I think, Faisal. Probably he did. Must be pretty spiced up for this little session. There's a deep point there, but the way the ball is swinging and the way Asif Afridi is swinging, there's all likelihood if you get an edge, it will fly over the slips. A fly slip, we've seen it in the previous game on this surface. Off the edge, third man won't get there. Through the gap, handy runs for KP. Well, the story of the day for Sohail. Look at that one. Hung his bat, but luckily it went in the gap. Went for 4 in the vacant third man area. That has been the story for Sohail really throughout the day. Even though he has picked up 2 wickets, but I can tell you that he has bowled much better than that. Slip cordon has been reinforced. Third slip has been brought in. Almost squared him up. Good delivery from Sohail Khan. Asif is very clever. He's kept the good balls out. He's seen the ball in his own half. He hasn't been shy to go for it. Can be a dangerous player in a low-scoring game. His 30 runs of 27 deliveries could really tilt the balance in favor of KP. And the threat will be there so long as he's in the middle. This is a strong blow down the ground. Cleared his front leg. His intentions are very clear. In the slot, it has to go. I don't know what the mid-on and mid-off are doing inside the circle.
Everyone knows what Asif Afridi is going to do. And as you mentioned before, if he scores those quick runs in a short period, it could change the whole complexion of the game. If they get to that lead of 100 and 120, it will be a different ball game when Sindh come into bat again. That mid-on has been sent back now. This time straying down the leg side, leaking runs. Sohail Khan after lunch. Back-to-back boundaries for Asif Afridi. Looked like a slow delivery, which he lost completely. No, it wasn't a slow delivery, but just a fine tickle there from Afridi. Helped himself to another boundary. It's bad bowling, especially after a break, when the batsmen are, trying to warm up once again. He should be on the mark. That hasn't been the case so far for Sohail. Change of angle now. Right arm over the wicket. A better angle and in the gap again. It went aerial, where third slip would have been. But another boundary, and that's the right line and length from Sohail Khan, but no luck and no reward. 3 boundaries of the first over after lunch, 227 for 6. Well, I'm starting to feel for Sohail. He's created those chances, he's bowled well. Usually he's been on the spot, he's bowled some good lines. But as you said, no luck. And with Asif Afridi on the crease, if those chances don't go to hand, it can be very costly for your team. Just 2 balls ago, there were 3 slips. Why would you take a slip out on the third ball? As you can see, the first boundary, you see 3 slips in the background, but after that, the slip was taken away. Fielder was there at deep point at all times. Not required. You cannot protect a bad ball. That fielder was wasted and the chance went a begging. In the air, and that point fielder is deep. Sindh has got a hard task to balance the act where they want the wickets, but they don't want to leak the runs. A few have went aerial where the regulation fielders would have been. Nothing to hand. Why would you put a deep point for a batsman? A regular batsman who would most probably be playing regular shots. Yes, for Afridi I can understand. You have those deep fielders, because no matter where you place those fielders, he's going to go for his shots, and you need fielders in those areas, but not for Mehran. To Asif Afridi's credit, he's kept the good balls out. He only goes for the big guns when he sees the ball in his half, kind of in the slot for him. It's a calculated risk, and when the field is set back, he's prepared to take a single, and the partnership is growing. 60 runs. Mehran has played his part as well, 22. But Afridi has really put Sindh bowlers, the sword and the captain, under immense pressure. That fielder is on the heels. Dhani could concede overthrows, not on that occasion. Sloppy from Sindh after lunch. Poor cricket, I would say. The Dhani at point. You know what you need to do. You need to keep Asif Afridi off strike at the moment. But it was not to be. Easy single given. Game can drift away very, very quickly from you. Asad Shafiq with the stress on his face. They need to see the back of Afridi.
Well, that is what happens when you have a pinch hitting sort of a batsman on the crease. When we started after lunch, the lead was 66, and in just a matter of a couple of overs, it's gone up to 85. Scoring rate, it's very difficult to check the scoring rate if Asif Afridi gets going. All too easy. Shafiq would have to come back with better plans. This wicket is not easy to bat on, as we saw in the morning. Put the right ball in the right areas for long enough. Allow Asif Afridi to swing. You can just keep him on one end for long enough. He's bound to go for his strokes. He's prepared to pick singles, and there's plenty of gaps for him. It feels like when he's on strike, Sindh are not looking to get him out. And that gives him plenty of confidence. What they haven't done well is they haven't kept Mehran on strike for long enough as well to frustrate Afridi. 58 gone to 31 for 6. Dahani so far has been disappointing in this game. I can understand the lack of experience, and certainly once he has a few first-class games under his belt, the more the better. He will learn the finer aspects, finer points of the game. Runs, 4 of them. Another misdirected short pitch delivery. Asif Afridi did get something on it. Umpire Waleed Yaqub signaling the boundary. They just cannot stop the flow of runs after lunch. It's easy runs for Asif Afridi. If you don't bowl him tighter lines or the right lines, he will hit you for boundaries, for sure. Like I always put you on the spot, Ahmed. You've been a captain for quite some time at the very highest level. They've got 3 slips now and a gully for Afridi. A play like this, how do you keep him quiet, and what's the best way to go about dismissing him? Well, first thing is first, you've got to keep that line right. You cannot bowl offline, you cannot give him freebies to score. And then you've got to have fielders in the right places. Need catching positions. You need to put fielders for his fall shot. Again, playing a miss. Sohail Khan wouldn't mind that. That's the angle he wants to create, and that's the shot he wants Afridi to play. If he does it consistently, sooner or later he's going to find the edge. But my worry is still, if you get an edge to this, he's going to fly off. It's not going to land in the lap of a slip fielder. That is why it is important to pitch it up to him. Short of a length, when he goes after that ball will get an edge and fly over slips. But if he's driving, if you make him drive, those are the edges that will carry through to the slips. It's a risk and reward. You got to be a yard fuller to induce that drive instead of that big lofted hoik. Here you go. Looks like 4 slips now. Pretty evenly staggered out. Umair bin Yusuf is there. Hassan for Manzoor. Faraz, it looks like it. It's a fielder at deep point as well.
Full pitch delivery. Negotiated well by Asif Afridi. A little awkward tumble there for Hasnan. He landed on his knee. Very frustrating for Sindh, but KP will be loving it. At one stage, 133 for 5. They looked like getting bowled out for less than 200. Now they're leading by 91. 4 wickets still in hand. Sindh has to keep working because they know that if they get 1 wicket here, they can wrap this up very quickly. Top edge. Taken by Dhani. Excellent catch. And that's the breakthrough. Mehran Mumtaz couldn't control the pull shot. And Sohail Khan deserved nothing less than that. That's good thinking by Sohail Khan. I think he saw him standing outside that crease, and that was a good option to bounce him. Tried to pull, but it was above his shoulder height. It's not very easy to pull it, and got the top edge. Good catch by Dhani. It's 23 Mehran Ibrahim, 236 for 7. I will also have to mention here that if it's good cricket by Sindh, by Sohail Khan, good bowling. It's also quite most probably again inexperience showing. Mehran didn't have to do that when he's playing with Asif Afridi. Why do you have to play all those shots? You just have to take the single and leave it to Asif Afridi. Spot on, Ahmed. Because as long as Afridi is there, Sindh is feeling the pressure. And you don't allow him a way back in by giving your wicket away. Afridi is playing in an unorthodox manner, probably suited to this wicket. He's going with an approach of nothing to lose. You being a top order batter, just be at the non-striker and enjoy. Interesting, Asif Afridi declining that single, which Sindh is pretty happy to give it to him. Arshad Iqbal is the new man in. Basit Ali, coach once again. And 1 run shy of that well played 50 by Asif, I would have to say, in the context of this game. He will take that single now. Bit sloppy from Hassan. That is very, very poor from wicketkeeper Hassan. He was just not concentrating, not on the button. Hassan had to come a long, long way. Did we miss the leg by signal? It looked like coming off the pad of Asif Afridi. He got 2 runs. It has been added to the total. No applause, no raise of the bat just yet. There you go, look at Hassan. This is very sloppy. You're not jogging in a park, young man. Got to get to the ball and get the new man back on strike. This cannot be a very bad tactic as well. Ball wide at Afridi and frustrate him, but for that you need to have protection just in case if he throws his bat at it. But Sindh has got a foothold back in the game via that little bit of inexperience by Mehran. He will take that single now and he will get to his 50. Arshad is looking for the second, but it won't be there. What a wonderful knock. Asif Afridi, a little gem of a knock. 42 deliveries it took. 7 fours and a 6. And in the context of the game, a very, very valuable contribution. What a man to have in your team. Asif Afridi.
whenever the captain looks towards him for a performance. That's his 7th 50 and 4th in this year's Quaid Azam trophy. Excellent, superb knock. He also has a 50 of 30 deliveries earlier in this season. He only knows one way to bat, and that is to throw his bat at everything, score quickly. But what a contribution. Hamza will get 2 deliveries at Arshad Iqbal. Jaffa. Too good. Wasted on a number 9. As you mentioned, Shah Faisal, with the fall of wicket, these bowlers can wrap it up very quickly now, provided bowl in the right areas. .239 for 7. As we were talking about Dahani, very interesting discussion we had. Here's the Khyber Pakhtunkhwa batting card. 75 at the top of the order for Musaddiq Ahmed, 40 by captain Iftikhar Ahmed, and 23 by Mehran Ibrahim, who got out in the previous over. Mohammad Haris got 26, 50 not out. Asif Afridi, man. And a miss again. Look at the carry. You're going to see more and more of that as the game progresses. The moisture is drying out. Excessive bounce off hasn't shown up really, to be honest. Come back to it after this ball. Top edge. Hassan Ali has grabbed a superb catch, an absolute stunner. He was back paddling, and this was Asif Afridi. A lot mattered on this catch, and Hassan, for his dear life, he scrambled and dived in the end to dismiss Asif Afridi. Look at that short ball, took his eyes off it, got the shoulder of the bat, I think, and it is Mohammad Taha dived to his left and took a very good catch at gully. Youngster. In fact, it's Umair bin Yusuf, beg your pardon. Good knock from Afridi, gone for 50, 239 for 8. New batter in, Irfanullah Shah. Star bowler for KPK, 21 matches, 89 runs, 14 is his best score. And with that average, I would like to think that he wouldn't be taking too long before he can put on the spikes to bowl again. Sohail Khan with his tail up. Look at that. He had no intention to cover his stumps. Put bat to ball. Creamed away. Handy runs from Irfanullah Shah. Took Sohail Khan completely by surprise. Well, definitely this shot be in contention for shot of the day. No, it didn't look very pretty, but it was along the carpet, in the gap, and timed well. What else do you want? Response from Sohail Khan would not be that nice, I can tell you that. Over the top of the stumps.
Talking about Sohail Khan, finally he's getting the rewards to show for his hard work. Look at this, excellent catch. Umar bin Yusuf had to cover some ground before he could dive. That was important as well because Asif Afridi, another half an hour of him would have put this game to bed for Sindh. But now with less than 100 runs lead, 98, Sindh can still have a sniff. Someone is sunbathing. Another solid blow down the ground, another boundary that will take the lead past the 100-run mark. Irfanullah has made sure that his intentions are very, very clear, and he's going to put bat to ball. Look at that, another half volley, bat thrown at it, went in the gap straight. I think Irfanullah Shah has come in with the determination that he will better that 14 runs. That is best score before this match. Play and a miss. Sohail Khan, despite the wicket, went for 2 boundaries in the over. The last ball, you can see all the 3 stumps and some. Clearing his front leg, never moving his back leg in front of the stumps. 247 for 8. Well, that is the sunbathing I was talking about. A very good point you made, Shah Faisal, about Tahani when we were discussing him off air. That when you play so much international cricket and you're on tours as a youngster, so many people give you so many advices, and there's a bit of confusion in your mind, whom to listen to and whom to ignore. But that is what first class cricket is all about. When you play first class cricket, you have a good idea of your own game, and then when you get advices, you also learn to pick the right ones for you. Swing and a miss. Yeah, that is a terrific point, that the flow of information is enormous when you're traveling with the national team and working with people that you never worked before, and then being a youngster, still learning about your craft, your mind can easily get muddled as to take which information in and which one to leave out, and then you have your own strengths that you want to back on, but then that information confuses you and you may end up in no man's land in terms of that. But like you said, if you play first class cricket, you know your game inside out, that flow of information will be exactly the same, but you're in a better position to know which one to keep and which one to let go. As we watch Hamza's wickets, Sabzada Farhan Khar was this morning, 2 pitch of the deliveries. This one was a soft dismissal, but it was well planned out. Credit still goes to Hamza. 3 for 51. He'd be eyeing a fifer because one can bring 2 very quickly the way the KP tail is batting. Testing and frustrating times for the fielding side when 2 tail-enders start to middle the ball. You want to see that, especially on a wicket, on a pitch that is doing quite a bit. To see them back in the pavilion as soon as possible. Swatted away for a single.
Over the years, we've seen many irritating tail end partnerships. These tail enders, they have in them to frustrate even the best at times. As is always said, better get rid of them sooner rather than later, because they're not your usual batters that you can plan against. They play in a funny or way of their own. It can be very irritating. And especially with so much white ball cricket being played, tail-enders need to contribute. Just like that, in the slot and out of the park. Look at that. Hamza is bowling that length that would challenge any top order batter, but Irfan is having none of that. 254 for 8. Let's look at that. I was about to mention that there are no Courtney Walshes anymore, or the McGraws, and Irfan immediately showed that he's definitely not going to be falling in that category. He's dished the same treatment to Hamza, which he did himself. He scored quick fire 15 himself. Now Irfan is batting on 14 of just 5 deliveries. One around the chin is very amusing, it looked like, for Sohail Khan. Arshad Iqbal is not smiling. Probably he's telling him that wait till you come to bat, I'll let you know. But Sohail Khan found something very amusing about it. Just burst out into laughter. Still laughing about it. Tailenders, of course, don't like to be bounced. They don't like the chin music. And they don't like to cover the stumps either. Single to get him off strike. In a low scoring game, even this contribution, 16 of 12 deliveries. Look at that bouncer, and look at Sohail Khan, if you could see. He's a character, no doubt about it. Very nice guy as well. He was nearly apologetic when he was going back to his mark. The wave of a hand saying sorry to the tail ender, but that instinct trying to take wickets got the better of him. Keeper Hassan has really struggled at times. Got himself into very awkward position taking the last ball in. His body was not behind the line of the ball. Look at that. Just a little bit of swing. All at sea. As a wicket keeper, you don't want to see this replay. Yes, definitely. And I would like to see now someone like Asnan to come into bowl and, you know, finish things off. That pace, I'm sure there wouldn't be much chance for these batsmen. Swing and a miss over the top of the head of the gully fielder. Will race away to the boundary. Little cameo for Irfan is really hurting Sindh. Sees the ball in his half, and there's no half measures. He just gave it an almighty swipe. Hit the middle of the bat or edge of the bat. He take the boundary. A quick incoming Yorker is what he needs. The 20 runs on this partnership. 133 for 5. Singh looking to wrap it up quickly as this one goes past the edge and didn't hit the stump as well. He's not laughing anymore. Frustrating. That irritation that I was talking about is started to creep in. Yes, those length deliveries which you know, move off the wicket, they're too good for these all-round for these tail-enders. Here's a happy camp.
KPK dressing room. All the players are relaxed and happy about their performance, of course, and why not with that 114 run lead. This could be an important game as well. This is in the air. Back paddling is the fielder. It will land safely. Zaha, I think, gets to the ball, but a run to Irfanullah. Finish off the over. 260 for 8. खैबर पख्तूनख्वा जो लीड है 115 रन की हो गई है। मीर हमजा अपनी बॉलिंग जारी रखेंगे। क्या ही शानदार ये लिटिल कैमियो है इरफानुल्लाह शाह के जानिब से। 19 रन बना रही हैं। 10 बॉलों का उन्होंने अब सामना किया है। ये अच्छी अप्रोच है क्योंकि विकेट तो शायद कभी भी गवा देंगे, तो उससे पहले जितने रन हो जाएं वो बेहतर है। बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने अली, क्योंकि ये टेल एंडर्स हैं और इनकी इंटेंशन यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा रन्स इकट्ठे कर लिए जाएं। और आप देख सकते हैं कि विकेट कीपर हारिस भी बिल्कुल तैयार खड़े हैं। ये भी जानती हैं कि किसी वक्त भी ये दोनों आउट हो सकते हैं या कप्तान इनिंग्स डिक्लेयर कर दें। इसके लिए हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। एक बार फिर बड़ा शॉट मारना चाहते थे। उनका इरादा क्लियर है कि जो भी उनके जोन में बॉल आएगा वो इतनी ज़ोर से बल्ला घुमाएंगे। अगर मिडल नहीं होगा तो थिक आउटसाइड है जिसे 4 रन के लिए ले जाएगा। और अभी तक कामयाब रहे इस अप्रोच में। अभी हमने देखा कि तैयारी कर रहे थे केपी के फील्डर्स भी, विकेट कीपर को भी हमने देखा। तो क्या उनके जहन में होगा कि 9 विकेट्स पे डिक्लेयर कर दिया जाए और वो जो एक बोनस पॉइंट है उससे महरूम किया जाए सिंध की टीम को। बिल्कुल, क्योंकि अभी 300 रन तक जाना तो यहाँ पर मुश्किल दिखाई दे रहा है खैबर पख्तूनख्वा के लिए। तो अगर 250 से 300 के अंदर आउट होते हैं केपी की टीम तो फिर एक और बॉलिंग पॉइंट मिलेगा सिंध की टीम को, तो वो चाहेंगे कि वो ना दिया जाए। एक बार फिर बड़ा शॉट मारा है। फील्डर वहां मौजूद है लेकिन एक धप्पा खाने के बाद हसनैन के पास बॉल गया। तो ये अच्छी अप्रोच है इरफानुल्लाह शाह की जानिब से। 261 रन पर 8। जहां भी हमने पॉइंट्स का जिक्र किया तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक पॉइंट यहाँ से आपने बचाना है, देन लेना है। ये सारी कैलकुलेशन आई एम श्योर मैनेजमेंट के पास ये सब चीज़ लिखी हुई होगी, टीम मैनेजमेंट के पास, क्योंकि जितना टफ कंपटीशन अब होता जा रहा है इस कंपटीशन में। ये अच्छा बाउंसर है, हवा में बॉल रखे दूर फील्डर से 4 रन के लिए चली जाएगी। तो आहिस्ता आहिस्ता इरफानुल्लाह शाह को देखते हुए अरशद इकबाल भी अपने हाथ चलाना शुरू हो गए हैं। बिल्कुल लुत्फ ले रहे हैं ये दोनों अपनी बैटिंग से। किसी तरह का कोई दबाव नहीं है और जो बॉलर्स हैं उनको फ्रस्ट्रेट कर रहे हैं। देखिए बाउंसर किया था और इसको बहुत ही अजीब अंदाज से खेला। फील्डर वहाँ पर मौजूद नहीं थे और ये अपने पॉइंट्स भी लेने हैं और अली जो दूसरी टीम्स के पॉइंट्स रोकने भी हैं। तो इसलिए जो हारिस को हमने देखा, अगर हम दोबारा देख सकें तो इसका मतलब यही है कि इस विकेट पर जितने भी रन्स कर ले केपी उसके बाद ये डिक्लेयर की तरफ जाएंगे। जी हाँ, क्योंकि मुकाबला बहुत सख्त है। 2 टीमों ने क्वालिफाई करना फाइनल के लिए। देखिए पहले छोड़ने गए, फिर शायद देखा कि लेंथ करीब है। एक बार फिर खेले हवा में और एक आसान सा कैच था एहसान अली के लिए। शायद अभी से ही अपनी बैटिंग के बारे में सोचना शुरू हो गए, कंसंट्रेट नहीं कर पाए। शायद उनके इशारों से लगता है कि नजर ही नहीं आया उन्हें बॉल। ये देखिए स्ट्रेट फॉरवर्ड चांस था। इससे आसान कैच बहुत कम देखने को मिलते हैं आपको। ग्रैब करने पड़ेंगे ऐसे हर चांस। यूँ लगता है कि एहसान अली भी महजूज हो रहे हैं इनकी बैटिंग से, जो टेल एंडर्स हैं खैबर पख्तूनख्वा की, और उनका ध्यान शायद नहीं था कि गेंद उनकी तरफ भी आ सकता है। लेकिन ऐसे कैचेस अली पकड़ने चाहिए, कोई इस पे जवाज़ नहीं है इस कैच को छोड़ने का।
जहाँ ये मुकाबला बहुत ही दिलचस्प होता चला जा रहा है। एक और प्ले ना मिस जिसे बोलते हैं, यहाँ पे मीर हमजा को दाद देनी होगी। जिस डिसिप्लिन से, जिस कंट्रोल से उन्होंने बॉलिंग की, इस बारे में बात जारी रखेंगे। 64 ओवर का खेल मुकम्मल हुआ, 265 पर 8 केपी। डिसअपॉइंटेड होंगे एहसान अली, क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड चांस है। ये देखिए, ओ ये तो इससे बाद वाला बॉल है। इससे पहले वाला अगर हम देख सकें, जो कैच ड्रॉप हुआ एहसान अली से कवर में, ध्यान नहीं दे रहे थे। तो मसरूर अहमद जो कि फील्डिंग कोच हैं, ज़्यादा खुश नहीं होंगे इस एफर्ट से। ये देखिए बिल्कुल आसान सा, और शायद वो ये तवक्को कर रहे थे कि गेंद बिल्कुल उनके पास आई, डिप हुआ, नीचे गिरा ये गेंद। और इस मरतबा विकेट कीपर के सर के ऊपर से इरफानुल्लाह शाह उन जगहों पर बाउंड्रीज हासिल कर रहे हैं जहां पर बैट्समैन तसव्वुर नहीं कर सकते। और ये गेंद विकेटों को टकरा कर विकेट कीपर के सर के ऊपर से गई है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि हमें बॉल तो डेफिनेटली ऊपर से गया है, लेकिन क्या ये हेड विकेट हुए हैं, अभी कुछ देखना बाकी होगा। नहीं, बोल्ड हो गए हैं। हमें लगा कि बल्ले को लगा है, लेकिन यहाँ पे बोल्ड कर दिया और 5 विकेट्स हासिल किए हैं यहाँ पे सोहेल खान ने। बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस रही। आखिरी आउट होने वाले खिलाड़ी इरफानुल्लाह शाह 20 रन बनाए, और वही बात जिसका हम अभी जिक्र कर रहे थे कि शायद केपी ने विकेट अपनी जो इनिंग है वो डिक्लेयर करने का फैसला किया है। वो जो एक एक्स्ट्रा पॉइंट जो हासिल कर सकती थी सिंध की साइड, उससे इनको रोका गया है। तो एक अच्छी मूव हो सकती है, लेकिन दाद देनी होगी सोहेल खान को। लीड कर रहे हैं अपनी टीम को। उन्होंने ये बताया है कि क्यों ज़रूरी है फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलना, क्योंकि विकेट्स लेना आता है आपको। और उन्होंने दिखाया यहाँ पे एक मुश्किल हालात थे जब केपी की साइड बहुत फॉर्मेडेबल थी, वहां पे आके 5 विकेट हासिल किए। शानदार परफॉर्मेंस रही। जितनी भी तारीफ की जाए सुहेल खान की वो कम है। 37वीं मरतबा उन्होंने 5 विकेटों का कारनामा सर अंजाम दिया है इनिंग्स में। बहुत कम बॉलर्स हैं मौजूदा क्रिकेट में कि जिन्होंने 5 विकेटें हासिल की हैं। और ये बैटिंग की कहानी है खैबर पख्तूनख्वा की। 265 रन पर 9 विकेटों के नुकसान पर इनिंग्स डिक्लेयर की। मुसद्दिक ने 75 रन की इनिंग्स खेली और इफ्तिखार ने उनका साथ दिया 40 रन के साथ। फिर एक मिनी कोलैप्स, जिसके बाद मेहरान इब्राहिम और हारिस ने 20s में रन किए। फिर आसिफ अफरीदी ने एक तेज़ इनिंग्स खेली, 50 रन की। और फिर आखिर में जो इरफानुल्लाह शाह के 20 रन हैं, उसने बर्तरी में अहम किरदार अदा किया। अच्छा, विकेट देखते हैं कि विकेट्स कैसे हासिल किए हैं। सोहेल खान लंच के बाद मेहरान का आउट किया। एक अच्छा बाउंसर था, वेल डायरेक्टेड बाउंसर था, कंट्रोल नहीं कर पाए। और एक अच्छा कैच शाहनवाज धानी की जानिब से। इस बार आसिफ आफरीदी एक ही तरह जानते हैं खेलना, और उसी तरह खेलते हुए अपने विकेट का गवाई। और ये आखिरी इरफानुल्लाह शाह, जिन्होंने एक कैमियो खेले एंड पे, अच्छे 20 रन स्कोर किया अपनी टीम के लिए तेज रफ्तारी से। और ये बॉलिंग कार्ड है, और फर्क साफ जाहिर है। मीर हमजा और सोहेल खान 5 और 3 विकेट्स हासिल किए उन्होंने। 8 विकेट्स इन दोनों ने हासिल किया। हसनैन थोड़े डिसअपॉइंटिंग रहे, महंगे साबित हुए। 6 की इकोनॉमी से रन से 1 विकेट जरूर हासिल की। शाहनवाज धानी ने भी 12 ओवर्स किए, बगैर कोई विकेट लिए 45 रन दिए। फराज अली को भी 2 ओवर्स के लिए आजमाया गया, 7 रन दिए, विकेट नहीं हासिल कर सके। और इन द एंड 265 पर 9 पर डिक्लेयर कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा ने लीड जो है वो 120 रन की। ये बहुत इंटरेस्टिंग आखिरी सेशन होने वाला है, क्योंकि सिंध की बैटिंग बहुत क्वालिटी बैटिंग है, और आपको अच्छे बॉल करने होंगे एक बार फिर। इस बार यहाँ पे स्टेट बैंक के ग्राउंड में एक ब्रेक का टाइम है। आपकी खिदमत में दोबारा पेश होते हैं थोड़ी देर में।
स्टेट बैंक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मैच समरी आपके सामने हाजिर है। यहाँ पे सिंध अपनी सेकंड इनिंग का आगाज करेगा। पहली इनिंग में 145 रन पर ढेर हो गई थी। इरफानुल्लाह शाह शानदार परफॉर्मेंस रही, 5 विकेट हासिल किए। शफीक 31, फराज अली भी 31 रन बना सके और उनके जवाब में खैबर पख्तूनख्वा ने 265 रन और 9 विकेट्स पे डिक्लेयर कर दिया अपने इनिंग। 75 रन बना सके मुसद्दिक अहमद। आसिफ आफरीदी की कैमियो रही, 50 रन बनाए 44 बॉलों पे। अगर हम विकेट्स कॉलम की बात करें तो सोहेल खान की शानदार परफॉर्मेंस रही, 5 विकेट्स हासिल किए, 83 रन देकर उनका साथ खूब दिया मीर हमजा ने, जिन्होंने 3 विकेट्स हासिल किए 63 रन पर। मजबूरी तौर पर सिंध की जो ट्रेल है वो 120 रन की है। एक बहुत ही चालाक तरीके से एक डिक्लेयर किया खैबर पख्तूनख्वा ने। एक बोनस पॉइंट्स हासिल करने से कासिर रखा सिंध की साइड को। अगर 10 विकेट्स वो ले लेते इनसाइड 100 ओवर्स तो एक एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ पे सिंध को ज़रूर हासिल हो जाता, लेकिन उस चीज़ से इनको कासिर रखा। और अब सिचुएशन ये है कि सिंध ने 120 रन पहले उतारने, उसके बाद लीड देनी है इसके खैबर पख्तूनख्वा को इस मैच में, अगर उनको ये फतेह हासिल करनी है। मेरे साथ फरहान नसीर एज यूजुअल फरहान निसार मौजूद हैं। खुर्रम मंजूर बैटिंग कर रहे हैं, 35 साल उनकी उम्र है, 184वां मैच खेल रहे हैं, 11,284 रन बना चुके हैं, 37.95 की एवरेज है, 2900 कर चुके हैं, बेस्ट ऑफ 250। इमरान खान सीनियर पहला बॉल करेंगे खुर्रम मंजूर को। इस इनिंग्स में भी खुर्रम मंजूर क्रीज से आगे निकल कर खेल रहे हैं और अगर हम पहली इनिंग्स की बात करें तो इस कोशिश में बहुत कामयाब रहे थे खुर्रम मंजूर फास्ट बॉलर्स के अगेंस्ट। और एहसान अली इनके पार्टनर, 1700 के लगभग रन्स हैं, 40 की एवरेज है, 5 सेंचुरीज हैं इनकी और 303 जो हमारे सामने इन्होंने लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में स्कोर किया। तो बहुत ही उम्दा सीज़न जा रहा है एहसान अली के लिए, लेकिन पहली इनिंग्स में ये दोनों ओपनर्स कामयाब नहीं हो पाए। जहाँ बहुत अहमियत होगी इस पार्टनरशिप की, ओपनिंग पार्टनरशिप। अगर सिंध को वापस आना है इस मैच में, 373 विकेट्स हासिल कर चुके हैं अपने करियर में। इमरान खान सीनियर बॉल करेंगे खुर्रम मंजूर को। काफ़ी एनिमेटेड नज़र आते हैं खुर्रम मंजूर जब भी क्रीज पे मौजूद होते हैं। मूवमेंट बहुत ज़्यादा है इनकी, बहुत रन की, 11,000 रन आसान नहीं होता है करना फर्स्ट क्लास लेवल पे फरहान। जी हाँ, एक तवील अरसे से ये इस दश्त की स्याही में मौजूद हैं और ग़ालिबन 16 बरस की उम्र में इनका फ़र्स्ट क्लास डेब्यू हुआ था और अब इनकी उम्र 35 साल के लगभग है, तो तकरीबन 19-20 साल हो गए हैं इन्हें फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट में और बहुत ज़्यादा तजर्बा इन्हें हासिल है इस खेल का। जहाँ एक टिपिकल फर्स्ट क्लास प्रोडक्ट है खुर्रम मंजूर। जैसे कि सोहेल खान हमने देखा पहली इनिंग में, जिस तरीके से उन्होंने बॉलिंग किया, सेटअप करके बैटर्स को आउट किया, ये चीज़ आपको फर्स्ट क्लास क्रिकेट सिखाती है। एक बार फिर क्रीज से बाहर आके पिच ऑफ द बॉल पे पहुंचना चाह रहे हैं। जब सीम और स्विंग हो रहा हो तो ये शायद अच्छा हो सकता है, लेकिन इस पेस में नए बॉल पे आउट होने का भी खतरा है क्योंकि बाउंसर इस्तेमाल कर सकते हैं। इमरान खान की पेस इतनी है। और अगर ये तीनों गेंदें आप देखें इमरान खान सीनियर की, तो इन्होंने ऑफ स्टंप से काफ़ी बाहर की हैं। ये चाहते हैं कि ड्राइव करें, लेकिन जैसा हम खुर्रम मंजूर के एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं तो खुर्रम मंजूर कतन इन गेंदों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। तो बेहतर यही होगा इमरान खान सीनियर के लिए कि वो विकेटों की जो 3 स्टंप्स हैं उस लाइन में बॉल करें, नए गेंद का फ़ायदा उठाएं। यही एक्सपीरियंस होता है फरहान। अपील की है लेकिन कदमों का इस्तेमाल था, बहुत आगे आ गए थे और ओवरथ्रो के रन मिल जाएंगे सिंध को, 2 रन मिल जाएंगे। यहाँ देखना होगा, बहुत नाराज नजर आ रहे हैं इमरान खान सीनियर अंपायर से, क्योंकि जब आप कदमों का इतना आगे आ जाते हैं पिच क्रीज से तो मुश्किल हो जाता है अंपायर के लिए आउट देना। जी हाँ, ये देखिए एक स्टेप लेकर आगे आए। पिछला पाँव देखिए काफ़ी उनका बाहर था, लेकिन ये गेंद बिल्कुल वाज़िया तौर पर लेग स्टंप पर जा रही थी। लेकिन जब नए गेंद से फास्ट बॉलर का गेंद पैड से टकराता है तो इस तरह की एक्साइटमेंट ज़रूर होती है। और ये बात हमने की थी एक इस गेंद से पहले कि जो 3 स्टंप्स में आना होगा इमरान खान सीनियर को अगर वो विकेट लेना चाहते हैं। जी हाँ, एक्साइटमेंट बनती थी, नाराज़गी नहीं बनती थी। ये तो नाराज़ हो गए अंपायर से क्योंकि डाउन दी लेग भी था, ऊंचा भी लग रहा था, उनका इम्पैक्ट भी आगे था, कुछ भी उनकी फेवर में नहीं जा रहा था। अच्छा सॉलिड स्टार्ट है खुर्रम की जानिब से, ये बेहतर है क्योंकि पहले इनिंग में हमने देखा था तो पहली डिलीवरी से ही थोड़ा शेकी नजर आए थे
खुरम मंजूर, लेकिन ये अच्छा पुरएतमाद आगाज़ है खुरम की जानिब से। इमरान खान को अपनी बॉलिंग करते रहना चाहिए। बैटर जो मर्जी करे क्रीज में, जैसे मर्जी घूमे फिरे, वो उसका मसला है। आपको अपनी लाइन और लेंथ पे बॉलिंग करनी है। और अगर हम अगले ओवर में खुरम का जब वो पहला कदम निकालते हैं तो वो जो नॉर्मल अंदाज से शफल करता है बैट्समैन, उस तरह से नहीं करते, सिर्फ अपने फ्रंट फुट को एक तरह से उठा के रखते हैं आगे। तो ये इंटरेस्टिंग होगा अगर हम रिप्ले में देख सकें खुरम मंजूर का। जहाँ पिच ऑफ द बॉल पे पहुंचने की कोशिश होती है खुरम की। पहले ओवर का अख्ताम हुआ, 2 रन्स बनाए सिंध ने बगैर कोई विकेट गवाए। क्या लगता है फरहान आपको, ये मैच किस तरफ जाता देख रहे हैं आप? 118 रन्स की ट्रेल है, अच्छी बैटिंग लाइनअप है, साद खान भी अनफिट है, तो क्या आपको लगता है कि यहाँ से सिंध की क्या अप्रोच होनी चाहिए? यह एक और अच्छा मैच और एक अच्छा रिजल्ट मुंतज़िर है यहाँ पर हमारा। और ये पहली इनिंग्स के हीरो हैं इरफानुल्लाह शाह, जिन्होंने 5 विकेटें अपने नाम की थी, 87 विकेटें हासिल कर चुके हैं और दूसरी मरतबा उन्होंने इस ग्राउंड पर 5 विकेटों का कारनामा सर अंजाम दिया। बहुत ही उम्दा बॉलर है इरफानुल्लाह शाह और इसी एंड से उन्होंने ज़्यादा विकेटें हासिल की हैं। अच्छा कैरी मिला है बाउंस के साथ, अच्छा साइन है ये इरफानुल्लाह शाह के लिए। लंबे कद के हैं, एंजॉय करेंगे यहाँ पे बॉल करना। और उनका मुकाबला है एहसान अली के आगे, जो बहुत शानदार फॉर्म में है इस सीज़न में। 300 रन की बड़ी इनिंग खेल चुके हैं, 196 रन की भी इनिंग खेल चुके हैं। और जितनी देर वो क्रीज पे रहेंगे तेज़ी से रन बनेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि वो फ्री फ्लोइंग प्लेयर हैं, एक डैशर हैं। तो केपी चाहेगा कि जल्द से जल्द इनको आउट किया जाए पहले। इरफानुल्लाह शाह के पेस और बाउंस पर हिट करना इतना आसान नहीं होगा एहसान अली के लिए। और ये विकेटों के पीछे जो 4 फील्डर्स खड़े हैं, ये किसी वक्त भी हरकत में आ सकते हैं। पहली इनिंग जैसी बॉलिंग करनी होगी, दूर दूर करते रहेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला नहीं है इनको। और अगर हम पहली इनिंग की भी बात करें तो बॉलर्स ने इतनी विकेट्स हासिल नहीं की जितनी सिंध के बैटर्स ने गिफ्ट की हैं विकेट्स अपनी। खुरम मंजूर की बात करें, उमैर बिन यूसुफ की अगर हम बात करें, साद खान की बात करें, हसन खान की बात करें, मोहम्मद हसन की, सॉरी, इन्होंने विकेट्स गंवाई हैं अपनी। तो ये चीज़ डेफिनेटली सिंध के कैंप में होगी कि अगर आप खुद विकेट नहीं गंवाएं तो आप रन कर सकते हैं। 400 रन का हदफ यहाँ पे ज़हन में होना चाहिए उनके। बिल्कुल, इस विकेट पर रन तो मौजूद हैं। इस मरतबा गैप में से ये गेंद, नया गेंद है, पेस का फ़ायदा उठाया, गेंद को मोड़ा, लेकिन बहुत ही उम्दा फील्डिंग यहाँ पर आदिल अमीन की, यकीनी एक बाउंड्री बचाई। 2 रन के साथ अपना खाता खोला एहसान अली ने। और अली इस मैच में सिर्फ 120 रन की बर्तरी हासिल है। और अगर हम सिंध की बॉलिंग को देखते हैं तो हसनैन और धानी ने 21 ओवर्स में 99 रन दिए हैं। तो जो सपोर्ट बॉलर से जो हेल्प मिलनी चाहिए थी सुहेल खान और मीर हमज़ा को, वो नहीं मिली। और ये पिछली इनिंग्स की विकेटें हैं। असरारुल्लाह ने बहुत ही उम्दा कैच पकड़ा साद खान का। उसके बाद ये गेंद नीचे रही, असद शफीक को अच्छी इनिंग्स खेल रहे थे। फराज अली ये शॉर्ट बॉलिंग पर मुश्किलात का शिकार थे, पुल करना चाहते थे। और ये बहुत ही उम्दा कैच। और इस मतलब फिर ये गेंद गई और एक और कैच, पहली कामयाबी यहाँ पर। अभी हम रीप्ले देख रहे थे, लेकिन इरफानुल्लाह शाह ने उसको लाइव हमें करके दिखा दिया कि जैसा उन्होंने पिछली इनिंग्स में किया था वही काम उन्होंने इस इनिंग्स में भी करके दिखाया। और एक गेंद पहले मैंने आपसे कहा था कि स्लिप्स के फील्डर हरकत में आएंगे जिस तरह से एहसान अली बैटिंग करते हैं। और अब एहसान अली बोझिल कदमों के साथ अपने ड्रेसिंग रूम की जानिब वापस। जी हाँ, बहुत ही शानदार बॉलिंग, कंसिस्टेंट रहे हैं पिछली इनिंग में जैसे आपने जिक्र किया, और पहले नई इनिंग भी उन्होंने वहीं से ही आगाज़ किया है। देखिए बहुत ही शानदार एरिया में गिरा हुआ बॉल, बस कुछ कह नहीं पाऊंगा कि कैसा शॉट था, ये कहाँ खेलना चाह रहे थे। ऐसे जैसे बस बल्ला घुमा दिया और अपनी विकेट गवाई। बहुत कुछ एक्सपेक्टेड था एहसान अली से, यहाँ पे डिसअपॉइंटिंग हो गई सिंध का कैंप। पहली विकेट गवाई सिंध ने 4 रन पर। इरफानुल्लाह शाह की जितनी भी तारीफ़ की जाए वो कम है। और ये भी बहुत ही शानदार बैट्समैन है, बहुत इनके फ्यूचर के बारे में बात की जाती है। उमैर बिन यूसुफ
अभी पाकिस्तान शाहीन्स के साथ श्रीलंका में मौजूद थे। जी यहाँ पे दाद देनी होगी इरफानुल्लाह शाह को। इन कंडीशंस का अगर किसी बॉलर ने सबसे बेहतरीन इस्तेमाल किया है तो वो इरफानुल्लाह शाह है। कंसिस्टेंटली एक ही लाइन और लेंथ पे बॉलिंग की है और विकेट्स हासिल किए हैं, ये क्वालिटी रही है। 5 विकेट्स हासिल किए पहली इनिंग में, और यहाँ पे एक और शानदार आगाज इस इनिंग का भी। 4 पर 1 खिलाड़ी आउट। यहाँ पे बासित अली खुश नहीं होंगे क्योंकि उनका इरादा था कि शायद हम यहाँ से 400 रन अगर बना सकें तो मैच में वापस आ सकते हैं, लेकिन इस आगाज से खुश नहीं होंगे। इस गेंद को जाने दिया, और जिस तरह अली आप किसी भी बैट्समैन की फेवरेट शॉट्स की स्ट्रॉन्ग एरियाज की बात करते हैं, ये देखिए ऑफ स्टंप पे गेंद गिरा, स्विंग हो रहा था, इसको जोरदार अंदाज से खेलना चाहते थे, एच लगा और तीसरी स्लिप से उछलते हुए साहबजादा फरहान ने इफ्तिखार के बिल्कुल आगे से इस कैच को दबोचा। फील्डिंग का मेयार बहुत अच्छा रहा है खैबर पख्तूनख्वा का। तो ओपनर्स के बारे में कहा जाता है कि उन्हें लेफ्ट करना आना चाहिए। एक वेल लेफ्ट की जो इस्तिलाह थी वो अब ख़त्म होती जा रही है क्रिकेट में, और रेड बॉल से अगर आपको लेफ्ट करना नहीं आता तो फिर आप शायद अच्छे ओपनर नहीं हैं। तो फिर आप ऐसे बैठते हैं बाहर जाके जैसे एहसान अली बैठे हैं, लेकिन ये बॉल थोड़ा आगे पिच हुआ था। एक बार फिर उसी एरिया में शानदार बॉलिंग है ये एहसानुल्लाह शाह की जानिब से। 2 ओवर्स का इख्तिताम हुआ, 4 पर 1 से। इमरान खान तो अपने बॉलिंग मार्क पर मौजूद है, लेकिन अंपायर बिल्कुल हमारे कमेंट्री बॉक्स की तरफ आते हुए, और शर्जील खान ग्राउंड के अंदर गए हैं। अगर हम देख सकें, ये शर्जील खान है। और क्यों बुलाया है, क्या डिस्कशन हुई है इसके बारे में हम नहीं जानते। Off the edge again, this time with the soft hands. Experienced Khurram Manzoor will have to be at his very best. Big wicket Sindh has lost already. Ehsan Ali could have been very important in the context of the game, because the way he plays, he could really have taken the game away. That's the man on your screen with Mir Hamza. Both of them have made peace after Hassan dropped that catch of Hamza. An absolute sitter. But at the moment, Hassan is really quiet. He's lost his wicket. For once, he's had a quiet match. Staying on to the pads. Khurram Manzoor is sticking to that tactic of walking to the bowler, shortening the length. Sindh trail by 117 runs, 115 rather. Umair bin Yusuf and Khurram Manzoor both are yet to score. And in the com box once again today, I have the company of former Pakistan under-19 skipper Amir Saeed. A very good afternoon, Amir. Thank you very much, Shah Faisal. And not start they were looking for. Sindh lost Ehsan Ali very early to a very, very careless shot. 3 slips and a gully. A lot will depend on Umair bin Yusuf. He's had a very good tour of Pakistan Shaheens to Sri Lanka. Apparently they played on quite tough surfaces over there. 3 slips. Nabigul, Iftikhar, Sabzada Farhan, and a gully. Imran Khan
pretty decent first over. Looks like they've adjusted very nicely to what lengths they want to bowl. Taha, 12th man, he's earned his lunch. He's been on the park for most of the first session. There's a slight chat at the end of last over. Here, umpire Walid Yaqub now officiating from the western end of the ground. Had to call in Sharjeel. He's sitting in the dugout, not wearing his subs bib. I think match referee Takhar is also having a word in the Sindh camp. Probably it's about that. We can confirm that. Coach Basit Ali has joined in now as well. But it's very intense in the middle. There's no doubt about that. Playing tight, compact, Umar bin Yusuf. Faisal, a very big part of first class cricketers or batters especially is that they've got to learn to adapt their game according to different wickets or different pitches. Would you buy that someone says that that is the way I play? Like players like Sharjeel, players like Ehsan, Ali, they like to play in the same way no matter what the pitch is, what kind of bowling they are facing. Do you think that's a good strategy? We'll continue with that. 5 for 1 after 3. Yes, Amber, this is something that really need to be talked about, because it's always said you stick with your strengths, but also you have to take the conditions into the account. Quite short of some of the surroundings of this stadium. The good outswinger, short of a length, plenty of bounce for tall Irfan Allah Shah. Yet, so you do have to take into the consideration the conditions, and you can do that. You can still stick to your strengths, but you do give yourself a little bit of time to get settled at the crease in different conditions. And once you do that, the real top players, they do give respect to good balls. They do give respect to the different conditions. And they're talented enough to make up for that lost time if they have to. Soft hands, good single. They would have to do that to break the rhythm of the bowlers. From Manzoor's first run. That is something you expect from top order batsmen, especially against the new ball. No matter how aggressive is your style of batting, one expects a top order batsman to do the basics right at least. And when facing the new ball, it means, in the longer version, it means that you've got to, as you said, give yourself some time, let the balls which are swinging or maybe far away from you, let them go, have a look, and then, as you said, good batters cover up or they make up for all the dot balls that they play early on. But you've got to have a good look as a good batsman. There is no excuse for playing a silly shot, I would say, early on in your innings, getting out and then saying that, oh, that's the way we play. 3 slips and 2 gullies. Maher has found the middle of the bat and he's put bat to ball. You're absolutely right. There's a very fine line, like I said.
to be aggressive, sticking with your strengths and not taking the conditions into consideration at all. Got to play percentage cricket, and on a wicket like this you would tell yourself what the bowler wants you to do. They want you to drive on the front foot, and if you thought them for long enough, they will change their game plan. And the margin of error for bowlers in terms of line is so small on this. Player like Azam could really capitalize on short and wide deliveries. And even for Azam, it doesn't have to be very wide because he's got fast hands and he's very strong square of the wicket. He would have relished the chance, but he didn't wait long enough for bowlers to change their game plan, and instead he did and played into the hands of the bowlers. On the other hand, Umair bin Yusuf, young talent, absolutely a delight to watch once he gets going. Has all the shots in the book, got a decent technique, some experience, and some more runs under his belt will certainly do him a lot of good. Off the edge, but soft hands, landing in front of that first gully. Good testing over there from Irfan, good lengths. 6 for 1. Quaid up for Manzoor. Tumbling save in gully by Mehran. Manzoor's presence will be important for Sindh. He knows how to construct big runs. He's cut it with his dismissal in the first innings against Afridi. Definitely look to make amends, and this is what we were talking about. Look at the airy-fairy nature of this stroke. And a magnificent take, you have to say. Sahibzada Farhan really got to it comfortably. That's the bowler wanted him to do, and he played right into their hands. Absolutely no excuses for that shot. As you mentioned earlier, too early to be going for your shots. This track, especially when the ball is starting around, when the ball is new, got to wait for your time. And one of the makeup of the very top players is to realize what percentages, what are the shots to play on a certain pitch. You may have all of them, but you don't unleash all of them where they're not suited to. And that is the makeup of a top player, to know that. That knowledge is a very important part. Absolutely right, and I think that is the difference between a great player or a very good player and an average player. An average player will always, play irresponsible shots, maybe batters we are talking about, and give you excuses, whereas great players or very good players will find a way out of it, adjust accordingly, and do the task that they are asked by the team or required by the team, which is to score runs. Umair has really looked very good in his short stint at the innings, at the crease so far. Everything has come right out the middle of the bat.
Very compact. His bat is right next to his body. His point of impact is almost under his eyes. Don't want to put mockers on him. Commentators curse. But yeah, so far so good. Touch wood, as they say. But his balance is immaculate as well. Good teasing length on that occasion, almost squared up. Umar bin Yusuf of the leading edge of the bat. You would expect this from Imran Khan. He's a very, very experienced campaigner. He's not express, but he's very, very skillful. In talking about the knowledge of the game, he certainly does know his game inside out. And in the last few years, last couple of years, I think he's made a resurgent comeback into the first class game and also in the shorter format as well. And he does possess a lot of knowledge. If you talk to him about fast bowling, he's very knowledgeable and very skillful. Rocking back, right behind that. 7 for 1. Imran Khan, one of most consistent performers for KPK, and wouldn't be wrong if I say, Shah Faisal, that he's one of my favorite cricketers, in the sense that when he was on Pakistan duty, in those very dark times of Pakistan cricket, when top players were, taken away for obvious reasons, he held his hand up and bowled exceptionally well in that time frame for Misbah. And I remember on not so bowling friendly wickets in the UAE, whenever Misbah looked to him for wickets, he always obliged. You can also say, Amar, that he's absolutely maximized his talent just because of sheer hard work and dedication. Every time he pulls on that shirt, he gives 100%. Could well be a very good mentor for these youngsters as well from KP. Irfanullah Shah be the one. Samin Gul is the other one in the ranks. And that's your man. He's back in action. Yeah, that's like we saw earlier, Sohail Khan trying to mentor along Hasnan and Dhani. Imran Khan probably does the similar role with the KP unit. But like we're discussing about Sindh's strength on paper, on the field and on the bench, but something is missing, or something seems missing in their unit. Oh, awkwardly rising delivery, but Puram got on top of that nicely, played it down very well. KP, on the other hand, looks to be a complete unit. They just seem to play for each other and thrive on each other's success. That's always been their strength. Well, that is our commentary team, our partners in crime, Ali Yunus and Farhan. That's the delivery Shah Faisal was talking about. Awkward bounce and well negotiated in the end. Kept it down. Off the edge, Umar will get off the mark. First run in 16 deliveries. Having seen the previous delivery, Hammer, is that short leg for quicker bowlers on this kind of pitch even? Is it out of fashion now? We haven't seen one. Previously, it used to be a regular fixture, especially with the moist wicket on the first day, with the ball jagging around.
We haven't seen this in these two games. Yes, now that you have mentioned it, I've just realized that yes, we haven't seen a short leg for a long time, especially on a wicket like that. That is got some moisture. Nicely worked away by Khurram Manzoor. Call was for 2 initially, but good ground coverage by Arshad Iqbal. Yeah, it could be handy on both counts, like the previous one that rose awkwardly on Khurram Manzoor. You have to be extremely precise if he fends it off. But also slightly fuller delivery. If it bounces awkwardly off a length, it's likely to take the inside edge or a glove and balloon in that area. KP has plenty of runs, but they're persisting with 2 fielders in the deep on the onside. Umair is in complete control, gets himself another run. The longer they stay in the middle, easier it's going to become. 6 gone, 11 for 1. Shah Faisal, when we were starting our careers as first-class cricketers, at least that is what I can say about myself, is that in that first-class team, when we started, we had characters. And as you were talking about mentoring, they were characters and you look up to them. Very neatly worked away. More than a single on that occasion. 2 in fact for Umair bin Yusuf. Just letting the ball come on, just using his wrist. Very composed. Looking forward to his innings here. The likes of Basit Ali, who's the coach of Sindh at the moment. Asif Mushtaba is another name. Rashid Latif. And many others. Zafar Iqbal, I remember, for fast bowlers in that time. They were such brilliant guides for youngsters like us who were starting their careers. They were nearly like a fatherly figure to all the youngsters that that came up in that first-class team from my batch. And even though we were made to realize the importance of our spot in the team, and made to realize as well that there are so many other players who want to take that spot, but we are here because we've done something special or we've worked harder than the rest. But to hold on to that position, we need to work even more harder. Glorious. Once again a solid punch down the ground. It's knocked down by Arshad Iqbal, but a couple of runs to Umair, looking in good order. And you know, before we had a few games under our belt, or most probably a season or 2 under our belt, these players always took all the responsibility on themselves. And that is why I say that we had these characters who made this transition from under 19 and age group cricket to first class cricket very easy for us. And I think that is something which I see missing nowadays, especially in the Sindh team. Another solid punch. Nice stride into the stroke. Probably won't have enough legs to go over the fence. But the control is very, very visible. Umair bin Yusuf must be very reassuring the way he's batting for the rest of the bench.
because pretty much everything has come out of the middle of his bat. I completely agree with Amr, the point you're making with all those senior players. And also, like you mentioned, it's in a funny way, at times you're in a squad, you're competing against each other for the same spot. But at the same time, you're made to realize that you have to work for one another. And that forms a very, very strong team culture. Something I feel like I can see in KP team. Absolutely right. That is the role of players like Khurram Manzoor, Sarfaraz, when he comes back into the squad, and Tabish Khan, Sohail Khan, Asad Shafiq. All these players need to groom all these players now. They've got to realize that, yes, of course, they've got to take most of the burden because of the experience they have, but they also have to prepare this team for the future. Very, very valid points. It's like a very, very experienced man talking about exactly, he knows everything inside out. 7 gone, 17 for 1. And this is how the game looks. Northern versus Central Punjab, and look at the top of the screen. 206, Haider Ali has really made the headlines as soon as he come back from the national duty. 445 for 8 declared in 106 overs. Central Punjab had been played to all parts of the ground, the National Bank Sports Complex. And their start, a bit indifferent. Imran Dogar made 43. Ali Zaryab is unbeaten. 2 wickets down for 94. Khurram Manzoor and Umair bin Yusuf is battling very, very hard here. And it's always said, Amr, continuing from what we started last over, is that he's the captain leading from the front. But there are many leaders inside a team. Like you mentioned, all those names in the Sindh team, they're the leaders. And they have to lead the way to those youngsters. Not only do the transfer of the knowledge, but also show them how it's done in the middle. So at the moment, they're an integral part of this team as well. So that will really make the transition easy. Another very close leave. You can say it's a very good leave from Umair bin Yusuf. It's always said like that, but the bowler thinks he nearly had him. Yes, that was close, but hindsight, you can say it was a good leave. It always amazes me when it's always said it's a good leave in the commentary box, but as a batter, sometimes you just rethink and you think to yourself, that was too close for comfort. But yeah. Umair has managed that back of a length pretty securely. His innings is not big in terms of runs, just 8. 25 balls he's negotiated. Time in the middle is really of essence here on this pitch. Because you try to wear the bowler down, try to make him change his plans. And if he does that, and you're in there for a while, you can capitalize. You can score your runs quite quickly. The kind of bounce that this wicket has. Solid. Done a good job so far, Umair bin Yusuf. Word from Khurram Manzoor, slowly encouraging him and asking him to continue the way he's batting right now. It's just very interesting to see that who buckles first, who lets go their discipline first.
been an absorbing start to the innings. Irfanullah Shah has bowled really well. Umair bin Yusuf has been up to the task. Shot. Field is set for that shot, but Umair got on top of it very nicely again. Rolled his wrists. Umair bin Yusuf plays that pull shot very well, and even on that occasion, see how in control he was of that shot. Rolled his wrists and kept the ball down. There was a fielder placed at the square leg boundary, and that is why he only got a single for that very well played shot. Teasing lengths. Khurram Manzoor fell for it. He was lured into that fuller delivery. An absolute peach to finish off. 8 gone, 19 for 1. सिंध 19 पर 1। उमैर बिन यूसुफ काफ़ी सॉलिड नज़र आए, 9 रन्स बनाए उन्होंने। उनके साथ खुर्रम मंजूर मौजूद हैं 5 रन्स पर, जो ट्रेल अब 101 रन्स की है। और मेरे साथ मौजूद हैं अली सलमान। अली किस तरफ जाता वो देख रहे हैं इस मैच को? बड़ा इंटरेस्टिंग मैच है अली, क्योंकि सिंध को हम राइट ऑफ अभी नहीं कर सकते, लेकिन कहीं जाए ना जाए, लेकिन चौथे दिन तक जाता हुआ मैच नज़र आ रहा है, जो बड़ा ज़रूरी है। क्या ऐसा हो कि चौथे दिन तक जाए? अगर ये पार्टनरशिप बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सिंध को लंबी बैटिंग करनी होगी। एटलीस्ट कल शाम तक तो बैटिंग करनी पड़ेगी इनको, एक दिन पूरा तो बैटिंग और करनी होगी अगर कोई चांस अपने लिए क्रिएट करना है तो। बिल्कुल अली, हम सब क्रिकेट से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, क्रिकेट देखना चाहते हैं। भले 1 घंटे खेलो चौथे दिन, लेकिन ये चौथे दिन तक जाना चाहिए। ये पार्टनरशिप बहुत ज़रूरी है। जैसे आपने कहा कि जितना लंबा यहाँ पे सिंध बैटिंग करेगा, और पोटेंशियल मौजूद है, बैटिंग मौजूद है। असद शफीक, फराज अली अच्छे बैटर्स हैं दोनों। एक धचका ज़रूर लगा है जब साद खान 100% फिट नहीं है, थोड़ा हैमस्ट्रिंग का मसला है उनको, वो भी एक इशू होगा डेफिनेटली सिंध के लिए। जी हाँ बिल्कुल, और जब से ये रनर का रूल चेंज हुआ है तो उसके बाद से ज़रूर जो है वो बैट्समैन के लिए काफ़ी मुश्किल हो गई। हमारे जो नाज़रीन उनके लिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात होगी कि जो आखिरी रनर हमने इंटरनेशनल क्रिकेट में देखा है, बहुत कम लोगों को ये बात मालूम है कि आखिरी रनर कौन था। अजिंक्य रहाणे ने रनर लिया था और पार्थू पटेल उनके रनर थे। ये वो आखिरी मरतबा हमने देखा कि किसी ने जो बतौर रनर जो है वो खिदमत अंजाम दी हैं। बहुत ही शानदार मेमोरी है आपके लिए, दाद देनी होगी। अरशद इकबाल अब बॉलिंग के लिए आ गए हैं। अपील की है, पिछले पांव पे बॉल लगाए, जी हाँ ये आउट दे देंगे। बहुत ही शानदार डिलीवरी अरशद इकबाल की जानिब से, पढ़ने के बाद अंदर आया और पिछली टांग पे लगा। ये सडन आउट था। बड़ा अच्छा ये डिसीजन था, बड़ा आसान डिसीजन था, और इसको बड़े आराम से कह सकते हैं पलम LBW था। मुश्किल से 2-4 नजर आ रही है सिंध। या देखिए अच्छी लेंथ पे पड़ा हुआ बॉल, एंगल अंदर हुआ और सीधा पिछले टांग पे। इम्पैक्ट सही था, विकेट्स को बॉल लग रहा था। एक अच्छा डिसीजन, आसान डिसीजन। उमैर बिन यूसुफ बहुत ही टैलेंटेड बैटर हैं, लेकिन यहाँ पे नाकाम रहे एक बार फिर। LBW हुए अरशद इकबाल पे 9 रन बनाने के बाद। 19 पर 2 सिंध। नए आने वाले बैट्समैन असद शफीक, कैप्टन नॉक खेल ली होगी असद शफीक को।
क्योंकि इस पूरे सीज़न में कोई ज़्यादा अच्छी कारकर्दगी असद शफीक की नहीं रही, लेकिन दो सीनियर प्लेयर यहाँ पे क्रीज पे यकजा हैं, असद शफीक और उनका साथ दे रहे हैं खुर्रम मंजूर। अब तक 169 मैचेस के लिए 1425 रन स्कोर किए, 40.76 की एवरेज है। तो 10,425 रन इनफैक्ट स्कोर किए, 40.76 का एवरेज है। 56 उनकी निफ्ट सेंचुरियाँ, 25 सेंचुरियाँ, 223 उनका कैरियर बेस्ट है, जो यकीनन असद शफीक की अजमत की दास्तान सुनाते हुए स्टैट्स। और इस किस्म की सूरत में 12 इन दोनों प्लेयर्स ने अपनी टीम को मुश्किल से निकाला है। अगर ये पार्टनरशिप बड़ी इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि दोनों सीनियर प्लेयर इस वक्त मौजूद हैं। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा कि बहुत बार ऐसी सिचुएशंस में ये दोनों रहे होंगे सीनियर मोस्ट बैटर्स हैं सिंध की जानिब से। और अगर कोई कैप्टन इनिंग खेलने का मौका सही है तो वो ये है। इन कंडीशंस में कैप्टन को एक इनिंग खेलनी होगी, आसान नहीं होगा क्योंकि बहुत ही क्वालिटी बॉलिंग साइड है ये केपी की। अरशद इकबाल ने पहले ही अपने ओवर में विकेट हासिल किया उमैर बिन यूसुफ की। अच्छा आगाज किया है, ड्राइव किया है, पॉजिटिव स्टार्ट है असद की जानिब से। 2 रन मिलेंगे, ऐसी ही क्रिकेट खेलना होगी, अपने शेल से बाहर निकलना होगा। जब आपसे रन नहीं हो रहे फिर अटैक इज बेटर डिफेंस की एग्जांपल देनी पड़ती है। पहली बॉल खेलें, देखें अगर आप टेक्निकली देखें तो पहली बॉल बहुत बाहर से जो है वो बल्ले पे ली है असद शफीक ने। हालांकि 3 स्लिप और 1 गली भी मौजूद है, विकेट कीपर 5 फील्डर विकेटों के पीछे मौजूद हैं। अगर हम इसका रीप्ले देखेंगे आप देखिएगा बहुत बाहर से इस गेंद को खेलें असद शफीक। लेकिन बहरहाल जब आपसे रन नहीं हो रहे तो आपको इस किस्म के रिस्क लेने पड़ते हैं। जहाँ थोड़ा दूर बॉल था लेकिन लकी रहे, बिल्कुल सही कहा आपने। और ये वो विकेट हासिल की पड़ने के बाद तेजी से अंदर आया, बहुत ही शानदार डिलीवरी, बहुत अच्छे तरीके से इन कंडीशंस को यूटिलाइज किया है केपी के बॉलर्स ने। बिल्कुल विकेट का बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया, पिच का इनफैक्ट, और अच्छा सीम का मुजाहरा किया यहाँ पर। और रीप्ले आपने देखा कि जिस तरह पलम LBW आउट हुए थे उमैर बिन यूसुफ, पढ़ने के बाद गेंद बड़ा, ये वो गेंद है जो लेफ्ट किया था, बहुत लेट लीव करने का फैसला किया। और मैं जब पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ वीमेंस सीरीज़ कर रहा था उस वक्त मैंने बताया था कि आपने अक्सर ये टर्म सुनी होगी पलम LBW, बट वाई वी कॉल इट पलम LBW, इसके पीछे भी एक बड़ी हिस्ट्री है। दिफा अंदाज से खेले, फील्डर वहां पे मौजूद है। पलम एक्चुअल इंग्लिश में कहते हैं उस टूल को कि जिससे मैसन या जो मिस्त्री जो दीवारों का काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, वो स्ट्रेटनेस ऑफ द कॉलम वो उससे मेजर करते हैं। तो उसको उर्दू में शाकुल कहते हैं और इंग्लिश में उसको पलम कहते हैं। एक लट्टू नुमा आला होता है, औजार होता है जिसमें डोरी बंदी होती है, उससे स्ट्रेटनेस चेक करते हैं। तो पलम LBW इसलिए कहते हैं कि इतना सीधा लगा है कि आप उस पलम से उसको मेजर कर सकते हैं, उससे नाप सकते हैं। दैट्स व्हाई वी कॉल इट पलम LBW। थैंक यू वेरी मच अली, मेरे इल्म में ये इजाफा है, मुझे इस चीज़ का नहीं इल्म था। और जैसे जैसे आपके साथ कमेंट्री करते जाएंगे बहुत चीज़ों का इल्म होता चला जाएगा। अरशद इकबाल, और एक बार फिर बड़ी अपील की है, अंपायर का फैसला देखना होगा। ओह ये बहुत ही लकी रहे यहाँ पे, लगता है असद इम्पैक्ट शायद आउटसाइड द ऑफ स्टंप हो सकता है। अगर इम्पैक्ट नहीं है तो बहुत ही मुश्किल था ये। और जिस तरीके से खुशी मनाना शुरू की थी केपी के बॉलर्स ने, लगा था जैसे कि ये सीधा खा गए हैं। ये देखिए आउटसाइड द ऑफ स्टंप, ये आई थिंक बहुत ही क्लोज कॉल दी है, बहुत क्लोज कॉल दी है। और यहाँ पर वलीद जो है उन्होंने इसको नॉट आउट करार दिया। और सिमिलर इसी तरह का आउट करार दिया था उमैर बिन यूसुफ को, और सिमिलर हाइट के तकरीबन प्लेयर है उमैर बिन यूसुफ भी और असद शफीक भी। लेकिन यहाँ पे बहुत लगी रहे, मैं समझता हूँ असद शफीक। तो शफीक असद हैं लेकिन मेहरबान वलीद हैं। जी हाँ, कुछ ज्यादा मेहरबान हो गए यहाँ पे। बहुत लकी रहे कि असद अब क्रीज पे मौजूद है, क्योंकि ये बॉल विकेट्स पे जाके लग रहा था, इसमें कोई शक नहीं है हमें और कोई डाउट नहीं है ये कहने में भी कि यहाँ पे एक बार फिर गलती हुई है वलीद याकूब से। अग्रेसिव बॉलिंग है अब, और ऐसा होता है जब 2 विकेट्स आपने हासिल की हो तो बॉलर्स का दिल बहुत बड़ा हो जाता है अली। लेकिन अली इस किस्म की बॉलिंग खुर्रम मंजूर जैसे बैट्समैन को, असद शफीक जैसे बैट्समैन को सेट कर देंगी। ये अननेसेसरी बॉल थी मैं समझता हूँ, क्योंकि आपने जो मोमेंटम जो प्रेशर कायम किया हुआ है वो इस किस्म की बॉलिंग से बिल्कुल ज़ाया हो सकता है। क्योंकि 1-2 बाउंड्रीज अगर लग गई तो डेफिनेटली जो है वो वापस आ जाएंगे अपने रिदम में दोनों बैट्समैन। निन्यानवे रन की ट्रेल है अभी सिंध के लिए। ये देखिए दोबारा से अगर हम असद शफीक की वो अपील जो हुई थी, बॉल पिच हुआ आउटसाइड द ऑफ स्टंप के साथ अंदर आया, इंपैक्ट इन लाइन, बहुत ही करीबी मामला, बहुत क्लोज था। और जिस तरह मैंने पहले कहा
कि बहुत लकी रहे। और उमैर बिन यूसुफ, असद शफीक दोनों मोर और लेस सिमिलर हाइट के प्लेयर हैं। बॉल का इम्पैक्ट भी बिल्कुल सेम लगा था, लेकिन अंपायर का जो डिसीजन था वो डिफरेंट था गुज़िश्ता डिसीजन के मुकाबले में। जी हाँ, पूरी टीम एकदम झूम उठी थी क्योंकि इतने सर्टन थे कि ये बॉल विकेट को जाके लग रहा था, लेकिन बहुत लकी रहे यहाँ पे असद शफीक। एक बार फिर हम देखते हैं अरशद इकबाल का बॉल पिच हुआ, आउटसाइड द ऑफ स्टंप नहीं हुआ, इम्पैक्ट इन विकेट्स है। आई थिंक ये मिडल और लेग को लग रहा है ये काफ़ी क्लोज था। और अब हमने ये रिप्ले देखा, अब हम अपनी प्रोडक्शन टीम से रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर उमैर बिन यूसुफ का भी अगर रिप्ले दिखाएं तो उससे काफ़ी हमें और हमारे नाज़रीन को अंदाज़ा हो जाएगा कि क्यों हम इसमें अपील को इतना ज़्यादा डिस्कस कर रहे हैं। ये देखिएगा, ये तकरीबन सेम हाइट है दोनों की, और बिल्कुल देखें गेंद सेम जगह पे तकरीबन जो है वो लगा है। थोड़ा सा मैं समझता हूँ माइन्यूटली सा डिफरेंस होगा, लेकिन फिर भी इतना नहीं था कि स्टंप से बाहर हो। या बिल्कुल माइन्यूट, जैसे आपने कहा जो पिच ऑफ द बॉल था वो थोड़ा विकेट्स के अंदर की तरफ था जिसपे उमैर बिन यूसुफ आउट हुए, और ये बॉल थोड़ा आउटसाइड द ऑफ स्टंप पिच हुआ था, लेकिन दोनों बॉल विकेट्स को लग रहे थे, ये तो इसमें कोई शक नहीं है। तो यहाँ पे एक जिंदगी मिल गई असद को, तो इसको भरपूर तरीके से एंजॉय करना होगा, रन्स करने होंगे। बिल्कुल, और फॉर्चून फेवर्स ब्रेव इसीलिए कहते हैं। अब किस्मत ने तो साथ दिया उनका, अब उसको किस तरह से कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्जन रेट उनका कैसा होता है, डेफिनेटली ये देखना होगा। और अभी भी ये मैच मैं समझता हूँ सिंध के हाथ से निकला नहीं, क्योंकि दोनों एक्सपीरियंस प्लेयर इस वक्त क्रीज पे मौजूद हैं, और इन दोनों में से एक ने भी अगर बड़ी इनिंग खेल दी तो साथ में बाकी आने वाले बैट्समैन में इतना पोटेंशियल है, क्योंकि बैटिंग काफ़ी बड़ी है सिंध के पास भी। सुहेल खान भी अच्छी बैटिंग कर लेते हैं, तो यकीन ये तौर पे ये मैच अच्छा होगा और चौथे दिन तक जाएगा। बहुत श्योरिटी से आप ये बात कर रहे हैं, और हम चाहेंगे अच्छी क्रिकेट देखने को मिले, और सहरा इनके सर जाता है। जी हाँ, ये पिच क्यूरेटर है अतीक, ना सिर्फ इस ग्राउंड की पिच इन्होंने बनाई बल्कि साथ साथ जो है इन्होंने असगर अली शाह स्टेडियम की भी पिच बनाने की जिम्मेदारियां अंजाम दी हुई हैं। इसके अलावा कंट्री क्लब की भी पिच इन्होंने ही बनाई, तो 3 मुख्तलिफ ग्राउंड का इनको एक्सपीरियंस हासिल है। काफ़ी पुराने क्यूरेटर हैं अतीक। वेल डन अतीक, गुड जॉब। जहाँ बिल्कुल दाद देनी होगी, क्योंकि पंजाब लेग के बाद जहाँ पे 5 राउंड्स की गेम ड्रॉ में हुआ, सिर्फ एक का नतीजा आ सका, उसके बाद जब आप कराची लेग में आए और यहाँ पे डिसीजंस आते हुए, और इस मैच का भी डिसीजन सर्टन है, अब वो किस तरफ जाएगा ये अब आप बेहतर मुझे बताएंगे, क्योंकि आप बहुत श्योर हैं चौथे दिन पे जाएगा ये मैच, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि चौथे दिन तक जाएगा। अली सुहेल अली वजीर यूबीएल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के चीफ क्यूरेटर है, उनको भी क्रेडिट जाता है। साथ साथ नेशनल बैंक के जो नासिर हैं, तीनों ग्राउंड पे बड़ी अच्छी पिचेस बनाई गई, शॉर्ट बॉल पंजों के बल उछल के खेले इस मौके पे खुर्रम मंजूर। और इस किस्म की बॉलिंग मैंने पहले भी कहा कि बैट्समैन को सेट कर देंगी, प्रेशर का मोमेंटम को ज़ायल कर देंगी, क्योंकि आप जितना बैट्समैन को इस मौके पे खिलाएंगे, ड्राइव खिलाने के लिए जाएंगे, खुला ड्राइव खिलाने के लिए जाएंगे, जब भी आपको एजेस के चांसेस मिलेंगे और कैच के चांसेस होंगे। जी मैं बड़ा कॉन्फिडेंट हूँ कि मैच चौथे दिन तक जाएगा। बहुत अच्छी क्रिकेट खेलनी होगी यहाँ पे सिंध की साइड को चौथे दिन पर लेके जाने के लिए, क्योंकि अभी ट्रेल जो है वो 98 रन की है। पहले इनको इन 98 रन को पूरा करना होगा, उसके बाद लीड देनी होगी, जो कि केपी को फिर चौथी इनिंग में चेज करना होगा। बहुत डॉन्टिंग टास्क जिसे आप कहते हैं वो सिंध के लिए यहाँ पे, और वही रोल प्ले करना होगा इन दोनों को कि जिस तरह से रिजवान हुसैन ने बैटिंग की थी। हवा में बॉल खेला है लेकिन गैप में, लकी रहे असद, दूर से ड्राइव मारने गए थे, 2 रन हासिल किए। इंपॉर्टेंट है कि जो इंटेंशन है वो पॉजिटिव रहें। 10 ओवर्स का इख्तिताम हुआ 24 पर 2 सिंध। आज हवा निस्बतन कम तेज़ है और बहुत ही आहिस्ता हवा चल रही है। ये दरख्तों का झूमना ये बता रहा है कि हवा का जो आज प्रेशर है थोड़ा सा कम है। सरसराती हवाएं, गुनगुनाती फिजाएं, झूमती निगाहें और लड़खड़ाती जो है वो बैटिंग की जो तमन्ना है, ये सब जो है इस माहौल की रंगीनी में रौनक में राना ही हमें इजाफा कर रही है। 3 स्लिप एक गली के साथ अरशद इकबाल। अच्छी सॉलिड इनिंग लगी है अभी तक खुर्रम मंजूर की जानिब से। ऐसा लग रहा है कि वो एक पर्पस के साथ खेलने आए हैं और पर्पस यही होगा कि इन मुश्किलात में घिरी हुई टीम को बाहर निकाला जाए किसी तरीके से। सबसे पहले तो ये रिमेनिंग जो 97 रन है इनको कवर किया जाए, उसके बाद लीड क्रिएट किया।
पोटेंशियल मौजूद है, एक्सपीरियंस मौजूद है, स्किल मौजूद है, सिर्फ एग्जीक्यूट करना है। ऑब्वियसली और बड़ा प्लेटफॉर्म है क्योंकि लाइव मैच टेलीकास्ट हो रहा है और खुर्रम मंजूर पे जो टैग लगा हुआ है उसको बारहा हो चुके हैं। पाकिस्तान के जो तीनों फॉर्मेट हैं, वनडे, T20 और क़ायद आज़म ट्रॉफी, सब में बेस्ट बैट्समैन रहे हैं। कुछ मजीद उनको प्रूफ करना नहीं है, लेकिन यहाँ पे उनसे रन चाहिए सिंध की टीम को। अच्छा, अभी तो इन स्विंग बहुत अच्छा कर रहे हैं अरशद इकबाल। पढ़ने के बाद निप इन होता है बैटर को। हमने देखा उमैर बिन यूसुफ जैसे आउट हुए, पढ़ने के बाद बहुत तेज़ी से अंदर की तरफ आया। उसके बाद असद को जो एक बॉल हुआ जो पढ़ने के बाद बहुत तेज़ी से वो भी अंदर आया। बहुत लकी रहे कि अंपायर ने डिसीजन उनके हक में दिया। तो आसान तो सिचुएशन नहीं है यहाँ पे दोनों के लिए, लेकिन शायद अगर ये नया बॉल थोड़ा गुजार लेते हैं, थोड़ा वक्त गुजार लेते हैं पिच पे, तो थोड़ी बेहतरी आएगी। इफ्तिखार अहमद कैप्टन है केपी के, बहुत ही चालाक कैप्टन है, बहुत ही अच्छे तरीके से कप्तानी की है। जब पहले दिन आसिफ आफरीदी को लेके आए थे, उस मूव ने पांसा पलट दिया गेम का। बहुत ही शानदार, ये गैप तलाश करने में कामयाब रहे। 4 रन मिल जाएंगे असद को। बड़ा अच्छा ड्राइव था यहाँ पे और गैप में खेले, चूंकि काफ़ी बड़े गैप्स हैं इस वक्त फील्ड में, तो असद ने इसका पूरा फ़ायदा उठाया। ड्राइव खिलाने गए थे, कोशिश की थी कि गेंद बल्ले का किनारा लेके विकेटों के पीछे जाए, लेकिन असद शफीक का जो एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे मैटर करता हुआ बड़ा अच्छा यहाँ पे स्ट्रोक था और गेंद 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर। कैप्टन इनिंग खेलना होगी यहाँ पर असद शफीक को। जहाँ अच्छी अप्रोच लगी है, पॉजिटिव नजर आए हैं। 7 बॉलों पे 8 रन बने, रन्स लेने की कोशिश कर रहे हैं और ये बेहतर अप्रोच है, क्योंकि आप सिर्फ ब्लॉक करते रहेंगे तो कोई भी बॉल आपको आउट कर देगी। तो रन्स लेना बहुत ज़रूरी है, जो भी बैट बॉल हो उसे खेलना ज़रूरी है और ये अच्छी है, लीव करना भी आना चाहिए। यहाँ पे तकरीबन 200 प्लस की जो लीड है सिंध की, वो समझता हूँ मैं काफ़ी वाइटल रोल प्ले कर सकती है। ये शाहनवाज धानी है, आप देख सकते हैं 1 गो में इन्होंने बोतल खाली की है। ये सिंध की सरजमीन, सहराओं की सरजमीन, प्यासी सरजमीन, और इतना ही प्यासे शाहनवाज धानी। ये भी मैं समझता हूँ कि डेयर है जो उन्होंने किया है। ये यहाँ ऐसी ही प्यास कुछ विकेट्स लेने के लिए भी इनको लगानी होगी अपने आप को। वैसे अगर ये मंजर दोबारा देखें और मजीद इंटरेस्टिंग लगेगा और हमारी प्रोडक्शन दिखा सके कि किस तरह इन्होंने 1 गो में, एक सांस में इन्होंने बॉटल खाली की है। और यही क्रिकेट है, सोने के क्रिकेट के अलावा भी आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिल जाती हैं जिसको डिस्कस किया जा सकता है। शाहनवाज धानी मौजूद हैं और इसके अलावा उमैर हैं जो अब से थोड़ी देर पहले आउट हुए। फिर उसके अलावा फराज अली हैं, अच्छे यूटिलिटी ऑलराउंडर हैं फराज अली, के इलेक्ट्रिक और PIA के लिए खेलते रहे। जहाँ पोटेंशियल शो किया है फराज अली ने, यहाँ पे एक अहम इनिंग की ज़रूरत है, एक करियर बिल्डिंग इनिंग होगी ये, क्योंकि ऐसे मौके पे अगर एक यंगस्टर आके स्कोर करता है तो बहुत ही अच्छी इनिंग होगी, वो बहुत इंपॉर्टेंट इनिंग होती है इनिंग के लिए। 11 ओवर से इख्तिताम हुआ, 30 पर 2 सिंध। और जब जब ये मैं मंजर देखता हूँ वाली, तो मुझे आपकी वो बात याद आ जाती है जो आपने पहले दिन की थी मुझे, कि ये ग्राउंड नोट की शक्ल में है। बताने की जरूरत नहीं है कि हम किस ग्राउंड पे कमेंट्री कर रहे हैं, क्योंकि अमूमन ग्राउंड ओवल होते हैं या राउंड होते हैं। ये बिल्कुल ऐसा लगता है, मैं बार बार कहता हूँ कि हम किसी 1000 या 100 के नोट पे मैच कवर कर रहे हैं। इरफान शाह अपनी बॉलिंग जारी रखेंगे, उस तरीके से इम्पैक्ट नहीं क्रिएट कर सकें जो उन्होंने पहले किया था। 1 विकेट जरूर हासिल किए, लेकिन अच्छा निगोशिएट किया है खुरम ने इनको, कदमों का इस्तेमाल अच्छा कर रहे हैं, पिच ऑफ द बॉल पे पहुंच रहे हैं। और ये वो लाइन और लेंथ इस पे गेंद करनी है इरफान को, क्योंकि इससे पहले उन्होंने जो बाउंसर्स किए थे वो यूजलेस बाउंसर थे। यहाँ पे अगर खिलाएंगे तो बैट्समैन को काफ़ी मुश्किल होगी। KM के हेलमेट पे लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ये इसलिए नहीं है कि KPK से खेल रहे हैं, बल्कि इसलिए है कि खर्रो मंजूर खान है। वैसे ख्वामोखा भी बन सकता है। आप थोड़ी देर और बैठे रहेंगे तो बहुत सारे अल्फाज और बन जाएंगे।
खुर्रम मंजूर चूँकि बुनियादी तौर पर ओपनर हैं और एक तवील अरसे से अंडर 19 से ओपन करते आ रहे हैं। मैं इनका पूरा कैरियर मेरे सामने शुरू हुआ जब ये यंगस्टर जिम खाना से खेलते थे। इनके साथ एक ओपनर आते थे केसीसी जोन 4 से, यंगस्टर जिम खाना से, रजी अनवर, वो भी बड़े ज़बरदस्त बैट्समैन थे बाएं हाथ के। वहाँ से इनके कैरियर का प्रोग्रेस हुआ। फिर एक मैच इन्होंने खेला जहाँ इन्होंने मोहम्मद हसनैन के खिलाफ बड़े रन किए। फिर वहाँ से इनको राशिद लतीफ़ ने मलिक जिम खाना में पिक किया और फिर उसके बाद सबने देखा कि खुर्रम मंजूर का कैरियर किस तरह से फ्लरिश हुआ। तो इस किस्म की जो शॉर्ट पिचेज़ हैं या बाउंसर हैं वो खुर्रम के एतमाद को तोड़ नहीं सकती हैं, ख़त्म नहीं कर सकती हैं। जी हाँ, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है इस तरह की बॉलिंग को फेस करने के लिए, लेकिन मुझे लगता है अली कि अपनी पोटेंशियल से कम क्रिकेट खेलेंगे पाकिस्तान के लिए। शायद इनको थोड़ी ज़्यादा क्रिकेट खेलनी चाहिए थी क्योंकि पोटेंशियल और स्किल बहुत मौजूद है। जी हाँ, क्योंकि जो इन पे टैग लग गया, इस तरह मैं पहले भी बात करते एशिया कप में जहाँ इनसे रन नहीं हुए थे, श्रीलंका में जो T20 टूर्नामेंट खेला गया, वो इनके कैरियर पे ऐसा टैग लगा हुआ है कि इसको उन्होंने काफ़ी जो है वो उसको इन्होंने साफ़ करने की कोशिश की, लेकिन लोगों का एक जहन बन गया। वरना इससे उस पूरे टूर्नामेंट में अगर आप देखें तो किसी का भी, इवन इंडिया का भी टॉप ऑर्डर परफॉर्म नहीं कर सका था। इतनी मुश्किल कंडीशन थी, लेकिन उसका जो स्केप गोट बने वो खाली खुर्रम मंजूर बने। लेकिन बड़ी ज़बरदस्त सलाहियतों से मालामाल बैट्समैन है और जब यूनुस खान ने बतौर कप्तान रिकॉर्ड बनाया था, सबसे बड़ी इंडिविजुअल इनिंग खेली 313 रन की। उस टेस्ट मैच में खुर्रम का और सोहेल खान का डेब्यू हुआ। जब श्रीलंकन टीम पर अटैक हुआ उस टेस्ट मैच में 50 के बाद ये नॉट आउट थे। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में इन्होंने अपनी सेंचुरी को सेक्रीफाइस किया, काफ़ी सिंगल्स अपने मिस किए क्योंकि आमिर के साथ ये पाकिस्तान को मैच सेविंग इनिंग खेल रहे थे। आमिर को सामने नहीं लाने देना चाह रहे थे। तो बड़े ज़बरदस्त परफॉर्मर हैं, लेकिन थोड़ा सा ये जो है वो ओवर अंडर शेडो हो गए। यहाँ नो डाउट बहुत ही टैलेंट बहुत मौजूद है खुर्रम में, अब तो एक्सपीरियंस भी बहुत है। ज़्यादा क्रिकेट नहीं खेले और उनके साथ मौजूद है असद शफीक, और इनसे बेहतर तो नंबर 6 का बैटर किसी ने देखा नहीं है। सबसे ज़्यादा रन हैं। जी हाँ, गैरी सोबर्स का रिकॉर्ड ब्रेक किया सबसे ज़्यादा सेंचुरीज का नंबर 6 पर बैटिंग करते हुए सर गैरी सोबर्स। मुश्किलात ज़रूर पैदा कर रहे हैं इरफानुल्लाह शाह क्योंकि लंबे कद के हया में एक्शन है और लेंथ, और वो जो एरिया जिसकी हम बात करते हैं जिसको बॉलर्स पे कंसिस्टेंट रहना चाहिए, ये वाहिद बॉलर नज़र आए हैं जिन्होंने कंसिस्टेंटली उस एरिया में बॉल किया है, उस लेंथ पे बॉल किया है, उस लाइन पे बॉल किया है और सक्सेस हासिल की है। 5 विकेट्स हासिल किए इन्होंने पहली इनिंग में और 1 विकेट हासिल किए यहाँ पे। काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं, अच्छी पेस के साथ बॉल करते हैं, बाउंस भी अच्छा मिलता है। अली, गुज़िश्ता 1-2 माह पहले मेरा खैबर पेशावर जाना हुआ और वहाँ मैंने जो टैलेंट देखा है ना सिर्फ क्रिकेट में बल्कि साथ साथ वहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा एक हॉकी लीग भी हुई, तो बड़ा ज़बरदस्त टैलेंट है जो हमें केपी से हासिल हो रहा है। और अगले आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि एक बड़ा अच्छा टैलेंट जो है वहाँ से सामने आएगा और उसका एग्जीक्यूशन भी हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की टीम में भी आप देखें रिजवान फ़खर जमान जैसे प्लेयर, शाहीन आफरीदी जैसे प्लेयर परफॉर्म कर रहे हैं और मुसलसल चैंपियनशिप भी जो है वो केपी की टीमें जीत रही हैं 31-2 विकेट के नुकसान पर। सर्दियों की गुलाबी शामों का आगाज हो चुका है और आपने एक मिसरा अक्सर सुना होगा अली, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में, लेकिन इसका जो पहला शेर है वो किसी को याद नहीं है, बहुत कम लोगों को पता है। अब क्यों उदास फिरता है सर्दियों की शामों में, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। एहसान अली आउट हुए पहले, साहबजादा फराह ने बहुत शानदार कैच किया। तीसरी स्लिप में इरफानुल्लाह शाह थे बॉलर, 2 रन बना सके। उमर बिन यूसुफ को LBW की, अरशद इकबाल ने 9 रन पर। और अब ये पार्टनरशिप बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप इस पूरे मैच की अगर हम बात करें। अरशद इकबाल अपनी बॉलिंग जारी रखेंगे। अच्छा तेज बाउंसर था जो विकेट कीपर के ऊपर से टप गया, 4 रन मिल जाएंगे तो रन आने चाहिए। और वाइड का इशारा किया यहाँ पे वलीद याकूब की जानिब से, शायद बहुत ज्यादा है था। रिप्ले में देखना होगा, वेस्ट साइड से ऊपर था ये, काफ़ी ऊंचा था ये। खुर्रम मंजूर काफ़ी टॉल हैं लेकिन उसके बावजूद उनके भी सर के ऊपर से गया, तो सही डिसीजन था ये। तो 5 रन का स्कोर में इजाफा हुआ। ये अच्छा प्लॉय हो सकता है खुर्रम मंजूर के लिए, और ऐसे जैसे चलता ही चला गया क्योंकि कदमों का इस्तेमाल कर रहे हैं खुर्रम मंजूर, तो ये बाउंसर एक अच्छी डिलीवरी हो सकती है। चौरासी रन ट्रेल
सिंध की एक बड़ा मार्जिन है। आज अच्छा आगाज़ शुरू किया था सोहेल खान ने, उनका अच्छा साथ दिया मीर हमजा ने। मुझे लगता है कि सोहेल खान को विकेट ज़रूर हासिल की, लेकिन जो बेहतरीन बॉलिंग रही वो मीर हमजा की जानिब से रही, क्योंकि वो वाहिद बॉलर थे जिन्होंने कंसिस्टेंटली अच्छी लाइन और लेंथ पे बॉलिंग की सिंध के लिए। ऑल्दो अनलकी रहे, उतनी विकेट्स हासिल नहीं कर सके जितनी उन्होंने बेहतर बॉलिंग की। एक बार लकी रहे खुर्रम मंजूर, इनसाइड एज हुआ है 4 रन, जी हाँ मिल जाएंगे। तो 9 रन आ गए लकी खुर्रम मंजूर और सिंध के लिए, और खुश होंगे असद शफीक के रन आने चाहिए जैसे भी हैं। बिल्कुल 4 रन का इजाफा हुआ है स्कोर में। इनसाइड एज हुआ था इस मौके पे, ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं थे इस स्ट्रोक पे, लेकिन बहरहाल इस वक्त रन की ज़रूरत है सिंध को और खुर्रम मंजूर को। इस वक्त स्कोर बोर्ड पे रन ये 40 नज़र आ रहे हैं, लेकिन आई थिंक सो कि ये 41 रन होने चाहिए, क्योंकि जब 32 रन पे वाइड बॉल और बाउंड्री हुई थी तो 5 रन हुए थे। तो ये अच्छा तरीका है खुर्रम मंजूर का, एक रिदम तोड़ देता है जब आप बैटर कदमों का इस्तेमाल करता है बॉलर की, उनको लेंथ अपनी चेंज करनी पड़ती है और बहुत तेज़ी से चेंज करनी पड़ती है। और शायद यही वजह है कि जब इन स्विंग को खेल रहे हैं अरशद इकबाल के कदमों का इस्तेमाल से, तो उस तरह का स्विंग हमें देखने को नहीं मिल रहा है जब खुर्रम आते हैं। और जब असद आते हैं जो क्रीज में रह के खेलते हैं, तो आपने देखा कि जब बॉल पिच होकर अंदर की तरफ आया, LBW अपील हुई, तो शायद अपने फुटवर्क को थोड़ा बेहतर करना होगा असद को, स्पेशली अरशद इकबाल के अगेंस्ट जो पढ़ने के बाद इन स्विंग आ रहा है उसको निगोशिएट करना होगा। डिफरेंस है वो ये है कि खुर्रम अच्छी फॉर्म में है, जबकि असद की अभी फॉर्म नहीं लगी हुई। ये डिफरेंस अभी तक नजर आया है दोनों की बैटिंग में। और काफी तेज थ्रो थी यहाँ पे आसिफ आफरीदी की, लेकिन अच्छा यहाँ पे बैकअप किया था, मुसद्दिक वहां पे मौजूद थे। असद शफीक एक ऐसे प्लेयर है कि जब अगर उनकी फॉर्म वापस आ जाए तो मुश्किलात का बाइस बन सकते हैं मुखालिफ टीम के लिए। और अभी चूंकि उनकी फॉर्म नहीं है, इसलिए आप देखें कि थोड़ा सा शेकी नज़र आ रहे हैं। अपील्स भी हुई हैं उनके खिलाफ, थोड़ा सा स्ट्रगल भी किया उन्होंने शॉर्ट पिचेस पे, ऑफ पिच भी खेले। यहाँ कॉन्फिडेंस की थोड़ी कमी है, लेकिन वो ऐसे प्लेयर हैं जैसे आपने कहा कि उनको ज़्यादा देर नहीं लगेगी, एक अच्छी इनिंग, कुछ स्ट्रोक्स जो मिडल ऑफ द बैट जाएं तो फॉर्म वापस आ सकती है, क्योंकि क्वालिटी मौजूद है, टैलेंट मौजूद है, स्किल मौजूद है, टेम्परामेंट मौजूद है, करेज मौजूद है। बस वो राइट टाइम पे एग्जीक्यूट करने की बात, और ये राइट टाइम है। आई थिंक इससे इंपॉर्टेंट इनिंग नहीं होगी असद के जो रिसेंट पास्ट हिस्ट्री में देखें। वैसे तो बहुत शानदार इनिंग्स खेली है पाकिस्तान के लिए, लेकिन सिंध की साइड के लिए ये इंपॉर्टेंट इनिंग है। सिंध की साइड के लिए भी और उनके अपने कैरियर के लिए भी। पाकिस्तान की टीम से ड्रॉप हुए हैं और लाइव टेलीकास्ट ये मैच हो रहा है, तो इनके कैरियर को भी रिवाइव करने के लिए इनिंग काफ़ी ज़रूरी है, और यहाँ से इनको दिखाना होगा अपनी क्लास को। अच्छा सेटअप है अरशद इकबाल के जानिब से, ये सिर्फ इन स्विंग के लिए खेल रहे हैं। 13 अगस्त का इख्तिताम हुआ 41 पर 2 सिंध। इस वक्त हेलमेट भी है, ग्लव्स भी है, बॉल भी है, बैट नहीं है, और यही बैट नहीं चल रहा है इस वक्त ग्राउंड में। वही बैट मिस है जो इस वक्त ग्राउंड में नहीं चल रहा है। हाँ बिल्कुल सही एग्जांपल दिया आपने कि बैट चलना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी ट्रेल काफी है। यहाँ पे मेन डिस्ट्रॉयर जो थे पहली इनिंग के आसिफ आफरीदी को लाए गए हैं बॉलिंग करने के लिए। शायद वो जानते हैं कि खुर्रम मंजूर कंफर्टेबल नहीं रहते हैं लेफ्ट आर्म स्पिन के लिए। पहली इनिंग में अगर आपको याद हो तो एक अंदर आती हुई बॉल को कट मारने चले गए थे और अपनी विकेट गंवाई थी खुर्रम मंजूर ने। आसिफ आफरीदी 109 विकेट्स हासिल किए हैं 32 मैचों में, 7 बार 5 खिलाड़ी आउट कर चुके हैं। बेस्ट ऑफ 11 विकेट्स हैं, 204 रन देकर एक मैच में। ये अच्छा कंपटीशन हो सकता है खुर्रम के अगेंस्ट इनका।
राउंड विकेट गेन करने का फैसला किया। और आप बात करते हैं खुरम कंफर्टेबल नहीं है। अमूमन जो पाकिस्तानी बैट्समैन हैं आप देखें वो लेफ्ट आर्मर्स के सामने इतने कंफर्टेबल नहीं होते। रंगना हिरात ने पाकिस्तान को काफ़ी डिस्टर्ब किया है। इसके अलावा पॉल हैरिस ने काफ़ी डिस्टर्ब किया है पाकिस्तान की टीम को। तो काफ़ी सारे स्पिनर हैं कि जिन्होंने बहुत ज़्यादा पाकिस्तान को माजी में भी डिस्टर्ब किया हुआ है। जी हाँ, बस थोड़ा सरप्राइज डेफिनेटली मैं हुआ था खुरम मंजूर की जो शॉट सिलेक्शन थी पहली इनिंग में, क्योंकि अभी हमने देखा कि 11,000 से ज़्यादा रन कर चुके हैं, एक्सपीरियंस बहुत मौजूद है। जब आपको मालूम है कि एक लेफ्ट आर्म स्पिनर तेज़ नया बॉल करेगा तो उसका तेज़ी से अंदर आएगा, और ये कट मारने चले गए थे तो कंफर्टेबल तो नहीं थे। वो शॉट सिलेक्शन से मुझे प्रॉब्लम थी कि उस मोमेंट पे वो शॉट शायद सही नहीं थी जो खुरम ने चूज़ की उस बॉल को खेलने के लिए। लेकिन अगर आप उसको इंस्टिंक्ट के लिए खेलते रहेंगे, जितना एक्सपीरियंस उनको मालूम होगा ये बात, बट वो मोमेंट होता है जब आप डिसाइड करते हैं कौन सा शॉट खेलना है। ये बेहतर अप्रोच है। अच्छा दिफाई अंदाज से खेले, गेंद पे बल्ले के वस्त में लाते हुए, उससे काफ़ी एतमाद आया होगा असद शफीक को। एक स्लिप के साथ गेंद करते हुए आसिफ आफरीदी। जहाँ बेहतर यही होगा कि असद जो है वो स्ट्राइक आसिफ आफरीदी के अगेंस्ट अपने पास रखें, क्योंकि असद स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलते हैं। मिडिल ऑर्डर बैटर जो भी होता है 5वें 6ठे वाला, पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा खिदमत है असद की, तो ये बेहतर तरीके से निगोशिएट कर सकेंगे रादर देन एक ओपनर के। तो उनकी कोशिश ये होनी चाहिए कि खुद निगोशिएट करें। शायद ये चाय के वक्फे से पहले आखिरी बॉल होगी जिसे दफाई अंदाज से खेलें। और इम्तियाज़ इकबाल विकेट्स की तरफ जाते हुए, जी हाँ यहाँ पे बेल्स उन्होंने उखाड़ फेंकी हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे दूसरे दिन चाय का खेल, चाय के वक्फे का टाइम हो गया। 42 रन बनाए हैं सिंध ने 2 विकेट्स गवा के। जी हाँ, चाय का वक्फा हुआ, इस वक्त सिंध स्ट्रगल कर रहा है, 78 रन के खसारे में। और अब पहली कोशिश ये होगी कि चाय के वक्फे के बाद अब इनको सेशन टू सेशन और इनको आवर टू आवर खेलना होगा कि 1 घंटे तक कोई विकेट ना गिरने दें। हालांकि चाय के वक्फे के बाद का जो सेशन है वो किसी भी टीम के लिए मुश्किलात का बायस बनता है। कराची की चूँकि सी ब्रीज चलना शुरू होती हैं, ये कि आप देख सकते हैं जो ट्रेडिशनल क्लॉक है जो अमूमन स्टेडियम्स पे नस्ब होती हैं, बेल्स को डिसलॉज किया हुआ है टिम्बर स्पेस है और स्ट्रगल कर रही है यहाँ पे सिंध की टीम। जी हाँ, मैच समरी पे अगर हम नजर डालें तो पहली इनिंग में 145 रन बना सके थे सिंध के साइड। असद शफीक टॉप स्कोरर थे। इरफान उल्लाह शाह ने 5 विकेट्स हासिल किए 43 रन देकर, और उनके जवाब में 265 रन 9 विकेट्स पे डिक्लेयर कर दिया। सोहेल खान ने 5 विकेट्स हासिल किए, मुसद्दिक ने 75 रन बनाए। और अब सिंध की साइड 42 रन पर 2 खिलाड़ी आउट। खुर्रम मंजूर 14 रन पर मौजूद हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप बिल्ड होती हुई खुर्रम मंजूर और असद शफीक के जानिब। अभी जो ट्रेल है जैसे आपने जिक्र किया कि 78 रन की है, पहले इनको 78 रन पूरे करने होंगे और उसके बाद लीड का सोचना होगा। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम हमारे हाथ में। यहाँ पे अब चाय का वक्फा है स्टेट बैंक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। हम आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर होंगे एक वक्फे के बाद। या उससे पहले हम विकेट्स पे नजर डाल लेते हैं। ये पहले आउट होने वाले खिलाड़ी थे एहसान अली। उसके बाद उमैर बिन यूसुफ, बहुत ही शानदार डिलीवरी पढ़ने के बाद तेजी से अंदर आया, कोई मौका नहीं उमैर बिन यूसुफ के लिए कि इसको रोक सके। तो अब हम एक वक्फा लेते हैं, आपकी खिदमत में एक बार फिर पेश हाजिर होंगे।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दफ़ा फिर अपने तमाम नाज़रीन को खुश आमदीद कहते हैं। जब तक की सूरत हाल रही से ग्राउंड पर कि जहाँ पे सिंध ने पहले बैटिंग करते हुए 145 रन बनाए और केपी ने 265 रन बनाए 9 विकेटों के नुकसान पर, और जवाब में अब सिंध 42 रन बनाने में कामयाब हुई 2 विकेटों के नुकसान पे। खुर्रम मंजूर इस पर 14 रन के साथ है और उनका साथ देना असद शफीक। गिरने वाली जो विकेट है उसमें एक अरशद इकबाल और एक इरफानुल्लाह शाह ने हासिल की और अभी 78 रन के खसारे में है सिंध की टीम। तो बड़ा इंटरेस्टिंग ये मैच होगा। चाय के वक्फे के बाद अब देखना यह है कि सिंध के दोनों बैट्समैन जो एक्सपीरियंस बैट्समैन है खुर्रम मंजूर और असद शफीक किस अंदाज से अपने इनिंग को जो है वो आगे बढ़ाते हैं और मुश्किलात का बाइस बनते हैं। अहमद सईद ने में ज्वाइन किया। असद शफीक और खुर्रम मंजूर दोनों एक्सपीरियंस क्रिकेटर, पाकिस्तान के लिए बड़ी सर्विसेज हैं बिलखुसूस असद शफीक की, और खुर्रम मंजूर को भी आप राइट ऑफ नहीं कर सकते। बहुत ही ज़बरदस्त बैट्समैन है और पाकिस्तान में जितने भी अब तक डोमेस्टिक T20 टूर्नामेंट्स हुए 17-18 एडिशन तमाम में ही इन्होंने शिरकत की है। अपने एक्सपीरियंस को बरोकार लाना होगा खुर्रम मंजूर को। अहमद सईद, कितनी इंपॉर्टेंट है ये पार्टनरशिप? बेहद। दो तजुर्बेकार खिलाड़ी, सबसे ज़्यादा तजुर्बेकार खिलाड़ी। बहुत ही अहम है कि आज के दिन बग़ैर किसी नुकसान के सिंध जो है वो इस खेल का अख्ताम करे आज, और इन दोनों पे बहुत भारी जिम्मेदारी है क्योंकि इसके बाद जो टैलेंट तो मौजूद है लेकिन एक्सपीरियंस, तजुर्बा मौजूद नहीं है, जो ऐसी सिचुएशन में बड़ा ज़रूरी होता है। मुसद्दिक, असद शफीक, ये बासित अली बल्ला सीधा करवाते हुए, और बड़ा कोचेस का बड़ा रोल होता है। ये ताबिश खान है कि जिनके साथ बासित अली मेहनत कर रहे हैं, बता रहे हैं इनको। बासित अली का खुद भी जो है वो था, जो ड्राइव था वो बड़ा मशहूर था और बड़ा ज़बरदस्त खेलते थे ड्राइव। आपको याद होगा जिन्होंने एम्ब्रोस के खिलाफ शारजा में बैटिंग की वेस्ट इंडियन बॉलर के सामने, उसमें बड़ा एक्स्ट्रा कवर पे इन्होंने बड़े ज़बरदस्त स्ट्रोक खेले थे। दिलेर, निडर और बहुत ही हुनरमंद बैट्समैन अपने ज़माने के। और पहले भी हम अली ये बात कर रहे थे कि न सिर्फ हुनर लेकिन एक शख्सियत इन प्लेयर्स की ऐसी थी कि मुतासिर करती थी नए खिलाड़ियों को। मेरे जैसे ख़ास तौर पे मैंने जब अपनी फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट का डेब्यू किया तो खुशकिस्मती से ये लोग इन्हीं की टीम से मैं सबसे पहले खेला। बासित अली उसमें शामिल थे, आसिम मुश्तबा उसमें शामिल थे, ज़फ़र इकबाल चौधरी थे, राशिद लतीफ़ थे। तो ये बहुत ही हमारे लिए एक अच्छा आगाज़ था। चाय के वक्फे के बाद पहली गेंद दिफा अंदाज से खेले इस गेंद को खुर्रम मंजूर। स्टार स्टडीड टीम होती थी माजी की और यंगस्टर के लिए सीखने को बहुत कुछ मिलता था। जिन प्लेयर्स के आपने नाम लिए, ये अरशद इकबाल जिन्होंने उमर बिन यूसुफ को आउट किया था, बदकिस्मत रहे कि इनकी बड़ी पुरजोर शॉट थी असद शफीक के खिलाफ जिसको अंपायर ने एक्सेप्ट नहीं किया। अच्छे बॉलर हैं कराची किंग्स के लिए भी, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है अरशद इकबाल की। अभी शाहीन के साथ टूर करके आए। दिफा अंदाज से खेलें इस मरतबा। फील्डर वहां पे मौजूद थे, रन बनाने का मौका नहीं मिल सका। 78 रन की बर्तरी अभी भी केपी की सिंध पर। अगर आप बॉलिंग के हवाले से देखें तो तवक्को ये थी कि कराची के बॉलर जो हैं, ये देखिए ये वो LBW की अपील जो असद शफीक के सॉरी ये वो है जिस पे आउट हुए उमर बिन यूसुफ, इसी तरह का कुछ डिलीवरी थी जो कि असद शफीक के खिलाफ अपील थी। बहुत खुशकिस्मत हैं कि अभी तक विकेट पे हैं। बॉलिंग के हवाले से हम ये समझ रहे थे कि कराची के पास जो फास्ट बॉलर्स की सिंध के पास सॉरी जो बैटरी है फास्ट बॉलर्स की, वो ज़्यादा कारआमद साबित होगी इस विकेट पे। लेकिन सुहेल खान और हमज़ा के अलावा जब वो अपना स्पेल ख़त्म करते थे तो मोहम्मद हसनैन और शहबाज धानी उस तरह से जो है वो विकेट को इस्तेमाल नहीं कर पाए और इन दोनों पे काफ़ी बर्डन पड़ गया बॉलिंग का। अंदर आती हुई गेंद, इसको सीधे बल्ले के साथ खेले, काफी अतमाद आया इस स्ट्रोक से खुर्रम मंजूर को। फील्डर गेंद के साथ रेस लगाते हुए और बिलाखिर गेंद तक पहुंचने में कामयाब हुए। 2 रन का इजाफा स्कोर में।
खूबसूरत शॉट ये खुर्रम मंजूर का, फ्रंट फुट पे आए और टाइम किया इस बॉल को, ज़्यादा ज़ोर से मारने की कोशिश नहीं की, सीधा बॉलर के पास से होती हुई बॉल कैप में 2 रन हासिल किए। दराज का खुर्रम मंजूर पंजों के बल उछलते हुए वापस के लिए बॉलर की जाने। ये पार्टनरशिप बड़ी इंपॉर्टेंट है सिंध के नुक्ता निगाह से, कि दोनों ही एक्सपीरियंस बैट्समैन हैं और एक बड़ी परफॉर्मेंस ड्यू है असद शफीक पर। अब तक अपने शाया निशान वो इस सीज़न में परफॉर्मेंस नहीं दे सकें। खुर्रम मंजूर बलूचिस्तान के खिलाफ अनलकी रहे, नर्वस 90s का शिकार हुए। 94 रन किए थे खुर्रम मंजूर ने, और खुर्रम और एहसान ने 199 का ओपनिंग स्टैंड फराहम किया था अगेंस्ट बलूचिस्तान। तो इन फॉर्म है खुर्रम। चवालीस पे 2 सिंध। खुर्रम मंजूर की एक बहुत अच्छी बात मुझे ये लगती है कि वो बड़ी जल्दी अडेप्ट करते हैं विकेट को देख के, अपने खेल को। जहाँ तेज़ खेलने की ज़रूरत होती है वहाँ तेज़ भी खेल सकते हैं, और जहाँ पे विकेट पे ठहरने की और संभल के खेलने की ज़रूरत होती है तो वो भी इनके गेम का हिस्सा है, और यही तजुर्बा फर्स्ट क्लास क्रिकेट का आपको सिखाता भी है। इमरान खान है बॉलिंग के निशान पे तैयार। 10 टेस्ट मैचेस खेले इन्होंने पाकिस्तान के लिए। नो बॉल का सिग्नल अंपायर इम्तियाज इकबाल की जानिब से। नो बॉल देखिए आपने, केपीके के बॉलर जो है वो सिंध के मुकाबले में काफ़ी बेहतर तौर पे इस विकेट को समझे हैं। उस लेंथ को बड़ी जल्दी इन्होंने पिक किया तमाम बॉलर्स ने, और एक जो एज केपीके को हासिल है वो उनकी स्पिन बॉलिंग में आसिफ आफरीदी की परफॉर्मेंस है, जिसकी कोई तवक्को नहीं कर रहा था, लेकिन ना सिर्फ बड़ी अच्छी उन्होंने बॉलिंग की बल्कि बैटिंग में भी भरपूर अपनी टीम के लिए उन्होंने हिस्सा डाला है। अच्छे यूटिलिटी प्लेयर हैं आसिफ आफरीदी। ये इमरान खान, और अपने गुज़िश्ता स्पेल में मैं तस्करा कर रहा था इमरान खान के हवाले से कि इन्होंने अपना जो पहला टेस्ट का रन लिया था वो 15वीं इनिंग में जाके लिया था। 10 मरतबा इनकी बैटिंग नहीं आई, 2 मरतबा ये 0 पे आउट हुए, 2 मरतबा ये 0 पे नॉट आउट रहे, सामने ही नहीं आ सके, और 15वीं इनिंग में फिर इन्होंने रन लिया। 16वीं 17वीं 18वीं इनिंग में फिर रन नहीं बना सके, और फिर 19वीं इनिंग में जाकर रन बनाया। ये एक ऐसा स्टैट है मेरे ख्याल से जो जिसका जिक्र इमरान खान को खुद पसंद नहीं होगा ज़्यादा। बैकफुट पे गए, कवर्स में खेले, फील्डर मौजूद थे वहाँ पे, रन नहीं मिल सकेगा। और जब मैंने इमरान खान को स्टैट बताया एक इंटरव्यू में, तो मैंने इनको मुतमईन करने के लिए जुएल गार्डनर का स्टैट भी बताया कि मैंने कहा जुएल गार्डनर ने 5 जून 1980 से लेके 19 अगस्त 1984 तक सेकंड इनिंग में कोई रन नहीं बनाया था, और इसकी वाहिद वजह यह थी कि वेस्ट इंडीज़ की बैटिंग उस वक्त इतनी मजबूत थी कि वो एक इनिंग से जीत जाते थे, या अगर दूसरी इनिंग में बैटिंग आती भी थी तो फिर जो टेल एंडर्स की बैटिंग नहीं आती थी, इसीलिए फिर जुएल गार्डनर ने सेकंड इनिंग में कोई रन नहीं बनाया। मैं भी अंग्रेज़ी कमेंट्री के दौरान ये जिक्र कर रहा था कि आजकल वनडे क्रिकेट की ज़्यादती की वजह से बैटिंग जो है वो काफ़ी जो बॉलर्स भी हैं उनको भी बैटिंग का शौक हो गया, और वो काफ़ी इम्प्रूव कर गए हैं बैटिंग। तो आजकल कॉटनी वॉल्श और मैग्रॉ जैसे टेल एंडर जो है वो कम नज़र आते हैं आपको।
और लेकिन मैं इससे डिसएग्री करूंगा। अहमर, आप खुद भी बड़े ज़बरदस्त बैट्समैन थे और बड़े ज़बरदस्त आप क्रिकेटर थे। अनलकी रहे कि आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट नहीं कर सके, लेकिन पाकिस्तान अंडर 19 को आपने लीड किया। मैं इस बात से आपसे डिसएग्री करूंगा, क्योंकि जितना शौक बॉलर्स को बैटिंग का होता है इतना शायद बैट्समैन को भी नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया है। नेट पे और सीज़न के दौरान अगर आप देखें तो बॉलर से जब आप कहें प्रैक्टिस करने को तो वो कहते हैं कि जी मैं बैटिंग कर सकता हूँ कि नहीं। तो ये बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। अच्छा लेफ्ट किया खुर्रम ने। और अहमर, आपका एक्सपर्ट ओपिनियन हम जानना चाहेंगे कि इस मौके पे कि जब टी के बाद कराची में सी ब्रीज चलना शुरू होती हैं, अब्दुल रहमान बड़े ज़बरदस्त कोच हैं, मुल्तान सुल्तान के साथ भी रहे, केपी को काफ़ी टाइटल जितवाए, कोयटा के साथ भी रहे, बलूचिस्तान के साथ भी रहे, काफ़ी सीजन कोच हैं और चूँकि नेशनल सेलेक्टर भी हैं, इसलिए आप देख सकते हैं। अब ये नहीं पता कि इन शेड्स के पीछे ये आंखें खुली हैं या बंद हैं, लेकिन ये तो खैर एक लाइटर नोट पे हमने बात की। लेकिन अब्दुल रहमान बहुत ही ज़बरदस्त कोच है। और हम बात करते हैं कि बॉलर्स को बड़ा शौक होता है बैटिंग का। आपने थोड़ी देर पहले देखा कि ताबिश खान बड़ी ज़बरदस्त प्रैक्टिस कर रहे थे। बहुत ही अहम सेशन ये सिंध के लिए, न सिर्फ इसलिए कि रन्स उनको लीड उतारनी है, बल्कि इसलिए कि ये जो आखिरी जोड़ा है तजुर्बेकार इस वक्त विकेट पे मौजूद है। अगर इनमें से कोई भी एक आउट हो गया तो नए आने वाले खिलाड़ियों के पास वो तजुर्बा मौजूद नहीं है इस सिचुएशन से निकल सके। नए खिलाड़ियों के लिए एक मौका भी होता है ये ज़रूर, लेकिन मुश्किल हो जाती है बगैर तजुर्बे के। दिफाई अंदाज से खेले खुर्रम, ओवर अपने अख्ताम को पहुंचा। अगली ओवर में हम एक चीज़ डिस्कस करेंगे अहमर आपसे, क्योंकि पहले जब खुर्रम मंजूर खेलते थे तो बहुत ज़्यादा शेकी नज़र आते थे। गेंद खेलने के बाद अपने पैर से बल्ले को ज़ोर से मारते थे, विकेट से दूर हटके जो है वो ज़ोरों से बल्ले को अपने झुलाते थे। लेकिन इस मरतबा मैं इनको ये देख रहा हूँ कि शायद इन्होंने अपने बर्ताव में कोई तब्दीली लाई है। हम इस ओवर में ज़रूर और रीचेक करेंगे। आपको याद होगा कि जिस अंदाज से ये अगर कोई बॉल इनसे मिस होती थी तो बल्ले को बहुत ज़ोर से पैड्स पे मारते थे ये, लेकिन इस मरतबा इनको देख रहा हूँ कि इनका इस तरह का जो है वो एटीट्यूड है वो नज़र नहीं आ रहा है। तो मैं समझता हूँ कि जो एक मैसेज इससे बॉलर को जाता था कि बॉलर पे हावी हो रहा है, शायद उसको इन्होंने किल करने की कोशिश की है। काफ़ी क्लोज कॉल थी, काफ़ी क्लोज कॉल थी। इस मौके पे विकेट गिरना ये मैच गंवाने के मुतरादिफ हो सकता है। इस तरह के रन लेने से गुरेज किया जाए तो बेहतर होगा। देखिए अगर ये डायरेक्ट ठोकती तो भारी नुकसान हो सकता था सिंध की टीम को। बहुत इंपॉर्टेंट है खुर्रम का और असद का रहना सिंध के नुक्ता निगाह से, लेकिन साथ साथ दाद देनी होगी मुसद्दिक को उनकी उम्दा फील्डिंग पर। इस टूर्नामेंट इस इवेंट में मुसद्दिक और बिलखुसूस इस मैच में मुसद्दिक काफ़ी लाइवली रहे। ये इफ्तिखार हैं कप्तान केपी के। तकरीबन 10 से 12 चीज़ें होती हैं अंपायर के पॉकेट में, रेगमाल, कैंची और काउंटर, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कपड़ा होता है खुश करने के लिए बॉल को, तो 10 से 12 चीज़ें तकरीबन अंपायर के पास होती हैं। यहाँ गेज भी इनके पास होते हैं बॉल को नापने के लिए, बल्ले को नापने के लिए। तो बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने, काफ़ी चीज़ें कैरी करनी पड़ती हैं आजकल अंपायर को। तो अंपायर का मलमारी ज़्यादा है, काफ़ी चीज़ें इनके पास होती हैं। और ये इम्तियाज़ इकबाल हैं ये, और बड़ा एक ऐसी जॉब है ये कि जो बहुत ज़्यादा डेडिकेशन मांगती है। और पाकिस्तान बड़ा लकी है कि पाकिस्तान में बड़े अच्छे अंपायर्स आ रहे हैं। ये अंपायर वलीद हैं, पाकिस्तान में बहुत ज़बरदस्त अंपायर हैं। पाकिस्तान के अंपायर्स ने दुनिया भर में अपना नाम रोशन किया और इस सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाया अलीम डार, एहसन रज़ा जैसे अंपायर्स ने। मसरूर
असिस्टेंट कोच, उनके साथ मौजूद है मीर हमजा और फराज अली। शॉर्ट बॉल थी, इसको निकालने में कामयाब हुए फाइन लेग के जानिब, 1 रन का मजीद इजाफा। ये मुसद्दिक जिन्होंने केपी के लिए बड़ी उम्दा बैटिंग की और अभी उनकी थ्रो पे बाल बाल बचे खुर्रम मंजूर रन आउट होने से। ये शाहनवाज धानी, शाहनवाज धानी और फिर उनके साथ पानी। दोनों जो खिलाड़ी इस वक्त मौजूद हैं, असद और खुर्रम, विकेट पर। जैसा मैंने जिक्र किया जब हमने क्रिकेट शुरू की थी तो बासित अली, आसिम मुश्तबा जैसे खिलाड़ी टीम में मौजूद थे, वही हैसियत इस वक्त इन दोनों खिलाड़ियों को इस टीम में हासिल है। और उसी तरह का किरदार इनको अदा करना होगा नए आने वाले खिलाड़ियों के लिए, मेंटोरिंग का, उनको सिखाने का, उनको हौसला देने का। जिस तरह बात करते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें अंपायर के पास होती हैं, 10 से 12 चीज़ें अंपायर के पॉकेट में मौजूद होती हैं। कंसंट्रेशन का खेल है सारा अंपायरिंग का। ज़रा से आप कंसंट्रेशन लूज हुई, और अंपायर को भी माजी में उमर रसीदा अंपायर काफ़ी होते थे, लेकिन अब जिस तरह हेयरिंग टेस्ट होते हैं, अंपायर के आई साइड के टेस्ट होते हैं, तो अंपायर का भी मेंटली और फिजिकली फिट रहना बड़ा ज़रूरी है। ये इतना ही फिट होना ज़रूरी है जितना कोई कॉकपिट में मौजूद पायलट, कि पूरा कंट्रोल उसके हाथ में, इस पूरा खेल का कंट्रोल इन दो अंपायर्स के हाथ में। इनका एक गलत फैसला किसी भी प्लेयर्स की कारकर्दगी को ख़राब कर सकता है, तो इसलिए अब तक बड़ी ज़बरदस्त जो है हमने देखा है। कहीं कहीं जाहिर सी बात है ह्यूमन एरर है, अंपायरिंग में डिसीजन आ जाते हैं, वरना ओवरऑल अगर हम देखें तो इस सीज़न में अंपायरिंग का स्टैंडर्ड बड़ा ज़बरदस्त रहा है। बिल्कुल वजह फरमाया आपने। और अगर आपकी बड़ी निगाह क्रिकेट पे एक बहुत अरसे से है, अगर आपने पहले के मैचेस अगर आपको याद हो, तो अंपायर्स हमारे ज़माने में या काफ़ी बादशाह हुआ करते थे वो ग्राउंड में। अब भी ज़ाहिर है होल एंड सोल डिसीजंस अंपायर्स ही लेते हैं, लेकिन उन पर अब चेक बैलेंसेस बहुत हैं। बोर्ड ने बड़ा काम किया है उनके ऊपर। शाहनवाज धानी एक बार फिर आपकी स्क्रीन पर बॉल से खेलते हुए अपनी ग्रिप को और मश्क करते हुए उसकी। तो अंपायर्स जो हैं वो उस पर बड़ा काम पीसीबी ने किया है। अब बड़े रेगुलर उनके जो है वो मीटिंग्स होती हैं और कोर्सेज होते हैं, जिसमें उनको अप टू डेट रखा जाता है तमाम तर चीज़ों से। और एक बड़ा अच्छा निज़ाम जो है वो प्रमोशन डिमोशन का भी अंपायर्स और मैच रेफरीज का अब है, जिसकी वजह से काफ़ी मेयार अब बेहतर हुआ है अंपायरिंग का भी। और ऐसा नेक्स्ट ज़माने मुझे याद है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बड़ा अच्छा एक स्टेप लिया था कि पाकिस्तान के अंपायर जो थे, 2 अंपायर एहसन रज़ा और एक और अंपायर जो थे, वो श्रीलंका के डोमेस्टिक सीज़न में जाके अंपायरिंग कर रहे थे। और उनके एक अंपायर थे होटका चीची, वो यहाँ पर आके अंपायर करे थे, और 2 अंपायर उनके यहाँ पे सीज़न में थे। उसके बाद फिर ये सिलसिला थोड़ा सा रुक गया, लेकिन ये बड़ा अच्छा एक एक्सपीरियंस था कि हमारे डोमेस्टिक अंपायर्स को मज़ीद ग्रूम होने का मौका मिलता था। इसी तरह मुझे याद है जिस ज़माने में रमीज़ राजा अंडर 19 खेलते तो ज़माने ग्रेट क्रिकेट का आगाज़ हुआ था, तो पाकिस्तान के प्लेयर्स जाके ग्रेट क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया में खेलते थे। उसमें इकबाल सिकंदर और रिजवानुज़्ज़मा जैसे प्लेयर जाके खेले ग्रेट क्रिकेट। तो एक अच्छा एक स्टेप था ये, पाकिस्तान के यंगस्टर्स को मौका मिलता है डोमेस्टिक में जाके खेलने का। यकीनी तौर से एक इब्तदाई मरहले में अपने करियर के जितना ज़्यादा एक्सपोजर आपको अच्छी क्रिकेट का मिले और मुख्तलिफ़ जगहों पे खेलने का, मुख्तलिफ़ तरह के बॉलर्स को फेस करने का और मुख्तलिफ़ बैट्समैनों को बॉल करने का जितना उस मरहले में मौका मिलता है, आप उतना ही ज़्यादा सीखते हैं और उतना ही ज़्यादा जल्दी से आप मंचते हैं।
बैकफुट पे गए इस मरतबा। और माजी में जब रमीज राजा साहब CEO थे तो उस ज़माने में शायद आप भी उन अकेडमीज़ का हिस्सा होंगे कि अकेडमीज़ लगाई जाती थी और ना सिर्फ उसमें क्रिकेट सिखाई जाती थी बल्कि उसमें कंप्यूटरी क्लासेस भी होती थी और कन्वर्सेशन किस तरह की जाती है, खाने पीने के जो मैनर्स हैं, ये सब चीज़ें उस एकेडमी में सिखाई जाती थी। तो वो भी एक बड़ा अच्छा स्टेप था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का। जी, अंडर 19 लेवल पे भी मुझे याद है इसी तरह की इनिशिएटिव्स लिए गए थे, ख़ास तौर पे खाने के मैनर्स, किस तरह से आप बात करें लोगों से, मीडिया को किस तरह आप हैंडल करते हैं। ये मैं उसी एकेडमीज़ की बात कर रहा हूँ, मेरे ख्याल में आप होंगे इस वक्त अंडर 19। बिल्कुल, ये उन्हीं दिनों की बात है। बिल्कुल, ये बड़ा ज़रूरी है आजकल, ख़ास तौर पे आजकल जबकि ये मीडिया का प्रेशर, सोशल मीडिया आने के बाद ये सब टैकल करना, हैंडल करना हर खिलाड़ी को मेरा ख्याल से अब उसके करियर का एक बहुत अहम हिस्सा है और उनको आना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से उन अकेडमीज़ में प्लेयर्स पे काम किया था, हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में फिर आगे चल के उन्हीं प्लेयर्स ने पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा सर्व किया। इमरान खान अपनी बॉलिंग जारी रखेंगे और बिल्कुल उमर गुल के इस अंदाज में इनका जो बॉलिंग का रनअप है, जिस अंदाज से गेंद को डिलीवर करते हैं, जिस तरह जंप करते हैं, अगर हम फ्रंट से देखेंगे तो ऐसा लगता है, माजी में तो और ज़्यादा रिजेम्बलेंस थी, लेकिन बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कि उमर गुल गेंद लेके दौड़ रहे हैं। आपने तो फेस किया होगा उमर गुल को। यहाँ कई बार फर्स्ट क्लास क्रिकेट में से सामना हुआ और एक जाने माने ख़ास तौर पे T20 क्रिकेट में जो उनके वर्ल्ड कप के दौरान एक्सप्लॉइट्स थे, वो कौन भूल सकता है। बहुत ही शानदार बॉलर, बड़े मेहनती बॉलर और हमेशा अपनी टीम के लिए खेलने वाले खिलाड़ियों में से एक। ICC ने भी उस कारकर्दगी को जिसका आप तस्करा कर रहे हैं रिकग्नाइज किया। काफ़ी देर से खामोशी है बैट्समैन की जानिब से। प्रेशर में रखा हुआ है सिंध के दोनों बैट्समैन को। ओवर मुकम्मल हुआ 49 पर 2। बॉलिंग का अगर हम तज्जिया करें तो सिंध के बैटर्स पर KPK के बॉलर्स ने मुस्तकिल एक प्रेशर रखा हुआ है। ये दोनों पैर जब हटता है तो अगले आने वाले बॉलर्स भी जो हैं वो उस दबाव को बरकरार रखते हैं। इवन स्पिनर भी हमने देखा, आसिफ आफरीदी का हमने जिक्र किया, वो भी न सिर्फ दबाव को पहली इनिंग में उन्होंने बरकरार रखा बल्कि दबाव में लेके आए मज़ीद टीम को विकेटें हासिल करके। और इसके बरक्स सिंध की टीम में हमने देखा जब ख़ास तौर पे सुहेल और मीर हमज़ा का स्पेल ख़त्म होता था तो वो दबाव हट जाता था। इस मरतबा गेंद को एंगल करने में कामयाब हुए और गेंद 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर शॉर्ट बॉल की थी, थोड़ा सा विवर्ड हुए। और इस तरह मैंने पहले कहा कि इस किस्म की जो गेंदें वो बैट्समैन पे से प्रेशर को ख़त्म कर देंगी। शॉर्ट पिच पे शॉर्ट बॉल में काफ़ी कॉन्फिडेंट है खुर्रम मंजूर, और जो कि बुनियादी तौर पर ओपनर है तो इस किस्म की गेंदें खेलना उनके लिए कोई मसला नहीं। तो 4 रन का इजाफा स्कोर में। यहाँ उनके रिप केज के एरिया में ये बॉल थी, ये देखिए आप, थोड़ी पीछे गिरी हुई, अंदर आई, बहुत ही अच्छी तरह से उसको लेट खेला और फाइन खेलने में कामयाब हुए। हालांकि फाइन लेग पे फील्डर मौजूद है लेकिन वो इस बॉल को रोक ना सके, 4 रन हासिल की। मजीद 2 रन का इजाफा हो जाएगा स्कोर में। गेंद आने का इंतजार किया था गुज़िश्ता स्ट्रोक में जब बाउंड्री हासिल की थी खुर्रम मंजूर ने। ये पार्टनरशिप अगर मुस्तहकम हो गई तो ये मैच मजीद इंटरेस्टिंग हो जाएगा। दूसरे दिन की दूसरी इनिंग के दूसरे सेशन का दूसरे दिन का खेल आप समाअत फरमा रहे हैं और देख रहे हैं। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में तकरीबन 22,000 रनों के तजुर्बे का निचोड़ इस वक्त पिच पे मौजूद है सिंध के लिए। और आज
तमाम तजुर्बा बरूए कार लाते हुए उनको एक मुश्किल सूरत हाल से निकालना है टीम को। फिर ज़बरदस्त कैमरा वर्क आपने देखा, हमारी प्रोडक्शन टीम बड़ी क्रेजी के साथ, बड़ी जान फिशानी के साथ स्टेट बैंक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खेले जाने वाले मैचेस को आपकी बसारतों की नज़र कर रही है कि जहाँ पे एक एक लम्हे को जो है वो आप तक पहुँचाया जा रहा है, और कोशिश यही होती है कि कोई भी मोमेंट जो है वो मिस ना हो, चाहे वो इंटरेस्टिंग हो, चाहे वो फनी हो, चाहे वो क्रिकेट के लिहाज से हो। सॉफ्ट हैंड के साथ खेले खुर्रम, 3 स्लिप एक गली के साथ गेंद कर रहे हैं अरशद। लेकिन स्कूल कॉलेजेस के ऑफ होने के बाद स्टूडेंट्स भी इस मैच को एंजॉय कर रहे हैं, अपने स्टार्स को एक्शन में देख रहे हैं। स्टार स्टडेड मैच है ये, काफी सारे स्टार्स हैं। असद शफीक, शाहनवाज धानी, खुर्रम मंजूर की सूरत में, इफ्तिखार की सूरत में, विकेट कीपर हारिस, राइजिंग स्टार विकेट कीपर हारिस। ये अच्छा ओवर है ये सिंध के नुक्ता निगाह से, इसमें बाउंड्री भी हासिल हुई, डबल भी हासिल हुए और सिंगल भी। और जब बासित अली से हमारी बात हो रही थी, जब पहली इनिंग की बैटिंग जारी थी केपी की, तो उन्होंने कहा था अगर 100 रन की भी लीड होगी उसके बावजूद भी ये मैच हम गिव अप नहीं करेंगे और ये मैच बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। ये बासित अली कि जिन्होंने अंडर 19 में कासिम उमर का रिकॉर्ड ब्रेक किया था, 188 रन की इनिंग खेली थी गुजरावाला में, कि जब रामदास की अंडर 19 टीम पाकिस्तान आई थी और उस टीम में जडेजा जैसे प्लेयर मौजूद थे, परंजापे जैसे प्लेयर मौजूद थे, नायन मुंगिया जैसे प्लेयर मौजूद थे, आशीष मिस्टर जैदी, अकरम कादरी। इस मरतबा 4 रन हासिल कर जाएंगे असद शफीक। तो बड़ा अच्छा ओवर है ये सिंध के नुक्ता निगाह से, और काफी रन इस ओवर में आए, 2 बाउंड्रीज भी हासिल हुई। इस बार मौका मिला ने बाजू खोलने का असद शफीक को, ऑफ स्टंप की काफी बाहर बॉल थी ये देखिए, और हवा में गया थोड़ा सा ये, लेकिन गैप में उनकी खुशकिस्मती, 4 रन हासिल किए। मैं अंडर 19 टीम की बात करता है, इंडियन टीम्स का मैंने बताया, पाकिस्तान की टीम में बड़े ज़बरदस्त प्लेयर थे। बासित अली खुद पाकिस्तान के लिए स्टार बने, फिर इसके बाद वकार यूनुस उस सीरीज़ में अंडर 19 खेले, इसके अलावा आगा जावेद सक्खर से थे जो अंडर 19 खेले, फिर मोइन खान उससे सीरीज़ से निकल के सामने आए, मुश्ताक अहमद उस सीरीज़ में थे, इंजमाम आखिरी मैचेस खेले उस सीरीज़ के, तो बड़ी अच्छी अंडर 19 थी। जहूर इलाही भी खेले उस सीरीज़ में, हालांकि जहूर इलाही उससे पहले अंडर 19 यूथ वर्ल्ड कप में बासित अली के कप्तान थे, तो बड़ी अच्छी अंडर 19 टीम थी। कुछ अंडर 19 टीम्स ऐसी होती है इससे बड़े स्टार्स सामने आते हैं। और कुछ अंडर 19 से स्टार्स मिस हो जाते हैं, जिनको ज्यादा मौके नहीं मिल पाते। इसी तरह ये एहसान अली, उनके साथ हनीफ मलिक। सुबह में तस्करा करा था हमारे कैमरामैन है, बड़ी रिजेम्बलेंस, अगर दोबारा दिखा सकें, अभी हमने एहसान अली को दिखाया, और अगर हम अपने कैमरामैन को दिखा सकें तो ऐसा लगता है कुंभ के मेले में बिछड़े 2 भाई हैं। हनीफ मलिक का गुफ्तगू करते हुए खुशगवार मूड में नजर आ रहे हैं दोनों। ये हैं वो, अगर ये मास्क उतार दे तो आपको नजर आएगा, ये नहीं देखें। वाकई में सही कह रहे हैं आप, काफी मिलते जुलते और ये क्रिकेट की खूबसूरती है कि छोटी छोटी चीजों में नजर रखनी पड़ती है ताकि इंटरेस्ट लोगों का बरकरार रहे। आसिफ आफरीदी हैं यहाँ। तो आपने एक बड़ी अच्छी चीज देखी होगी, ये तो मैं लेटर नोट पे बात कर रहा था, लेकिन आपने एक बड़ी अच्छी चीज देखी होगी कि हमारी जो प्रोडक्शन टीम है वो एसओपीज का भी पूरा ख्याल रखे हुए। जी हाँ, इस कोविड के इस दौर में बहुत ही अहम हिस्सा है ये अब हमारी ज़िंदगियों का। इसका ख्याल रखना और एहतियात करना वाहिद हल है इस बीमारी से लड़ने का।
ऑफ से बाहर गेंद थी, इसको आसानी के साथ लेफ्ट किया खुर्रम ने। पूरी तरह से फोकस नजर आ रहे हैं खुर्रम मंजूर। उनको एहसास है कि उनका इस मौके पे पिच पे मौजूद रहना सिंध के लिए, उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। अमूमन जानवरों को और परिंदों का क्रिकेट ग्राउंड से बड़ा गहरा ताल्लुक है। अक्सर हम मनाजिर देखते हैं कि ग्राउंड में परिंदे या जानवर हमें नजर आते हैं। अलेक्जेंडर एक बिल्ली थी जिसका क्रिकेट की बाइबल विजडन में जिक्र है। वो लॉर्ड्स के ग्राउंड पे थी और जब उसकी जब मौत हुई तो उसका विजडन में उसका जिक्र 1964 में लॉर्ड्स के ग्राउंड पे वो बिल्ली मौजूद होती थी। ओह, इस मरतबा शॉर्ट बॉल थी, एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे खुर्रम। क्रीज से काफी आगे खड़े होके खेल रहे हैं और यही देखते हुए मेरे ख्याल से इमरान ने पीछे उनको बॉल किया और नजर हटा ली थी। अच्छा बाउंसर था ये, बड़ा बिल्कुल सही जगह पर, उनके शोल्डर के थोड़ा सा ऊपर। वेल डायरेक्टेड जिसको कहते हैं, उनको नजर हटानी पड़ी आखिर में। खुशकिस्मती रही कि बॉल जो है वो हवा में नहीं गई उनके बल्ले से लगकर। और मुझे याद है कि जब खुर्रम ने नई अपनी क्रिकेट का आगाज़ किया था और ये पीआई के खिलाफ खेल रहे थे तो एक बाउंसर इनके लगा था फजल अकबर का, और बड़ा ख़तरनाक तरीके से इनको वो बाउंसर लगा था। वरना अमूमन जो है खुर्रम बड़ा अच्छा हुक और पुल करते हैं। अच्छा कम बैक किया, यहाँ पे अंदर आए इस मरतबा, पहले पिछले कदमों पे उछाला और इस मरतबा विद इन द स्टंप्स गेंद की। अच्छी स्ट्रेटेजी है यहाँ इमरान की जानिब से, जो काफ़ी एक्सपीरियंस बॉलर बन गए। बर्तरी सिर्फ 60 रन की रह गई है। एमर सईद क्या एक्सपेक्ट करता है बाउंसर खेलने के बाद बैट्समैन? नेक्स्ट बाउंसर या यॉर्कर? डिपेंड करता है विकेट पे फॉलो अप बॉल तो उसको थोड़ा सा आगे ही बनती है, जाहिर है, क्योंकि एक बार जब बाउंसर आप करते हैं तो बैट्समैन के दिमाग में ये ज़रूर होता है कि आप अगला भी बाउंसर कर सकते हैं, तो वो बैक फुट पे ज़्यादा उसका वज़न होता है और आगे वाली बॉल खेलने में थोड़ी मुश्किल ज़रूर होती है। उस पर दबा तैयार थे और गेंद को ज़्यादा बाउंस भी नहीं मिला। डीप स्क्वायर लेग पे फील्डर पहुंचे हैं गेंद को फील्ड करने के लिए अरशद इकबाल। वो 61 2 विकेटों के नुकसान पर। $61 for 2, Sindh. A very solid partnership progressing with every delivery. This is what Sindh wanted. Khurram Manzoor on 25, Asad Shafiq on 15. A much needed partnership from Sindh side. I've got Shah Faisal alongside me. This is what Sindh would hope and expect from these two experienced batters. As we see Asif Afridi now coming to ball. Definitely, these two will have to lead the way. So far, so good. Different challenge in the form of Asif Afridi. They would think that they've won that little battle after tea, but like we saw in the first innings, they cannot get complacent against this man. Tall, gets bounce on this pitch. He may get some invariable bounce as well. Guts! This time it's gone in the gap. Will run away. It does. 4 runs to Khurram Manzoor. But you got to be very careful with that shot. He lost his wicket on the same sort of delivery, but this time the ball not coming in, angling in much, and 4 runs for Khurram Manzoor. Didn't quite middle it, and it went aerial as well. That armour, that similar cut shot, looking to play too square. It went too fine for his liking, I think. He'll be better off playing with the straight bat, at least to begin with.
Back foot punch would be a better option than the square cut. He got away with it, and the partnership is continuing. And like you said, these two senior men would have to do bulk of the scoring from here on in. Absolutely, and that is what is expected of these two, because both of these players have scored more than 10,000 runs at first class level. So Sindh would hope and expect that these two carry on at least till the end day today. This is better, much better by Khurram Manzoor, a better technique, a better approach towards Asif Afridi. And the reason we say this, because Khurram Manzoor 11,000 runs, Asad Shafiq more than 10,000 runs. They know how to construct big innings, and once they've got a start with a little bit of luck, they have to make it count. They cannot just give it away. Talking about luck, they already have one decision gone their way. This is better, the punch you were talking about. This is a better approach of Khurram Manzoor towards Asif Afridi, looking to play with the full face of the bat. End of 21 overs, 65 for 2 Sindh, 66 for 2 Sindh. You have to say that KP has bowled really well. Their pacers have really bowled well. We haven't seen a single cut shot. Look at this, Khurram Manzoor playing with the vertical bat, not using the horizontal bat like he did in the first innings and in the beginning of the over. Much safer way to deal with the armour of Asif Afridi. That's the experience of the man, learning from his mistakes. Imran Khan Senior now. What can he do? Can he get a wicket for KP? That's the question. I like the approach, how Khurram Manzoor has managed these fast bowlers, using that feet, getting to the pitch of the deliveries, not getting the ball to swing. That has frustrated these bowlers and made them change their line and length. That do break the rhythm of the fast bowler once you do that. Yeah, that's very clever from Khurram Manzoor. But I would still like to give credit to the KP bowlers. They changed their length, but they haven't changed their line. Like I said, not a single cut shot of the pacers in this innings, so which means that they haven't changed the line. They haven't allowed any room outside the off stump. Because with true bounce, is a very good scoring shot on this ground, but they've absolutely cut down on it. Solid. Very solid at the moment by Khurram Manzoor. Still there on 30. Well, if you look back on the day one, Shah Faisal, those 3 wickets by Asif Afridi, if you take that out, other than that, it has been pretty ordinary bowling by the seamers, other than Irfanullah Shah, of course. But if you talk about Imran Khan Senior, Arshad Iqbal, they've been quite ordinary. They've not done much for their team. So if they can negotiate those 2 bowlers, Asif Afridi, they've done well today, and Irfanullah Shah, they are in the chance to build up a good lead from here. They trail by 54, and they would look to get to that maybe 250 over that after that 54 runs. Beaten. That's the length. Better length by Imran Khan Senior. Wide of the crease, angling in, straightening off the seam. Lured Khurram Manzoor into that prod. Yeah. I think it's a pretty harsh statement, Ali, when you say they have been ordinary. They've beaten the bat, they haven't been lucky, but you can argue that they could still bowl a yard fuller, taking from that previous delivery as well. Remember, they don't have the express pace like the Sindh bowlers had. Well, I say ordinary because when I compare Irfanullah Shah and Asif Afridi, in comparison to them, yes. Because Irfanullah Shah was spot on with his length, consistent with that line and length. That has been missing by the remaining bowlers. Have a look at this, 2 full this time. Very good run. So the consistency has been missing. As we saw from Irfanullah Shah, he was persistent with that same line and length, and he was rewarded with wickets. But when it comes to Imran Khan Senior or Arshad Iqbal,
they were a little wavered. Still have time to make amends because they're still in ascendancy, 53 runs ahead. This wicket is still offering plenty. But like we saw when Sindh came this morning, they bowled to a plan and they executed that plan really well. KP would have to do the same. Nicely flicked. This is a very important inning by the captain Asad Shafiq. At a time when Sindh needs it the most, he has to step up and perform and score runs. He's already got a chance when Waleed Yaqub didn't give him out, when it looked certain, it looked plumb. So you got to make the most of that opportunity and score some big runs for your team. That is what you can do here. He's an experienced enough to do it. Absolutely spot on, Ali. He had that slice of luck. The kind of player Asad Shafiq is, he needs to really capitalize on that. And like you said, if ever his team needed him, today is the day. Cautious in the gap. Checked his stroke, Khurram Manzoor, in the end. That's the end of 22nd over, 69 for 2 Sindh. Saad Khan, Faraz Ali, Muhammad Hassan, Sohail Khan, Mir Hamza. I would say not a lot is left. Saad Khan is not 100%. I think he had to be waiting till 350 before he could come at his usual batting order, or otherwise he'll have to wait. Sindh are pretty close to that now. So if it doesn't fall another wicket, I mean in the next 9 minutes, then Saad can come in at the fall of next wicket. Although Sindh would not want him tonight. They ideally want this partnership to go on and bat on till the close of play, so he can have another night's rest and come back a bit fitter for the battle. But it's a long way away at the moment. Plenty of overs remaining in the day. Definitely, he would be needed. Saad Khan, a very talented left-hand batter. He's in some good form in this tournament. Sindh trailing by 51 runs. It's Asif Afridi again, Khurram. Oh, driven nicely, beautifully done by Khurram Manzoor. Stand and deliver. 4 runs for him. It was a no ball as well, so profiting big time here, Khurram Manzoor. That stride was very, very nice, and the extension of the arms going through the ball found the gap as well. Look at that. That's the no ball. A big one. A massive one for a spinner. But look at that stride. Got to the pitch and the extension of the arms. He's a tall man, Khurram Manzoor. He's worked really hard for his runs. For once he got one that he could put away easily. Good positive batting by Khurram Manzoor. And that's what you should be looking to do against somebody like Asif Afridi. Not overdo it, but you cannot even block him every delivery. You got to be looking to score runs off him. Because once a left arm spinner gets his line in length, the rhythm going, it gets very difficult. Wonderful cricket. Very good cricket by Khurram Manzoor. Now that point fielder has been pushed back 2/3 of the way. The mid-off is also back. The longer you stay, you create those gaps for yourself. Helps you in rotation of strike. That is a good partnership that does as well. This partnership has already brought up the 50. 55 runs now been added for the 3rd wicket. And they've been chipped away with the deficit, just 48 runs. That's better. I like how Khurram Manzoor has negotiated Asif. In the first inning, it was a wrong selection.
when he wanted to cut a ball that was coming in from Asif Afridi. But this time he's looked good, playing from the full face of the bat. That's the right way of doing it. Until you said it. Because once again he was tempted to play that horizontal bat shot, and that last delivery kept coming at him. It was a slower, loopier one. It wasn't the skidder. Again a no ball. What is happening with Asif Afridi? The first one we saw, it was a big no ball. We'll have to watch again about this one. Parwaleed Yaqub, spot on. He'd been questioned earlier in the game for missing a no ball or two on which a wicket fell. Or was it umpire Imtiaz? But Waleed is quite... Hurry, hurry! Oh, he makes it. Why would you run like that, Asad? Your team needs you to stay on the crease for a longer period of time. This won't help. Not worth it. Taking the chance for one run at the cost of your wicket, he would have made it. But it was too close for comfort. 77 for 2. They've looked determined. Khurram and Asad. That's some good sign by Sindh side, for Sindh side. And in the morning today, Faisal, when the Sindh side came to the ground, the intensity looked different. They were in with the purpose, and we saw that in the first session. They took wickets. It was just little partnerships and then a cameo by Asif Afridi that gave them that lead. Or else, it's been a good day for Sindh. Although they have lost 2 wickets, but this partnership is growing. So the intensity today was different. You spot on, Ali. Other than that little period when Asif Afridi got under their skin and got himself an attacking 50, either side of that knock, Sindh had been very impressive. They chipped at the KP batting lineup first, took wickets with regular intervals, and then that partnership between the 2 experienced men looks like they're clawing their way back into the game. Irfanullah Shah, the destroyer from the first inning, bowled beautifully in the right areas, in the right channels. I've said it before that this is the second match that we're covering here, and nobody has used these conditions better than Irfanullah Shah. Yes, Bilawal Iqbal has taken fifer. Yes, Amir Yamin has taken a fifer. But if you ask me, he has used these conditions beautifully. The best so far, bowled in the right areas consistently and has taken wickets. And the bowlers you mentioned, he's the taller of them as well. So definitely that bounce is helping him. Not quite finding the gap this time. Asad, timing not there. Iftikhar Ahmed must be disappointed. They were in a position where they could have easily batted Sindh out of the game. But that early burst from Sohail Khan and Mir Hamza, they bowled a beautiful spell together in that partnership early on the first hour of the day today. Sohail Khan taking another fifer. But to me it was Mir Hamza's spell. It was better than Sohail Khan, although didn't get the wickets, but his line and length was immaculate. Right on spot. The execution of plans this morning, when he came, he meant business, it seemed, from the get-go. And he had some drop chances of his bowling, some close shaves with the leg before decisions, so he ended up with 3 wickets. But it does happen when you bowl in tandem, in partnership, you hunt in pairs, you create that pressure. As Mir Hamza on your screen and his fast bowling partner Hasnan, they did create pressure, and Sohail Khan was the one who got rewards. It can easily have been Hamza with 5 wickets. So all in all, splendid contribution. Absolutely. I think it was Mir Hamza's spell who deserved 5 wickets. Was unlucky, a catch was dropped down. A sitter from Hassan Ali.
But overall, it has been a wonderful day for Mir Hamza and Sohail Khan. Nothing taking away from his abilities and his performance. That's on your right. Mir Hamza on your left. Another rookie fast bowler, Hasnan. Couldn't get many wickets, but he's definitely one for the future for Sindh and Pakistan cricket. Shajil Khan also there. Will probably be playing the next game. So this Sindh side is a very formidable side, a very good side. Oh, beautiful. Have a look at that for timing. Wonderfully done by Asad Shafiq. He's looking in gorgeous touch. Excellent batting. It can't get any better than that. On drive is not an easy stroke, especially on this bouncy pitch against a tall bowler. He really leant into it, the weight coming into the shot. And it's splendid finish with a straight bat. Fairly raced across. Timing was magnificent. I'd say Asad Shafiq was at his very, very best there. 81 for 2. This morning when we had a word with Basit Ali, at that time Sindh was down and out, but the belief was there, Shah Faisal. Every time you spoke to a Sindh fielder or a bowler, the belief was there. Cuts nicely, but protection there. So yes, belief has been there. That's been there in the Sindh camp since morning, and it has paid off. They were of the opinion that even a 100-run lead will cover that up, and they're doing it nicely. Only 38 runs behind now. They're definitely back in this game. Good cricket, very good cricket by Asad. Right, Ali, because when you talk to Basit Ali, you know, he's a very positive man, a very positive coach. He's a shrewd tactician, and he knows when to go hard on his troops and what task to give them. Absolutely, it was an intense session when he was giving a pep talk this morning to his team. I was standing right outside our commentary box. I could see the intensity there. There was anger in it. There was passion in it. So I think the boys have responded to that meeting very well. And look at them now, 36 runs behind with 8 wickets in hand. They would be fancying getting a lead of 200 runs. That would make things very interesting for the 4th inning. Talking about that pep talk, there was another one at tea time. Very intense again. Come back to the game, you can clearly see that Asif Afridi is tempting the batters to go hard at him, play the cut shot. Asad Shafiq resisted on the 4th ball of the over when that armour really came in. But Asif is tempting him with a slower one now. Another no ball. What is going on? Not good. Really not good by Asif Afridi. He's an experienced campaigner. This is the 3rd time that he has overstepped. And a big one again. Surprises me more. Oh, was that a catch? Was that an edge? But more interestingly, it's another no ball. What is happening with this KB side? They're losing it. Fumble by the wicketkeeper. Asif Afridi is going wide on that crease. And every time it seems he's landing, his front foot is landing over the crease. There you go. Clearly. Not a shadow of doubt. And we'll have to see the front end of that action. It won't have mattered anyway, but a blemish on wicketkeeper's file. Kept low. Well watched by Asad Shafiq. 86 for 2. Sindh trailing by 34 runs at the moment. Asad looks solid for 22. Khurram's more innovative, scoring runs. He scored 39 at the moment. The last man was Umair bin Yusuf, who was LBW by Arshad Iqbal.
when the score was 19, and since then it has been these two, the most senior batters for Sindh, doing it for them. That is what is expected. Two slips and a gully. Point cover mid off. Pretty regulation. Change of length by Irfanullah. Fast bowlers don't really like this, Shah Faisal. A batter stepping onto them every time. That is why he's just changed his length, bowling a shorter one. But with this pace, probably is not going to bother somebody like Khurram Manzoor with so much experience behind him. This is a good inning, very good inning, very impressive. We've seen this work very nicely for KP batters yesterday, but Khurram Manzoor as well is using it to good effect. Just wondering what would be a good tactic from the bowler to counter that. Look how late he moves. He was almost about to deliver when he used his front foot. But maybe it's not ideal from a coaching manual, but it's working for him. It's working well for him. Yeah, that's more important. What you mentioned is that he's moving late. We have a look at this. Still was showing it to the bowler, but again, like I said, what would the bowler be doing to counter that? An interesting point. Check with Ali what he thinks. I'd hate to say it, but maybe bring the wicketkeeper up to the stumps for a couple of overs. Lower down your pace, change the strategy, do something different. But with the pace of Irfanullah, I don't think so that is possible. Or Haris, can he think of doing it? Maybe not against Irfan, but that tells me that it won't be a bad idea for Iftikhar to come for an over or two, get the keeper up there and make Khurram Manzoor stay in his crease. They've been really battling hard. Sometimes that lesser bowler can make you drop your guard. Remember what Mohammad Saad did to Southern? He broke that important key partnership in the game before this one, and that changed the course of the game when Agha Salman lost his concentration against Mohammad Saad, and then the wickets fell. The 8 wickets fell, as you mentioned in the last session. It was because of that 1 wicket that Mohammad Saad took. So maybe do something different. Musaddiq can bowl in the first inning. If the Iftikhar did some seam-up deliveries, some medium pace, he can do that. Start of the day, we saw Faraz Ali bowl 1 over and almost tempted Musaddiq. Good cricket, very good cricket. Soft hands, good coordination, single taken. And also, like I said, this is an intense mental battle going on in the middle. On a wicket like this, when you're trailing, you lose 2 early wickets, and that slight relaxation in your concentration against a lesser bowler can also make you do the mistake that is needed. Good bench strength. Rehan Afridi, a very good wicketkeeper batter. Samin Gul, Khalid Usman, very useful cricketers. Shows the strength of the team. And why not? They're winning everything. They're winning T20s, they're winning 1 days, they're winning 4 days. Whatever you name it, this KP side is winning it. 26 gone, 87 for 2. Sindh. Some good signs for Sindh as we see Saad Khan gearing up. He had a little hamstring problem in the morning, but now he looks fine. He looks good to bat. He will be a very crucial member of this batting lineup. 33 runs the trail. Asif Afridi will continue. Nicely done. Very nice. That's how you play left arm spin. Just a slip and a short leg and a short mid-wicket catching. Like I said, pretty regulation. That point fielder is back.
But mid-on and mid-off are quite up. Khurram's discipline has been very good for most part in this innings. I'm sure that Asif Afridi will still tempt him for that cut shot. This is his main strength. Because other than that, it doesn't seem likely to get a wicket. He's not getting any sort of turn. Also, Shah Faisal, when he came into ball in the first inning, it was a newish ball, and now the ball is 26 over old. It's easier. He's looking to turn the ball. That might not go in his favor, as you just said, because he more relies on the drifters, on the armor delivery that comes sharply in, and definitely they've worked on it too. Absolutely, that last ball was the typical example where it kept coming in, but Khurram was prepared to punch it with the angle, with the straight bat. Horizontal bat shots against a bowler like him can be trouble, especially earlier in your innings. That's what Sindh found out on that first morning. Appeal! Not from the bowler, Shah Faisal says. 27 gone, 88 for 2. Players will take drinks.
पानी के वक्फे के बाद एक दफ़ा फिर खुश आमदेद कि जहां पर इरफान अपनी बॉलिंग जारी रखेंगे। दिफाई अंदाज से खेले अगले कदमों पे खुर्रम मंजूर, अब ज़्यादा पूरे एतमाद नज़र आ रहे हैं खुर्रम मंजूर। ये इफ्तिखार हैं जिन्होंने गेंद को फील्ड किया। खुर्रम मंजूर की विकेट पे मौजूदगी अशद ज़रूरी सिंध के पॉइंट ऑफ व्यू से। अहमद सईद ने हमें ज्वाइन किया कमेंट्री बॉक्स में, वेलकम अहमद। रियली बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने, ये दोनों खिलाड़ी अब काफ़ी अच्छी कारकर्दगी दिखाते हुए और इनके एतमाद में इजाफा हो रहा है हर गुजरते ओवर के साथ। बड़ी अहम पार्टनरशिप, बड़ा ज़रूरी है कि ये आज का दिन कम से कम पूरा बैटिंग करें। अच्छा कलेक्शन था विकेट कीपर की जानिब से। इरफान ने काफ़ी मुतासर किया अपनी उम्दा बॉलिंग से, पूरी तरह से कंसंट्रेट करते हुए खुर्रम मंजूर। और हमारे याद होगा जब गुज़िश्ता स्पेल में हमारी और आपकी पार्टनरशिप थी तो उस वक्त हमने कहा था, हम तस्करा करते हैं, खुर्रम ज़्यादा पैनिक नज़र नहीं आते माजी के मुकाबले में। आपने देखा बॉल मिस ज़रूर हुई है, बहुत काम कंपोज हो गए, अपनी क्रीज से हटे हैं वो अपनी आदत के मुताबिक, लेकिन कोई बल्ला उन्होंने पैड पे नहीं मारा, कोई अपने आप को झटके नहीं दिए। अब हवा जाए थोड़ा तेज़ चलते हुए, ये देख सकते हैं आप, तेज़ हवाएं और इन तेज़ हवाओं की ताब ये छतरी नहीं ला सकी। खालिद उस्मान रिजर्व प्लेयर ग्राउंड से बाहर निकालते हुए। जबरदस्त प्लेयर है खालिद उस्मान, लेफ्ट आर्म स्पिनर, राइट हैंडेड बैट्समैन। इस मैच में बतौर मुतबादिल खिलाड़ी मौजूद। बड़ा अच्छा मुकाबला गेंद और बल्ले का, मुस्तकिल अच्छी जगहों पे बॉल करते हुए केपी के बॉलर्स कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह इस पार्टनरशिप को तोड़ा जाए, लेकिन उतनी ही कंसंट्रेशन के साथ दोनों तजुर्बेकार सिंध के बैटर्स जो है लड़ रहे हैं अपनी टीम के लिए और कोशिश कर रहे हैं कि इस लीड को कम से कम किया जाए। 32 रन की लीड केपी के पास रह गई है। दिफाई अंदाज से खेले अगले कदमों पर। तो काफ़ी तेज़ हवाएं जो है वो चलना शुरू हुई हैं और दरख्त जो है वो लहलहाते हुए और झूमते हुए। इस वक्त थोड़ी देर के लिए गेंद हवा जो है वो थोड़ी रुकी है। उस वक्त जो गुज़िश्ता शॉट हमने आपको दिखाया था उसमें आप देख सकते थे काफ़ी तेज़ हवा चल रही थी उस वक्त। और इस वक्त सबा करीम ग्राउंड में मौजूद होते हैं जो इंडिया के विकेट कीपर हैं। तो सबा करीम अगर ग्राउंड में मौजूद होते हैं जो इंडिया के फॉर्मर विकेट कीपर हैं तो हम ज़रूर कह सकते थे कि ए बाद सबा कुछ सुना तुमने, मेहमान आने वाले हैं, फूल ना बिछाना राहों में, हम आंखें बिछाने वाले हैं। ये अगर ये सबा करीम की आंखें हों जो बिछी हुई हों तो काफ़ी दूर तक बिछ सकती हैं। बहुत ही बड़ी बड़ी आंखें थी। और उन आंखों ने उनका कैरियर ख़राब भी किया था क्योंकि जब बेल्स स्टंप्स पे बॉल लगी थी, बेल्स उड़ के उनकी आंखों पे लगी थी, उनकी बीनाई चली गई थी एक आंख की, जिसकी वजह से उनका कैरियर ख़राब हुआ और ख़त्म हुआ। इसी तरह मार्क बाउचर का भी कैरियर ख़त्म हुआ था। उसके बाद से फिर विकेट कीपर्स ने हेलमेट्स पहनना शुरू किए। फ्रंट फुट पे रखा हुआ है खुर्रम मंजूर को। इस ओवर में इरफान ने ओवर अपने इख्तिताम को पहुंचा 88 2 विकेटों के नुकसान पर। ये केपी के कोचेस, कोच और असिस्टेंट कोच रिफतुल्लाह जो खुद भी एक बहुत ही अच्छा उनका फर्स्ट क्लास का करियर, बड़े शानदार फील्डर अपने ज़माने में हुआ करते थे, ओपनिंग बैट्समैन।
बहुत मेहनती खिलाड़ी, अभी तक काफ़ी फिट है। जी हाँ, पाकिस्तान के लिए भी T20 खेले और मोहम्मद तरीन डेब्यूटेंट पाकिस्तान की जानिब से T20 खेलने वाले, उनके साथ अब्दुल रहमान यूटिलिटी प्लेयर थे, विकेट कीपिंग भी करते थे ये T20 में। रफ़तुल्लाह मोहम्मद और एक ज़माने में ये अफगानिस्तान के लिए भी कंसिडर हो गए थे, लेकिन कुछ वजूहत की बिना पर ये उसके बाद फिर इनका पाकिस्तान से डेब्यू हुआ। लेकिन बड़े ज़बरदस्त और ख़ास तौर से शॉर्टर फॉर्मेट के बड़े ज़बरदस्त क्रिकेटर थे रफ़तुल्लाह मोहम्मद। ये स्क्रीन पर दाएं जानिब और उनके साथ अब्दुल रहमान, इंतहाई सीजन कोच। कुछ अर्सा मुझे भी इनके साथ खेलने का मौका मिला। फर्स्ट क्लास लेवल पर जॉन्टी रोड्स के नाम से मशहूर थे ये टीम में। इस कदर बेहतरीन फील्डर थे, बिजली जैसी तेजी थी इनमें। बहुत ज़बरदस्त प्लेयर थे और बदकिस्मत रह गए, पाकिस्तान को सही एज में रिप्रेजेंट नहीं कर सके। काफ़ी लेट खेले पाकिस्तान के लिए, PSL में इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए भी एक सीज़न में ये खेले। और जिस तरह हम गुज़िश्ता मैच में बात करते कि अमूमन बैट्समैन जो हैं वो जब फेस कर रहे होते हैं तो ज़ेर लब दुआएं पढ़ रहे होते हैं। इस तरह खुर्रम मंजूर को भी आप देखें, मुसलसल दुआएं पढ़ रहे हैं। सलमान बट को भी इसी तरह देखा। गुज़िश्ता मैच में हमने कई प्लेयर को इस तरह देखा जो मुसलसल दुआएं पढ़ते थे, अपने कंसंट्रेशन को बरकरार रखने के लिए। अहमद, आपकी क्या प्रैक्टिस थी? मुझे तो लगता है आप ड्रामों के स्क्रिप्ट पढ़ते होंगे। नहीं जी, मैं आमतौर पे अपने आप से बातें करता था। तो अमर, आपका ताल्लुक एक शोबिस की इंडस्ट्री से, माशाल्लाह आप स्मार्ट भी हैं, क्रिकेटर भी रहे, बहुत सारे क्रिकेटर्स एक्टिंग में आ रहे हैं, दिफा अंदाज से खेले हैं इस मरतबा। तो कभी आपको कोई ऑफर आई? नहीं जी, मुझे तो कोई इस तरह की ऑफर नहीं। आपको कभी कोई ऑफर आई है इस तरह की? हाँ, 2-3 तामिल फिल्मों की आई है ऑफर। उनतीस मुकम्मल हुए, 90 पे 2। बड़ा मुश्किल काम है। जैसे कि हम क्रिकेट पे इतनी बात करते हैं, जाहिर है एक्टिंग और जो टीवी पे और फिल्मों में जो काम हो रहा होता है, हम उसके एक्सपर्ट तो नहीं है, लेकिन बड़ी आसानी से हम बहुत सी चीज़ों को रद्द कर देते हैं कि जी ये कोई अच्छी फिल्म नहीं थी, ये कोई अच्छा ड्रामा नहीं था। लेकिन उसमें कितनी मेहनत और कितनी लगन एक्टर्स की और डायरेक्टर्स की और टेक्नीशियंस की होती है, इसका हमें अंदाज़ा नहीं है शायद। लेफ्ट किया इस मरतबा इस मौके पर। अच्छी पार्टनरशिप है इन दोनों प्लेयर्स के दरमियान और ये दोनों प्लेयर उस वक्त यकजा हुए कि जब 19 के स्कोर पे उमर बिन यूसुफ आउट हुए थे। इस तरह अब इन दोनों के दरमियान जो है वो 79 यानी 79 रन, इनफैक्ट 71 रन की पार्टनरशिप हो चुकी है। ये अब तक एक विकेट हासिल की है अरशद ने, जिन्होंने उमर बिन यूसुफ को LBW किया था। और बदकिस्मत थे इस मौके पर कि असद शफीक को जो अपील थी इनकी वो रायगा गई। बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन जिस काम में भी आप मेहनत करें और खरीजी के साथ, जान फिशानी के साथ काम करें, वो काम यकीनी तौर पे मुश्किल होता है। अमूमन जब हमारी क्रिकेटर्स से बात होती है तो कहते हैं कि आपकी जॉब बहुत आसान है, कमेंट्री करना बहुत आसान है, लेकिन इतने स्टैट्स बताना, बॉल टू बॉल आपको हर चीज़ याद रखना, फिर ग्राउंड में से आपको उस लिमिटेड, अब आप देखें यहाँ पे बहुत कम लोग हैं, यहाँ पे उस लिमिटेड रिसोर्सेज में से ह्यूमर निकालना, ये थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाता है। तो हर जॉब जो है वो मुश्किल है अगर उसको दिल से किया जाए और इसको जाफिशानी के साथ किया जाए। और आपसे मैंने एक्टिंग का इसलिए पूछा क्योंकि जाहिर सी बात है कि जो आपकी ब्लड में जो एक्टिंग है, आपके फादर एक बहुत बड़ा नाम है, आपकी सिस्टर एक बहुत बड़ा नाम है, फैमिली में आपकी जो है आपने बड़ा जो प्रमोट किया आर्ट को। 92 विकेटों के नुकसान पे 30 रन की बढ़तरी रह गई है। और ये 30 रन जब उतारने में सिंध कामयाब हो जाएगी तो मैच जो है बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। जी, आपने जिक्र किया मेरे वालिद और बहन का, तो वो अमूमन जब घर पे कभी मैं एक्टिंग करने की कोशिश करता हूँ तो वो लोग जो है वो बड़े खुश होते हैं कि शुक्र है कि मैं एक्टिंग में नहीं आया, क्रिकेट में पड़ गया।
लेकिन जब आप क्रिकेट खेलते हैं तो हम दुआ करते हैं आप एक्टिंग में क्यों नहीं गए? क्योंकि जब अहमद क्रिकेट खेलते थे उस वक्त भी बड़े स्मार्ट और बड़े हीरो टाइप इनका एक कैरेक्टर होता था, बड़े जबरदस्त बैट्समैन थे अपने वक्त के अहमद सईद, और अहमद कवरिंग इसी को ही कहते हैं। इरफान है यहाँ पर, और चूंकि अहमद काफी अर्से से मेरे साथ मुख्तलिफ मैचेस को कवर कर रहे हैं तो एक बड़ी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग अहमद सईद के साथ हमारी डेवलप हो चुकी है। टाइमिंग अहमद की बहुत अच्छी है। इनफैक्ट जब आप कमेंट्री करते हैं तो आप दोनों का सिंक होना बड़ा ज़रूरी है, और जुमलों की जो टाइमिंग है उसमें अहमद बड़ी सपोर्ट करते हैं। ये फेज़ जो जिससे हम इस वक्त भी गुजर रहे हैं, ये आखिरी घंटा खेल का, कल भी हमने देखा था कि बहुत ज़्यादा मदद बॉलर्स को, ख़ास तौर पे जब वो पुरानी हो जाती है तो बहुत ज़्यादा बॉलर्स को मदद नहीं मिल रही थी। लेकिन एक अच्छी बात केपीके की बॉलिंग की ये ज़रूर जिक्र करना होगा कि उन्होंने जगह नहीं छोड़ी है, फ्री हिट्स नहीं दे रहे हैं, मेहनत करवा रहे हैं दोनों खुर्रम मंजूर और असद शफीक से रन्स के लिए। 4:16 पाकिस्तान का मियारी वक्त, और बिल्कुल ये आखिरी सेशन के आखिरी चंद घंटों का खेल बाकी, 92 विकेटों के नुकसान पर। दोनों टीमों की बॉलिंग का अगर हम मवाजना करें तो केपीके की बॉलिंग में ज़्यादा डिसिप्लिन नज़र आता है बनिस्बत सिंध की बॉलिंग के, और ख़ास तौर पे जब आपके पास दो इस तरह के बॉलर हों जो तेज़ रफ्तार बॉल करने का के लिए मशहूर भी हों और शौक़ भी रखते हों, तो अमूमन डिसिप्लिन जो है वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। वो विकेटें लेने के और तेज़ बॉल करने की ख्वाहिश में लाइन और लेंथ को अक्सर कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं और रन्स उन पे ज़्यादा बन जाते हैं। अहमद बेहतर टेक्निकल कमेंट्स तो आप दे सकते हैं, लेकिन अगर मेरी दानिश में जितनी मैंने क्रिकेट कवर की है, अगर बैक फुट पे खिलाए यहाँ पे आसिफ आफरीदी तो ये लाइन इनको सूट करेगी। फ्रंट फुट पे इतनी ज़्यादा मुश्किलात पैदा शायद ना कर सकें। अगर कट खिलाएं जिस तरह अमूमन खिलाते हैं तो शायद वहाँ पे जो है वो बैट्समैन के लिए मुश्किलात हो। नो बॉल का सिग्नल अंपायर वलीद की जानिब से। एक्स्ट्राज की तादाद में इजाफा और खसारे में कमी। जी हाँ, मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज़ अपनानी होंगी बॉलर्स को अगर वो विकटें हासिल करना चाहते हैं, जो कि ज़ाहिर है केपीके का मकसद भी होगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा विकटें हासिल करे कम से कम वक्त में। हालांकि वक्त काफ़ी मौजूद है इस वक्त। ये स्वीप कर दिया इन्होंने इस बार स्क्वायर लेग बाउंड्री पर, 4 रन, बहुत खूबसूरत शॉट, थोड़ा सा लेग स्टंप पे गिरा हुआ बॉल, और असद शफीक जो है वो काफ़ी महारत रखते हैं इस शॉट में। कलाइयाँ अपनी घुमाई इन्होंने। देखिए कोई फील्डर वहाँ मौजूद नहीं था स्क्वायर लेग में, और बड़ी अच्छी तरह बॉल को उन्होंने नीचे रखा, हवा में खेला, 4 रन हासिल किए। और अब फील्ड में तब्दीली की आप देखेंगे कि स्क्वायर लेग के जो बाएं जानिब फील्डर था उसको दाएं जानिब किया, और जो बिल्कुल डीप स्क्वायर लेग पे फील्डर था उसको एम्पायर के इंतहाई बाएं जानिब किया शॉट को देखते हुए। ये ऑफसाइड की फील्ड। तो का इस्तेमाल किया, इस मरतबा सॉफ्ट हैंड के साथ खेले, 2 रन का स्कोर में इजाफा। और एवर जब तक यहाँ पे फ्रंट फुट पे खिलाते रहेंगे मैं समझता हूँ बैट्समैन के लिए आसानी रहेगी। जितना ज़्यादा बैक फुट पे रखेंगे आसिफ आफरीदी इतना बैट्समैन के लिए मुश्किल होगी। आपको याद होगा जिस तरह से खुर्रम मंजूर जो हैं वो आउट हुए पिछले इनिंग में कट खेलते हुए, और यहाँ भी असद के खिलाफ 1-2 अपील्स हुई हैं जब वो बैक फुट पे गए। जी दुरुस्त फरमाया आपने, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो उसके लिए ज़रूरी है कि बॉल में थोड़ी हार्डनेस हो, थोड़ा सा नया हो बॉल। जब इतने ओवर पुराना बॉल हो जाता है तो बैक फुट पे काफ़ी टाइम मिल जाता है बैट्समैन को। ये बॉल थोड़ी सी अंदर आई,
बैट के मेरे ख्याल से बीच से निकल गई, इस एंगल से ठीक तरह पता नहीं चल रहा। इस मरतबा बैकफुट पे रखा था और देखें मुश्किल हुई यहाँ पे, बैकफुट पे रखा, जगह बना के स्ट्रोक खेलने में मुश्किल हुई असद को। 97 2 विकेटों के नुकसान पर। विकेट अब बैटिंग के लिए साजगार होती जा रही है वक्त के साथ साथ। काफ़ी आसान इस वक्त बैटिंग करना है, तो उसका भरपूर फ़ायदा सिंध के बैट्समैनों ने उठाना है और उठाना होगा। दिफाई अंदाज से खुर्रम खेले, अब तक अपने गेयर्स को चेंज किया हुआ खुर्रम ने। अमूमन जारन अंदाज से बैटिंग करते हैं खुर्रम। दिफाई अंदाज से खेलते हुए खुर्रम मंजूर, उनका एहसास है इस बात का कि इनिंग के इस फेज में अगर विकेट गिरेगी तो कल काफ़ी मुश्किलात हो सकती हैं। इस किस्म की गेंदें बेज़रर गेंदें और आसानी के साथ आज का वक्त गुजारने में माविन साबित होंगी। अमूमन जिस अंदाज से खेलते हैं वो उसके बिल्कुल बरखिलाफ इस वक्त बैटिंग कर रहे हैं खुर्रम मंजूर, इस बात को समझते हुए कि किस कदर कीमती है उनकी विकेट। सिंध अगर इस मैच में बेहतरी की तरफ जाना चाहता है, बचाना चाहता है मैच को और फिर किसी ऐसी पोजीशन में आना चाहता है जहां से वो जीत सकें इस मैच को, तो बड़ा ज़रूरी है कि खुर्रम मंजूर एक लंबी तवील इनिंग्स यहाँ पे खेलें। बाउंस किया था और वाइड का सिग्नल अंपायर इम्तियाज इकबाल की जानिब से। एक्स्ट्रास की तादाद में इजाफा। वेस्ट साइड से ऊपर गेंद थी, इम्तियाज ने सिग्नल दिया। बहुत पीछे गिरा हुआ बॉल सर के ऊपर से, मेरे ख्याल से अगर खुर्रम मंजूर ना भी झुकते तब भी उनके सर के ऊपर से निकल जाती है बॉल, और बिल्कुल सही फैसला अंपायर्स का कि वाइड बॉल थी। विकेट की तलाश है यहाँ खैबर पख्तूनख्वा को। ये पार्टनरशिप आहिस्ता आहिस्ता इस मैच का मूड सेट करते हुए, महज 22 रन की अब बढ़तरी रह गई है खैबर पख्तूनख्वा की सिंध के खिलाफ। 19 के स्कोर पे उमैर बिन यूसुफ आउट हुए और उसके बाद खुर्रम मंजूर और असद शफीक यकजा हुए, और उसके बाद से अब तक नाकाबिल शिकस्त हैं खुर्रम मंजूर और असद शफीक। यस नो खुर्रम रन लेना चाहते थे, असद ने बर वक्त मना किया और दुरुस्त मना किया। आदिल अमीन
गुज़िश्ता मैच में सेंचुरी स्कोर की थी इन्होंने नॉर्दर्न के खिलाफ। अमूमन ये कहा जाता है कि मिस फील्ड पे कभी भी रन नहीं भागना चाहिए, और मेरे ख्याल से इसी वजह से इस तरह की मिसाल दी जाती है कि कंफ्यूजन एक बैटर के दिमाग में आ जाती है, तो उस कंफ्यूजन में रन आउट होने से बेहतर है कि एक रन की खातिर इतना बड़ा खतरा मोल ही ना लिया जाए। इस मरतबा बल्ले पे कंट्रोल खो बैठे थे खुर्रम मंजूर, 1 हैंडेड स्ट्रोक खेले लेकिन खुशकिस्मत रहे, गेंद हवा में नहीं गई। ओवर मुकम्मल 98 पे 2। यकीनी तौर पे कोई मैसेज था जो कोच बासित अली और मसरूर की जानिब से भेजा गया इन दोनों बैट्समैन को। अहमद सईद स्टेट बैंक से एक जमाने में सादत मुनीर एक लेफ्ट आर्म स्पिनर खेलते थे, अगर आपको याद हो। काफी रिजेम्बलेंस है सादत मुनीर के बॉलिंग एक्शन में और आसिफ आफरीदी के। अरशद इकबाल बाउंड्री लाइन के बिल्कुल करीब, शाम के साए आहिस्ता आहिस्ता गहरे होते हुए, और ये समीन गुल हैं। अच्छे फास्ट बॉलर ने समीन गुल, इस मैच में रेस्ट दिया गया है समीन गुल को। भी अच्छी टेक्निक है असद की स्पिनर्स के खिलाफ, खास तौर पे इंतज़ार करते हैं बॉल को, बड़ी आखिरी वक्त तक देखते हैं, कमिट नहीं करते जल्दी शॉट खेलने के लिए। और मैं अगर गलत नहीं हूं तो समीन गुल को डोमेस्टिक T20 में ट्रांसफर किया गया था बलूचिस्तान, या शायद उनको सदरन की टीम में ट्रांसफर किया गया था क्योंकि इनकी जगह नहीं बन पा रही थी। केबी की बड़ी मजबूत टीम थी। 100 रन मुकम्मल हुए 2 विकेटों के नुकसान पर। अच्छी साझेदारी दोनों के दरमियान, 81 रन की पार्टनरशिप। बीस रन रह गए और ये सिंध का ड्रेसिंग रूम, शर्जील, फराज अली और मीर हमजा। 20 रन का हदफ रह गया। धानी भी इनके साथ शामिल हैं। बड़ी कोई गहरी डिस्कशन चल रही है। उम्मीद तो यही करते हैं कि क्रिकेट पे ही हो रही होगी। और मीर हमजा समझा रहे हैं शर्जील खान को और फराज को, 2 बैट्समैन को एक बॉलर समझा रहे हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग है इस चीज में। और एक और भी इंटरेस्टिंग चीज है, अगर आप नोट करें कि मुस्कुरा नहीं रहा शाहनवाज दानी। ये बड़ा तारीखी फ्रेम है कि जिसमें बहुत ही मुझे लगता है कोई संजीदा बात हो रही है, वरना शाहनवाज दानी के चेहरे पे एक मुस्कुराहट रहती है, इस तरह नजीर जूनियर के चेहरे पे एक मुस्कुराहट रहती थी, डेरिक रंडल के चेहरे पे एक मुस्कुराहट रहती थी जो इंग्लैंड के प्लेयर थे। इस तरह बड़ा स्माइलिंग फेस है शाहनवाज दानी का। हम जरूर पूछेंगे मीर हमजा से वो क्या समझा रहे थे। हमने समझाते हुए भी देखा, परिंदे भी देख रहे, चिड़िया भी देख रही हैं, तो अब समझावे क्या होवत है जब चिड़िया चुग गई खेत। शर्जील बाहर है परफॉर्मेंस की बिना पर।
मंजूर बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करते हुए अपनी बैटिंग पर। और हमारा मैं बार बार इस बात का तस्करा कर रहा हूँ कि इस दफ़ा इन्होंने अपना काफ़ी चेंज किया इस सीज़न में। मैं देख रहा हूँ कोई पैनिक बटन नहीं दबाते, वरना एक गेंद में मिस होती थी उतनी ज़ोरदार अंदाज से बल्ले को पैड पे मारते थे कि बराबर वाले ग्राउंड में भी पता चल जाता था कि खुर्रम जो है वो बॉलर से थोड़ा सा जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अब वो अपने जज्बात को उन्होंने काबू में रखा है। आप स्टीव वॉक को देखे थे, आप ड्रेविड को देखते हैं, इस टाइप के प्लेयर को देखें, बिल्कुल बॉलर को वो हावी नहीं होने देते थे। ये अच्छी बेहतरी लाए खुर्रम मंजूर, कवर्स में खेले इस मरतबा। इफ्तिखार से इस किस्म की गलती की उम्मीद नहीं की जा सकती। बिल्कुल आखिरी लम्हात में शायद उन्होंने स्लाइड लगाने का फैसला किया और आई थिंक वो ये जज नहीं कर सके थे कि वो बाउंड्री लाइन के बहुत करीब पहुंच गए। अच्छा टाइम किया था इस शॉट को खुर्रम मंजूर ने, और इफ्तिखार की फुटबॉल स्किल्स को जो वो अपनी आजमा रहे थे वो कामयाब ना हो सके और इसकी वजह से 4 रन हासिल कर लिए खुर्रम ने। लेकिन हमारे ये चौका जाना नहीं चाहिए था क्योंकि एक रन के लिए मेहनत कर रही है इस मौके पर केपी। मैच से 16 रन की बर्तरी अब रह गई है खैबर पख्तूनख्वा की। खुर्रम मंजूर के अंदाज की आपने बात की, उनमें काफ़ी चेंज आई है। बिल्कुल हम भी ये देख रहे हैं कि काफ़ी कूल और काम और रिलैक्स्ड इस बार नज़र आ रहे हैं। वो पोकर फेस एक लफ्ज़ अंग्रेज़ी में इस्तेमाल होता है। ये जिन खिलाड़ियों का आपने जिक्र किया, स्टीव वॉर, ये मशहूर थे इसके लिए कि इनकी शक्ल से देख के पता नहीं चलता था कि इनके अंदर क्या चल रहा है। बॉलर्स बैक ड्राइव खुर्रम मंजूर की जाने से कॉन्सेंट्रेट करते हुए अपनी बैटिंग पर। और आपको याद होगा एलेक्स स्टीवर्ट भी इसी अंदाज से अपने पैड्स को छूते थे। सर खुर्रम मंजूर बार बार हमें नजर आ रहे हैं। सुहेल खान खुशगवार मूड में अपने मसाजर के साथ। इनका भी बड़ा रोल होता है, ये भी अनसंग हीरोज होते हैं। जब सारे दिन की थकावट के बाद खिलाड़ी ग्राउंड से बाहर आते हैं तो मसाजर्स का बड़ा रोल होता है। मलंग अली काफ़ी सर्विसेज उनकी पाकिस्तान क्रिकेट के लिए है। इसके अलावा कराची के एक मसाजर थे सोहेल पप्पे, वो भी बड़े मशहूर थे और वो अपने आप में स्टार थे। सोहेल पप्पे प्लेयर से ज़्यादा उनका एटीट्यूड होता था। अमर जी हाँ, दुरुस्त फरमा रहे हैं। एक ज़माने में तो खासे हावी थे ये लोग क्रिकेट के ऊपर, न सिर्फ क्रिकेट पे बल्कि इन्हीं अपनी स्किल्स की वजह से जो है वो अच्छे ओहदों पे भी फाइज थे। मुझे याद है एक दफ़ा एक फॉरेन टीम आई, ओवर 12 मुकम्मल हुआ, 104 है 2 विकेटों के नुकसान पे। एक फॉरेन टीम आई और उनके साथ वो एसोसिएट हो गए और पाकिस्तान को सीरीज में शिकस्त हुई। तो उस वक्त कमेंटेटर ने कहा था कि पाकिस्तानी मैसेकर इज मोर हैप्पी देन द फॉरेन टीम। The partnership between the two experienced men have seen through another half an hour session. 104 for 2. Just 16 runs behind. KP looking short of ideas now. Will skipper Iftikhar do something out of the box in this last session of play? That short leg fielder has come across to the offside to prevent that forward lunge. You have to admire the way these two have batted. Asad Shafiq for 31 of 64 and Khurram Manzoor 46.
The deficit is just 16 runs. Just a little bit of turn on that occasion. And settling into his seat this evening is Ali Yunus. Very warm welcome, Ali. Thank you, Faisal. Very good passage of play for Sindh. It's trailing by 16 runs now. And that's what we were hoping for. That's what we were looking for. A fight back from Sindh. Because it would have been so disappointing had they gone out again. Because they got out on 145 in the first inning. A performance like this was expected. That sweep shot once again well in front of square. Asad Shafiq has took a liking to that sweep shot in the last 20 minutes or so. Second boundary. Now he's looking to put the left arm spinner under pressure. What a way to come back to the form. What a time to come back to the form. This is what you expect from an experienced campaigner like Asad Shafiq. Now easing on the crease against Asif, as you just said. They've negotiated him well. Still resisting that cut shot. Still looking to play with the vertical bat. Hit it straight to the fielder. 108 for 2. This has been an excellent contest. Seesaw battle throughout the day. Sindh made a strong start in the first half an hour. Then KP added some valuable runs and then came out of the blocks very quickly. Knocked 2 batters over for 19. Like Asad said, it was expected from Sindh. They wasn't going to die without a fight. And 2 experienced men are really leading the way. But the job is not done yet. Look how well Khurram has defended. 114 deliveries for his 46 runs. I think that has been the difference in this inning in comparison to the first inning. Asad got out to a wrong shot in the first inning, but in this inning he's done no wrong. He's been on to the mark, played every delivery on merit. That is why they're in a commanding, not exactly commanding, but still they've done well. Absolutely, and true to his word, Khurram Manzoor. He's told me after his dismissal in the first innings that I'll get them in the second. So far, so good. Cool looking drive off the front foot, straight to the fielder though. They looked committed. They went in with a purpose. They have, not exactly, I won't say they've 100% achieved it, but probably 30% now there. Not even for 50%. And Ali, the game will have an entirely different outlook when the scores become level. In 12 runs time, if there is no wicket, then this game will be on the knife edge. Because then slowly the pressure will be shifting towards KP. And that would be some achievement for these two if they're able to do that in the next 12 runs or so. You can already see a resigned look in KP. 2 slips and a gully. This approach, it has worked for him. Another young fast bowler, Mohammad Hasnain, didn't bowl to his potential in the first inning, but he would be handy in the second one because he's got the pace. It will come handy in the second inning. If Sindh can get to that lead of maybe 200, we have a game on. One thing is for sure, that this wicket is not going to get any easier to bat, especially for the newcomers. We've already seen on the first 2 days, it's very, very difficult to start your innings. So 200 runs will really pose a challenge in 4th innings. For Manzoor, he's been reluctant to duck underneath the ball. He's a very tall man. He likes to ride the bounce. He's done it very well. Not pretty at times, but look at him jumping up in the air, get over that bounce. Well, look at the bat positioning. It was towards the down. And probably that has been the reason that has negotiated these bounces very well. Because this is what will happen if you charge to the fast bowler, they will bounce you. And he has done well.
Very committed inning by Khurram. Because he's so tall, when he rides that bounce, when the ball hits the bat, the angle of the bat is towards the ground. And this time almost got knocked over off his feet. He's really made the KP bowlers think about their plans. And for once, I have a feeling that KP is lacking ideas to break this partnership. Do you think it's a fair assumption? Well, yes, I can partially agree with you on that, but I think credit must be given to these two. They played really well. They've defended very well. They've been playing every delivery on merit. I have not seen a wrong shot, a false shot from either of them. That has been the quality of this partnership. Short leg is in place now. And Khurram Manzoor took it on. Cracking pull stroke in front of square. Raises his bat to the gallery. This is a magnificent innings from Khurram Manzoor. Well played. Wonderful batting. At a time when the team needed it the most, the senior member has delivered. What a way to get it. He was expecting a short one and bang on target. 36 gone, 112 for 2. .50 coming off of 119 deliveries. A hard grind, a battle. 54th 50. Look at how much time he had. He got into position. Not an ideal height for a bouncer to trouble someone like Khurram Manzoor. He got onto it in a flash. This is a magnificent knock. You really have to admire this fighting spirit from this experienced man. It's the only chance that he can give. He turned very, very slowly. Direct hit. What do you think, Ali? I think he would have made it safely, but still there is no need of doing that. The ball hurried towards the fielder. Direct throw was needed, but he would have made it easily. Trailing by 8 runs in. Just 7 runs shy of the 100 partnership as well. 112. They've added, what, 93 runs. Invaluable runs. Shafiq has done that very nicely. The last half an hour or so, he swept Asif Afridi. And he's been quick to use his feet as well, putting the spinner off his line and length. That's experience. Remember, 22,000 first-class runs between these two. Wonderful. Wonderful achievement. What a time to get this partnership. Partnership of top quality. At a time when a team needed it. They stuck in well, defended well. Whenever provided with the opportunity, they've passed onto it, scored runs. 120 deliveries for Khurram Manzoor, 73 for Asad. He was stuck on 42 for quite a long time. But he didn't give in. He remained patient, waited for his moment. That cut shot, fiercely struck, but straight to the fielder. Was there to be hit, was there to be hit. Could not quite find the gap. The placement was not right. It was hit hard though. Not as much zip from the wicket with that older ball for Afridi. .37 gone. 113 for 2. Look at those eyes. Concentration level, focus level. Good prospect for Pakistan cricket, this young lad Hasnan. More known for his white ball abilities. But this is where he needs to deliver more. This is where he should look to
Yeah, look to get more cricket behind him, under him. Him and Shahnawaz Dani both, they must learn from Sohail Khan and Mir Hamza. There was a difference in their bowling, in their line and length. The way the two experienced bowler bowled and these two youngsters bowled, you can clearly see the difference. Absolutely, and then there is a debate that came up as well, reared its head. These youngsters, they get picked for Pakistan, they travel around the world, they didn't get to play in the COVID times. There's not a lot of side games, and a year later you feel that they have regressed from what they were a year ago. Clearly seen Shahnawaz Dani struggling for rhythm. He hasn't played first class cricket for 11 months. Hasnan also, he's been around the scene for a long time now, with only 6 or 7 games under his belt. You watch the experience. Imran Khan has been brought back into the attack. KP looking for some inspiration from their talisman. Talking about these youngsters, they do need cricket. It's hard balancing act. Absolutely. I'm all up for white ball cricket. There's nothing, absolutely nothing wrong with it. But that should not be the criteria to be picked for the Pakistan side. This should be the criteria. Right here, in front of us. Cricket of the highest quality, the best against the best of Pakistan. This is where you need to get more exposure. This is where you need to spend more time to get better at white ball cricket. Glorious. That's a sumptuous on drive. This has been the feature of Asad Shafiq's batting. Glorious sight to see him drive down the ground. Absolutely. Anything pitched up to him, quickly onto it, and have a look at that for placement and timing. Wonderful, wonderfully done. Look at that. An on drive, never an easy shot. That should have been stopped. Must be a fast bowler. Arshad Iqbal, was it? Was it? We'll have to check again. With the body language, it looks like Arshad Iqbal there. Better effort was needed. With that boundary, the trail now only 3 runs. With just 2 wickets down, Sindh fancy their comeback. See the no ball. No ball number 7. Imran Khan overstretching. It's been a long day. He's overexerting himself because he realizes his team needs a breakthrough. And they're looking to him. Look at that. It's a big no ball. Trailing by 2 runs. Khurram Manzoor on 50. Asad Shafiq has just moved to 40 runs. There's nothing KP can do at the moment to break this partnership. Inspirational needed. No! 99 runs is the partnership. These two batters have batted really nicely, and their running for most part has been pretty good. Asad and Khurram Manzoor having a mid-wicket chat. It's surprising to see Iftikhar Ahmed has gone flat with the ideas. In the first inning, he tried a few things. He bowled himself. Musaddiq is also there. He can bowl a few deliveries. Even Sahibzada can bowl a few. Would have been a good idea. Yeah, himself, he can bowl too. There would be no harm in trying their arm for a few overs. You're right, it's not a bad idea at all. Try for an over or 2. Just break the rhythm of the batters if anything else. Yeah, very surprisingly this morning, remember, I think it was you commentating for the first session. It was Faraz Ali starting off the day. I don't know what the reason was, but that did work for them. That did break the rhythm, the concentration. It's funny, and he almost got the wicket of Musaddiq. He lured him into a wide half volley. Innocuous looking delivery. But we've seen this many times with irregular bowlers. For some reason, batters either take them easy or they find it their right to dominate them. And in doing so, they can easily make a mistake. Nothing to lose for Iftikhar because this partnership has looked untroubled.
especially Afridi, has been very innocuous, and he's gotten away with quite a few overs without much impact in that second innings. There's a deep point in place. Another very strange move. I don't remember KP seamers have been hit for a cut shot all day. In that 38 overs they've bowled. Attacking the stumps, Imran Khan angling that ball in as his natural angle into the right-handers. Overs bowled, 118 for 2. Have a look at the current partnership, Faisal. 99 runs. What a time to get. What a way to get on our testing conditions. Two of the most experienced batter of not just Sindh but of Pakistan cricket have done it for their team. They need to carry on. Also not to forget the deliveries, 185 deliveries, which meant they took their time, and the longer you stay it seemed to get easier. Still believe there's plenty in it for the bowlers. And you're talking about Iftikhar, probably he's heard you. Because for the first time we're going to see him, and probably this time bowling his off spin. Can be a good idea, very good idea. This dying moment of the day. Can he do something? He's more than handy. Bowled a beautiful spell for Pakistan in Bangladesh. Khurram Manzoor took him on. Welcome to the bowling crease, Iftikhar Ahmed. A hefty slog sweep for a boundary. He won't mind that. Definitely not. Because he's done something different. A chance was created. There was no fielder on the deep mid wicket though. So now the situation is Sindh lead by 2 runs. What a wonderful achievement this has been from these two senior batters of Sindh. They've made a comeback in this game. And also the 100 partnership has been brought up with this blow. Slight misunderstanding. Now that fielder has been put at deep square leg. That mid-on is hanging 2/3 of the way back as well. So KP on the defensive. That cut shot is Khurram Manzoor has been looking for it all day. This time was able to get it away off the off spinner. Couple more runs. A lazy looking relay between the two fielders. I don't know, Faisal, if this is a good idea, because you brought himself on 64 wickets to his name to create a chance, to create an opportunity. But if you place a fielder there, batter's not going to hit on this, especially on this time of the day. They're not going to hit. They're not going to take a chance against you. Maybe just give yourself a chance. Bring that fielder in the circle and let him go. Let him hit him over that fielder. You might create a chance after that. But with this field position, maybe not. It's too easy. You can understand Iftikhar now. Like I said a while ago, it'll be a different ball game when Sindh gets ahead. And now KP will be looking over their shoulders. Hard balancing act for skipper Iftikhar. But not long to go this evening. It's worth a chance. You can still try and buy a wicket, because once a wicket falls it can bring you a few more. 125 for 2.
Had there been Ali Salman commentating, there would have been different words used for that situation. Thirsty birds helping themselves to a drink. Helping along is the Sindh batting pair. It is the time to take full toll. Whilst they've worked really hard, they wouldn't want to give it away late in the day. Chance! Oh, he's made it. He's made it quite easily in the end. Asad Shafiq. They've created few chances, few run-out chances been created, but they've done well. They've run well. It's the only way KP has looked like getting a wicket. Why run out? We look at it again. Off the back foot. Good pick up and throw. Made it very comfortably. A little collision between Musaddiq and Haris. Got me excited. There's not been many moments to be excited of, especially in this session. They've been very solid. We've seen sessions like these at Gaddafi Stadium, when nothing really would be happening, but batters would be blocking the deliveries off. But this is a different situation. This is a different condition. They're made to be worked hard for this partnership, which is over 100 now. A century partnership in the third innings of the game, when your team is trailing by more than 100 runs, definitely is worth a lot more compared to some of those meaningless huge totals at Gaddafi Stadium. This could have a huge impact on the result of the game, and it has ensured that the game is going into the third day, and who knows, it may still get into the fourth day. But we've noticed here, if you're a KP fan, you have to hang in there, skipper and the management as well. You have to hang in there, because one wicket can open the gate for you, and you can crash it with disciplined bowling. That's the opportunity they should wait for, or make it happen. I think for now they will have to wait till tomorrow morning. We've seen those morning sessions bringing wickets. Yesterday, today, in the last game also, those morning sessions have been hard on for the batters. And if they can negotiate that session, that first hour of tomorrow morning, these two, I think Sindh will be in a position to dominate and even win the game. Remember, KP started this morning at 124 for 2. Beautiful. Sumptuous on drive. Once again, Asad Shafiq at his very best. All along the ground, wonderfully timed shot. The placement was perfect. Earning himself 4 runs, Asad Shafiq. That's the Asad Shafiq we're used to see. That's the Asad Shafiq we want to see. Scoring runs, looking positive. Have a look at that for timing and placement. Wonderfully done. Asad Shafiq is back. The key to that shot was the balance. His head was right over the ball, and that wrist work to find that gap away from the mid-on fielder. Magnificent. He's a treat to watch. Such a pretty player to watch when he's in full flight. Wide over the crease again. Imran has consistently been bowling from that angle. Could he do? Could he get slightly closer to the stump? Bowl a different angle to Asad Shafiq. What's the discussion there? Basit Ali, match referee Khar Ahmed. That's some serious discussion. Have a look at the body language from Basit Ali. What is he saying? Any idea? Well, Basit Ali never short of a word or two. I think he's doing all the talking. We can clearly see that. And the match referee who's doing the listening part. And the roll of the wrist from Asad Shafiq. Superb timing and placement as well. Will earn him a couple of runs.
Asad Shafiq growing in confidence, getting back to his usual best. 40 gone, 132 for 2. बारह रन की बढ़तरी सिंध की और पार्टनरशिप 113 रन की। केपी के रिजर्व खिलाड़ी स्ट्रेचिंग करते हुए अगले मैचेस के लिए खुद को तैयार रखते हुए समीन गुल। और ये दोनों कोचेस हैं, जब भी बासित अली को देखें तो बासित अली बात करते हुए नजर आते हैं और उनके जो दूसरे साथी होते हैं उन्हें सुनने पर मजबूर करते हैं। यहाँ अब्दुल रहमान ये फराइज अंजाम दे रहे हैं। इससे पहले मैच रेफरी इफ्तिखार बासित की बातों को बड़े सब्र से सुन रहे थे। मेरे साथ कमेंट्री बॉक्स में आ गए हैं फरहान निसार। क्या ये कुछ किस्मत लेकर आएंगे केपी के बॉलर्स के लिए, जिनको काफी देर से कोई कामयाबी नहीं मिली? खुशामदीद फरहान। बहुत शुक्रिया शाह फैसल। बहुत ही ये शानदार पार्टनरशिप है इन दो सीनियर बल्लेबाजों के दरमियान, और ऐसी शराकत की ज़रूरत थी जब इनिंग्स की इब्तिदा हुई। 2 विकेटें जल्दी गिर गई और केपी की टीम ने मुकम्मल तौर पर इस मैच पर होल्ड किया हुआ था, लेकिन अब ये एक अच्छे नतीजे की तरफ मैच जाता हुआ दिखाई दे रहा है। असद शफीक अपनी निफ सेंचुरी सिर्फ 4 रन के फासले पर, और यहाँ अभी इन दोनों का काम ख़त्म नहीं हुआ। सिंध के जो कोचिंग पैनल है वो चाहेगा कि ये तीनों 3 हिस्सों में जाएं दोनों। सॉफ्ट हैंड्स, आराम से 1 रन का इजाफा, ये भी काफ़ी खासियत रही है इस पार्टनरशिप की। स्ट्राइक रोटेशन काफ़ी बेहतर रही है और ये दोनों तजर्बाकार खिलाड़ी, कुछ लम्हात पर ऐसा लगा जब इन्हें विकेटों के दरमियान दौड़ने में जो है मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, लेकिन ज़्यादातर मौके पर इनकी कॉलिंग जो है वो काफ़ी मुतासिर कुन थी और स्ट्राइक रोटेशन ने काफ़ी मदद की इस पार्टनरशिप को बिल्ड करने में। और अब यहाँ से ये सवाल ज़रूर सर उठाना शुरू हो जाएगा कि चौथी इनिंग्स में क्या टारगेट, एक अच्छा टारगेट हो सकता है दोनों टीमों के लिए। छह भी लीड सिर्फ 13 रन की हुई है फरहान, लेकिन आप क्या समझते हैं कि सिंध की टीम की नज़रें किस टारगेट पर होंगी? जी हाँ, सिंध का पहला टारगेट तो ये होगा कि आज ये दोनों जो बल्लेबाज हैं नॉट आउट वापस जाएं और 200 से ज़ायद की जो बर्तरी हासिल करना चाहेगी सिंध की टीम। 250 के अगर आसपास की ये बर्तरी हासिल करते हैं और कोशिश ये करेंगे कि कल का दिन जितनी ज़्यादा ये बैटिंग कर सकें उतना इनके लिए बेहतर है। केपी की टीम ने पिछले मैच में भी चौथी इनिंग्स में काफ़ी बड़ा टारगेट चेस किया है। इरफानुल्लाह शाह अच्छी लाइन और लेंथ पर ज़रूर बॉल की, लेकिन वो काट नज़र नहीं आई जो पहले दिन नज़र आई थी। तो फरहान, जो पिछला मैच हुआ नेशनल बैंक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पर, वहाँ चौथी इनिंग्स में केपी ने एक अच्छा रन चेस किया और 4 विकेटों से गालबन वो मैच जीता। उसको देखते हुए क्या आप ये समझते हैं कि सिंध की जो है वो नज़रें उस हदफ पे भी होंगी जो केपी की बैटिंग ने हासिल किया पिछले मैच में? जी, 223 रन का वो हदफ था, अगरचे वो जो विकेट है वो काफ़ी मुख्तलिफ थी इस पिच से। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा की टीम जो भी हदफ मिलेगा उन्हें चेस करने तो जाएगी, पॉजिटिव क्रिकेट ज़रूर खेलेगी। और पिछले मैच में भी हम भी वहाँ पर मौजूद थे, तो आसिफ अफरीदी का रोल बहुत अहम था उस रन चेज में। तो केपी के पास बैटिंग लाइन
कदरे लंबी है। अगर हम सिंध की बात करें, और पहले दिन अब्दुर्रहमान से बात हो रही थी तो वो उनका ये मानना था कि अगर ग्रीन विकेट है जहाँ पे लगता है कि बॉलर्स के लिए हेल्प ज़्यादा है, तो वहाँ पर आप अपनी बैटिंग लाइन को लंबा करें बजाय कि आप एक्स्ट्रा बॉलर खिलाएं। तो उनकी हिकमत अमली ये, और चौथी इनिंग्स में इस चीज़ का उन्हें फ़ायदा ज़रूर होगा। ओवर का इख्तिताम 133 पर 2। आपने केपी की बात तो की, लेकिन अगर सिंध की बात की जाए, जैसा बिल्कुल आपने सही कहा कि पहला टारगेट तो उनका आज शाम तक खेलना होगा बगैर किसी नुकसान के। शायद उसके बाद वो सेशन टू सेशन खेलें, ज़्यादा लंबा टारगेट नहीं रखेंगे, ज़्यादा लंबे गोल नहीं रखेंगे, सेशन टू सेशन खेलेंगे कि पर सेशन वो कितना जाते हैं और विकेटें कितनी बचा के रखते हैं, क्योंकि रन्स रोकना इस विकेट पे मुश्किल है। जितना ट्रू बाउंस है कि बैट्समैन सेट हो जाते हैं तो रन अच्छी रफ्तार से आ सकते हैं यहाँ पे, वो भी सिंध के जहन में होगा। लेकिन हमने देखा है कि इनिंग्स का आगाज करना यहाँ पे मुश्किल रहा है सेट बैट्समैनों के लिए। बैटिंग कदरे आसान होती जाती है, लेकिन नए बैटर्स के लिए आसान नहीं है। और दिन का आगाज़ भी यहाँ पर जो है वो बल्लेबाजों के लिए मुश्किल रहा है। आज हमने देखा तकरीबन इसी किस्म के स्कोर पर, इसी किस्म की सूरत हाल पर इफ्तिखार और मुसद्दिक ने कल की शाम अपनी बैटिंग ख़त्म की थी। लेकिन आज जब वो आए तो एक मुश्किल का सामना करना पड़ा उन्हें सिंध के बॉलर्स के सामने, और जो 3 विकेटें गिरी उसने केपी को बैकफुट पर धकेला। तो कल एक मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है जो पहला आधा घंटा है, 40 मिनट है सिंध के इन दोनों बल्लेबाजों को। बॉल के पुराने होते ही बॉलर्स के निस्बतन थकने के बाद विकेट में भी वो काट नज़र नहीं आ रही, या ऐसा लगता है। इस चीज़ को जैसा फरहान ने कहा कि कल सुबह जब आएंगे तो आपको लगेगा कि उस वक्त शायद बॉलर्स में भी ज़्यादा एनर्जी है, विकेट में भी ज़्यादा काट है, लेकिन वो दरअसल बैट्समैन का सेट होना और उनके इनिंग्स के आगाज़ करने में ज़रूर फ़र्क है। सेट बैट्समैन के लिए लाइफ कदरे आसान होती जाती है। यही इस मैच की खूबसूरती है कि जब आप सेट हो जाएं तो आप मेक श्योर करें कि आप उसको एक मानी खेज इनिंग्स में तब्दील करें। और यहाँ इन दोनों को ये एडवांटेज है कि इनके पास तजर्बे की कमी नहीं है। खुरम मंजूर को 18-19 सीज़न हो गए हैं फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट में, असद शफीक भी बहुत अरसे से फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट में मौजूद हैं, तो ये इस तरह की सूरत हाल से बखूबी वाकिफ़ हैं। और कल जब ये अगर ये दोनों बैटिंग के लिए आते हैं तो ये शायद इस तरह का अंदाज न अपनाए, बल्कि रन्स की तरफ जाएंगे। ढलते सूरज के बहुत ही खूबसूरत मनाजिर हमारी प्रोडक्शन टीम आपको दिखाते हुए, और ये वो परिंदे जो अब अपने आशियानों की तरफ जाने के लिए पर तोलेंगे। यहाँ पे भरपूर मेहनत और कोशिश केपी के बॉलर्स ने की, लेकिन कोई खातिर ख्वाह कामयाबी हासिल नहीं हुई। जैसा कि आपने इन दोनों के तजर्बे की बात की, तकरीबन 22,000 फर्स्ट क्लास रन्स दोनों के मिलाकर इस वक्त हो सकते हैं, और 22,000 रन इस वक्त आप कह लें कि क्रीज पर मौजूद हैं। तो वो तजर्बा जो इन्होंने हासिल किया इन रन्स को बनाते हुए, उसका कोई नेमुल बदल नहीं है। और ये जो पीरियड है 40 से 60 ओवर्स का, इसमें देखिए कि यहाँ पर गेंद इतना ज़्यादा पुराना नहीं हो रहा जैसा कि लाहौर में या पंजाब के दूसरे शहरों में होता था। रिवर्स स्विंग के भी आसार उस तरह से नहीं है। तो ये टाइम ऐसा है, ये जो 40 से 60 ओवर्स हैं, ये बैटिंग के लिए कदरे आसान है। बिल्कुल, और खुसूसन अगर 2 सेट बैटर्स हों, आज का जो रिमेनिंग
जितना भी वक्त रह गया है, ज़्यादा वक्त अब नहीं है, तकरीबन 5:15 के करीब अंपायर्स रोशनी का जायज़ा लेते हैं और सर्दियों की आमद है। सूरज के गुरूब होने का जो वक्त है वो दिन ब दिन करीब आता जा रहा है, तो 1 या 2 मिनट का फ़र्क पड़ता है खेल के दौरानिए में भी। इस वक्त जो स्केड्यूल क्लोज है वो 5 बजे का था, 5:10 हो चुके हैं। तो ये 5-7 मिनट बहुत ही अहमियत के हामिल हैं, क्योंकि अगर सुबह ये दोनों सेट बैटर्स आते हैं और पहला आधा घंटा निकाल जाते हैं, फिर सिंध की पोजीशन डोमिनेंस की तरफ जा सकती है। उसके लिए अभी भी मजीद काफ़ी मेहनत की ज़रूरत है। 42 ओवर्स का इख्तिताम 133 पर 2। अंपायर्स इकट्ठे ज़रूर हुए ओवर के अख्तिताम पर, लेकिन जैसा फरहान आप कह रहे थे कि शायद मजीद 1 ओवर का वक्त हो इस आज की शाम। दिलचस्पी का पहलू ये है कि क्या असद शफीक अपनी निस्फ सेंचुरी मुकम्मल कर लेंगे। 4 रन की दूरी पर हैं। बहुत खूबसूरत खेले हैं असद शफीक, जो उनका रिवायती स्टाइल और ग्रेस है वो आज नज़र आया है, खुसूसन जो उन्होंने ऑन ड्राइव्स किए हैं, यकीनन बहुत देखने से ताल्लुक़ रखते थे। वो आज के दिन की हाइलाइट्स में ज़रूर जगह बनाएंगे। असद शफीक जिस अंदाज के बैट्समैन है, जब वो अपने भरपूर फॉर्म में होते हैं तो उनकी बैटिंग से बेहतर मंजर नहीं कोई होता। ऑन ड्राइव्स की आपने बात की, स्पिनर्स के खिलाफ जिस तरह उन्होंने कदमों का इस्तेमाल किया और कंट्रोल्ड शॉट खेले, शायद ही कोई शॉट हवा में खेला हो असद शफीक ने इस पूरी इनिंग्स के दरमियान। बहुत ही जिम्मेदाराना और बहुत ही अहम इनिंग्स असद शफीक की। इनिंग्स के आगाज़ में ज़रूर थोड़े से शेकी लगे थे जब उमैर बिन यूसुफ आउट हुए थे। बहुत ही नज़दीकी मामला LBW का उनके हक में गया। ऐसा हो जाता है जब आप इतना बड़ा सीज़न खेलते हैं, तो कुछ फैसले आपके ख़िलाफ़ जाते हैं, कुछ आपके हक में जाते हैं। इस चीज़ को उन्होंने अपने जहन पर उसका असर नहीं लिया, बल्कि अपनी इनिंग्स जारी रखी। एक और ख़ूबसूरत मंज़र, बहुत ही सुहानी शाम है यहाँ पर कराची में। जो साहिली हवाएं हैं वो भी इतनी ज़्यादा ठंडी नहीं हुई, लेकिन बहुत खुशगवार हैं। ये खुशगवार ड्राइव, असद शफीक का शानदार स्ट्रोक, बहुत ही क्लासिकल अंदाज से अपनी निस्फ सेंचुरी भी मुकम्मल की। इससे बेहतर कवर ड्राइव आपको देखने को नहीं मिल सकता। वेल प्लेड असद शफीक। बिल्कुल बहुत ही उम्दा इनिंग्स, और लोग बाबर आजम की कवर ड्राइव्स की बात करते हैं, लेकिन जो कवर ड्राइव्स असद शफीक खेलते हैं वो भी किसी भी तरह कम नहीं है, जिसका एक और मुजाहरा किया और 8 चौकों की मदद से अपनी निस्फ सेंचुरी तक रसाई हासिल की असद शफीक ने। ये देखिए बहुत ही शानदार ड्राइव दोनों फील्डर्स के दरमियान से होता हुआ गेंद बाउंड्री लाइन की जानिब। मुबारकबाद दी खुर्रम मंजूर ने, जो उनका फुटवर्क रहा है वो बहुत प्रिसाइज रहा है और टाइमिंग और प्लेसमेंट भी बहुत ही शानदार थी। सिर्फ 94 गेंदों पर उन्होंने अपनी निस्फ सेंचुरी मुकम्मल की। गुरूब होता हुआ सूरज, शायद अब केपी की टीम भी यही चाहेगी कि आज का दिन इख्तिताम को पहुंचे, ताकि उन्हें रीग्रुप करने का मौका मिले, दोबारा से वो सर जोड़ कर बैठे, नई हिकमत अमली के साथ आएँ और इस मैच में वैसा ही कमबैक करें जैसा कि सिंध की टीम ने किया आज सुबह। बहुत ही ज़बरदस्त कांटेदार मुकाबला हुआ है यहाँ पे बैट और बॉल के दरमियान इन 2 दिनों में। 57 मरतबा असद शफीक फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 50 का हिस्सा अबूर कर चुके हैं। ये शाम का वक्त जैसा कि अभी डूबता हुआ सूरज हमने देखा, तो खैबर पख्तूनख्वा की जो टीम है उसका भी दिल डूब रहा होगा इस शराकत को देखते हुए। और ये मुस्तकिल तमाशाई हैं इस मैदान के।
118 रन की पार्टनरशिप हो चुकी है और इस पार्टनरशिप ने जो सारे कसबल हैं वो केपी के बॉलर्स और फील्डर्स के निकाल दिए हैं और मैच बराबरी पर खत्म होने जा रहा है आज के दिन, अगर कोई विकेट नहीं गिरती। 17 रन की बर्तरी सिंध की। ओवर का इख्तिताम 137 पर 2। अंपायर ज़रूर बात करेंगे लाइट के बारे में, रोशनी के बारे में, लेकिन इन दो मैचेस में आज ये छठा दिन है मजमूई तौर पर, तो फैसल हमने ये देखा है कि अगर आप बैटिंग करना चाहें तो यहाँ पर रन्स मौजूद हैं, यहाँ पर अच्छी बैटिंग हम देख सकते हैं। और इस दौरान रोशनी का मुआयना कर रहे हैं इम्तियाज़, इकबाल और वलीद। जो हम बात कर रहे थे कि केपी की टीम यकीनन चाहेगी कि आज का दिन खत्म हो जाए। आधे खिलाड़ी उनके पवेलियन की जाने पहले ही गामजन हैं, जबकि अभी अंपायर्स अपनी रीडिंग ले रहे हैं। लेकिन असद शफीक और खुर्रम मंजूर बिल्कुल हिलने के लिए तैयार नहीं थे जब तक कि अंपायर ने अपना फैसला नहीं सुना दिया। तो एक बहुत ही शानदार मुकाबले वाला दिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। फर्स्ट क्लास क्रिकेटर की तमाम रानाइयाँ और खूबसूरतियाँ आपने इस सेशन में देखी, बल्कि इस पूरे दिन में देखी। क्रिकेट का मयार बहुत ही ज़बरदस्त रहा और एक कांटेदार मुकाबला होने की तवक्को है बकिया मैचेस में भी। खुर्रम मंजूर और असद शफीक यकीनी तौर पर दाद के मुस्तहिक होंगे जब वो फील्ड से बाहर आएंगे, क्योंकि उनकी पार्टनरशिप ने सिंध को वापस इस मुकाबले में ला खड़ा किया। कोई शक नहीं इस बात में, दोनों तजर्बाकार बल्लेबाज और नाकाबिल शिकस्त वापस लौटते हुए दोनों अपनी निफ सेंचुरीज मुकम्मल कर चुके हैं। और ये शाम के सेशन में 29 ओवर्स का खेल हुआ। ओवरहेड बहुत शानदार रहा, 95 रन्स और विकेट कोई नहीं गिरी। अगर हम पहले दो सेशन देखते हैं तो 10 विकेटें गिरी और यहाँ पर यही इन दोनों की कामयाबी है कि इन्होंने विकेट नहीं गिरने दी और अपनी टीम को मुश्किल से निकालने की कोशिश की। जैसा कि मैंने कहा था कि पहली इनिंग्स के बाद खुर्रम मंजूर ने यह कहा था कि वो दूसरी इनिंग में रन करेंगे इस विकेट पर, और उन्होंने अपनी बात को सच साबित कर दिया। असद शफीक ने उनका भरपूर साथ दिया। एक शानदार और फाइटिंग पार्टनरशिप जो कि अभी जारी है। फर्स्ट क्लास क्रिकेट एट इट्स वेरी बेस्ट ऑन डे 2। पार्टनरशिप 118 रन की हुई, सिंध की लीड 17 रन की है। और ये देखिए यहाँ पर कुछ ना कुछ आपको जरूर किस्मत को आपका साथ देना पड़ेगा। यहाँ अर्ली डोर्स इनको वो लक मिली, थोड़े से बॉल हवा में भी गए लेकिन गैप में जाते रहे। लेकिन जब दोनों बैट्समैन सेट हो गए तो उन्होंने विकेट के चारों जानिब खूबसूरत स्ट्रोक खेले। जो इस हाइलाइट्स में आप नहीं देखेंगे वो जो उनका डिफेंस था, जिस तरह उन्होंने अच्छी बॉलों को खेला। और ये शॉट ऑफ द डे, कोई कलाम नहीं। खुर्रम मंजूर के पंची ड्राइव्स, शानदार हाफ सेंचुरी उन्होंने भी मुकम्मल की। एक और कार्बन कॉपी, यहाँ फील्डिंग बेहतर हो सकती थी। जितनी तारीफ की जाए असद शफीक की बैटिंग की कम। और सोने पे सुहागा कवर ड्राइव, ये दिन का आखिरी एक्शन रहा। 118 रन की पार्टनरशिप हुई है, बहुत ही अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ। जी हाँ, तो ये सूरत हाल है इस मैच की। पहली इनिंग्स में 145 पर सिंध की टीम आउट हुई, जिसका सबब इरफानुल्लाह शाह की 5 विकेटें थी। उसका जवाब दिया खैबर पख्तूनख्वा ने 265 रन के साथ इनिंग्स को डिक्लेयर किया 9 विकेटों के नुकसान पर। और अब सिंध की टीम भरपूर जवाब देते हुए 137 रन 2 विकेट पर 43 ओवर में और 17 रन की बढ़तरी हासिल है सिंध को, जब दूसरे दिन का खेल मुकम्मल हुआ। जबकि दूसरे दिन का खेल यहाँ पे खत्म हो चुका है। हम आपसे इजाजत चाहेंगे, कल तीसरे दिन के खेल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक स्टेट बैंक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से अल्लाह हाफिज और शब बखैर।
हाइलाइट्स वाले भाई, हाइलाइट्स वाले